if you want to add a course, if you want to drop a course, this is the place to go. Moreover, here you will meet Sir Rashid and his team. He will give you minimum of 3 courses and maximum of 6 courses. Let's go and meet Sir Rashid. Usually, you're not permitted to go in, but we've taken special permission to make you guys meet Sir Rashid. So let's go in. So guys, this is the communication department, and here we will meet Sir Rashid. Assalamu alaikum. My name is Rashid from Office of the Registrar. Welcome to Greenwich University. Thank you very much. So students, this is the examination department. This department makes sure that you are here for your examination, for your clearance slip. So make sure that your dues are clear and make sure that you are not absent at more than 3 days on an entire course of the semester. Here, we will meet Sir Jamil, who is Assistant Controller Examination. Let's meet him. Hello, welcome to Greenwich. So if you want to inquire regarding your CGPA or your examination results or the Dean List certificate, this is the place to come. So students, as we have covered almost every valuable detail from your accounts invoices to your examination clearance to your communication department, if you want any further detail, you should acknowledge the document present over the portal. This is me, Shahir Hassan, signing off. I hope you have an amazing journey at Greenwich University. Senator Abdul Hasib Khan characterizes a dynamic personality, a diverse business acumen, and a great regard for philanthropy. He has served as a senator for the government of Pakistan between 2009 to 2015. He is the founder and chairman of Brooks Pharma Private Limited, sharing the international market in countries like Thailand, UAE, Philippines, Bangladesh, Vietnam, Tanzania, Congo, Ethiopia, and Nigeria. He is also the chairman of Korangi Association of Trade and Industry. Senator Abdul Hasib Khan is also the founder of Brooks Health and Education Foundation, establishing various schools and dispensaries in underprivileged areas of Karachi. He was awarded with Sitara-e-Imtiaz in recognition of his relentless services for uplifting Pakistan's trade and economy, as well as contributions to social welfare work. अपनी सलाहियतों को और अपनी नॉलेज को अप्लाई करने के लिए सिर्फ नौकरियों के सहारे पे मत जाइएगा दुनिया में हमारी। जब हमारी दुनिया में आए तो फिर एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आए। मैं खुद भी 12 साल की उम्र में एंटरप्रेन्योर बना था और मेरी जेब में एक पैसा भी नहीं था। तो एंटरप्रेन्योर स्टार्ट फ्रॉम नथिंग। नौकरी भी मैं नहीं कह रहा कि नहीं करनी चाहिए, नौकरी भी करें, गवर्नमेंट की नौकरी भी करें, लेकिन अपनी सलाहियतों को अगर आजमाने का मौका मिले तो कोशिश ये करें कि एंटरप्रेन्योर बने। और एंटरप्रेन्योर बनना बहुत आसान है कि दुनिया में कामयाबी हासिल करने के लिए कुछ अल्लाह की बातें माननी पड़ती हैं। तो अगर अल्लाह की इंसानों का अगर आपने ख्याल रखा तो फिर कामयाबी अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। आ गई कम वक्त मारी। नी आ गई तू सैर सपाटे करके। पेट पूजा का कोई बंदोबस्त किया तूने कि नहीं किया है? क्या हो गया बाजी? एक तो मेरा पेट ਤੁਹਾਡੇ पे भारी पै गया। नी तेरा पेट, तेरी तालीम भी साडे गले उत्ते पै गई है। सारी जिंदगी दर दर नचदी फिरी, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਜਾਂ यूनिवर्सिटियां दी फीसां भरियां। ऐ जलालत साडे किस काम दी है? अरे ना बाजी ना, तू फिक्र ना कर। कल मैनू ऑफिस बुलाया है इंटरव्यू दे वास्ते।
दुआ करी। चल रब राखा। गल सुन, अभी मैंने कुछ खाण वास्ते दे दे। ठीक है। Hi, I'm here for an interview. What's your name? Sarah. आप सारा वहीद है? Yes. अच्छा, आप रूम नंबर 4 में चले जाए। ठीक है, thank you. May I come in? Send Sarah in. Yes, I am Sarah. Oh, yes, come in. Assalamu alaikum, Sarah. I'm the managing head of operations of this company, and he is my colleague. वालेकुम अस्सलाम जी। जी आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। So, Sarah, आप अपने बारे में कुछ बताएं? जी मैंने बीकॉम किया है। I'm sorry, पर आप यहाँ क्यों आई हो? जी मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। Yes, but it was clearly mentioned in the job advertisement that a female accountant is required, and you are clearly a. जी आप प्लीज़ मेरी अपीयरेंस पे ना जाएं। मैं आई थिंक माय कॉमर्स बैकग्राउंड विल मेक मी अ वैल्यूएबल एसेट टू दिस कंपनी। No, I don't think that you belong here. You may have the skills, but our company is not requires this type of people. जी आप ये कैसे बोल रहे हैं? I'm sorry, we are done here. आप जा सकती हैं। मुझे एक चांस तो दीजिए। नहीं, please leave. बाजी, ये बाजी। मैं मर गई। बाजी कैसे कर लेती है, कैसे सह लेती है इन सब के ताने? नहीं दी रानी, हुआ क्या है? बाजी सारी जिंदगी बस यही सुनने को मिला है, तू यहाँ से चली जा, तेरा यहाँ कोई काम नहीं। आज भी यही हुआ। ये तो होना ही था। तुझे क्या लगता है मैं क्यों सारी जिंदगी घुंघरू पहन के चल रही थी? तू क्या किताबें लेके फिर रही थी? चल अब रोना बंद कर, पहन ले घुंघरू। शकीला को बोल दूंगी, सिखा देगी तुझे सब। We urge the governmental and non-governmental organizations, private corporations, and business entities to come forward and play their part in the society by providing respectable earning opportunities to the transgender community to enable them to lead a healthy and happy life. Hello everyone, my name is Ali Jalani and I am the mentor for Greenwich University's Diplomatic Society. The vision for Diplomatic Society is to provide the students with the opportunities to engage in simulated scenarios of international entities to foster their analytical vis-a-vis oratory skills.
The society will also be responsible for the conduct of Greenwich University's Model United Nations. You're more than welcome to be part of the society's events, and would also like to have some of you who are passionate about developing a worldview to be part of the Diplomatic Society moving forward. And by the way, welcome to Greenwich Fraternity, all of you. Looking forward to have you around. Thank you. Hello and welcome. You're watching Greenwich Web TV, and this is your host Umar Khan, and I'm here with another very special guest for today. Let me introduce my guest, and right next to me is Miss Sana Hashmi, who's a news anchor and an anchor person, a host and senior producer news at GTV, and a very charismatic personality as well. So thank you so much, ma'am, for being part of this show today. Thanks for inviting me. You're most welcome. How are you? I'm very well. आप बताइए कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही नीड ऑफ द आर्ट टॉपिक है, नीड ऑफ द मोमेंट टॉपिक है कि एक न्यूज़ एंकर की या एंकर पर्सन की, मीडिया पर्सन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और किस तरह से उनको अपना काम करना चाहिए. So when we compare the Pakistan news channels to the international forum, we see a vast difference. Why do you think is that? Well, उमर, आपने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, तो जब आप एक सिंपल सा मैं सारे लोगों को कहूँगी, आप गूगल भी करें कि जर्नलिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, तो वो आपको बताएगा, गूगल भी आपको ये कहेगा, टू गैदर द न्यूज़, टू इन्फॉर्म द पीपल, यू नो, लोगों को आप समझाएं, बताएं, आगाह रखें. और जिस ज़ाहिर है अगर हम इस्लाम की बात करें तो कुरान में भी इसका एक तज़किरा मौजूद है. बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि आपको किसी तक ख़बर पहुंचानी है. अब उसका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? देखिए, कुरान का मैंने तज़किरा क्यों किया यहाँ पर कि वहाँ पर आयत मौजूद है कि किसी पर झूठी या सच्ची बातें लगाकर बयान न की जाएं. अब मसला ये है कि जब हम इतनी इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी पर बैठे हैं, जिसको जर्नलिस्ट कहते हैं आप, वहाँ अगर हम रियाकारी यानी कि आप आधा सच आधा झूठ और अपने मतलब की बात बताने की कोशिश करते हैं, तो बड़ी माजरत के साथ फिर आप जर्नलिज्म नहीं कर रहे होते, फिर आप फेवरेटिज्म कर रहे होते हैं. और जब आप दुनिया से कम्पीट करने की, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट की बात करते हैं, हमारा जर्नलिस्ट बहुत अच्छा है. बहुत सारे ऐसे सीनियर और सीजन जर्नलिस्ट हैं जिनका मैं नाम भी ले सकती हूँ, जिनके साथ हमने काम किया है, और उन्होंने हमें वो मीडिया एथिक्स शायद सिखाए जो आज की दुनिया में या आज के जर्नलिस्ट में हमें नज़र नहीं आते. तो हम इंटरनेशनल मार्केट की, अगर आप कहेंगे फॉक्स न्यूज़ किस तरह खबर चलाता है सनाश में, तो शायद मैं आपको बता दूंगी, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि लोकल न्यूज़ नेटवर्क कैसे न्यूज़ चलाता है, तो मेरी उस पर कोई कमांड नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ शिफ्ट है बहुत ज़्यादा. हर जिस तरह की भीड़ चाल जिसको आप कहते हैं ना, मतलब लोगों को पता नहीं है, बस खबर आई उसको पीटना शुरू कर दिया. इंटरनेशनली कोई भी इवेंट होता है, उसकी एक मियाद रखी जाती है, उसको वो रिपोर्ट करते हैं, उसके साथ उसका बैशिंग नहीं शुरू कर देते कि इसको ड्रम लेके बजाना शुरू कर देते हैं. हमारा इसका बिल्कुल डिफरेंट होता है. हम इंफॉर्मेशन कम देते हैं लेकिन हम शोर ज्यादा मचाते हैं. तो इंफॉर्मेशन बहुत लेस है हमारे पास, बिकॉज आई एम सॉरी, फॉर सम रीजंस हम रिसर्च नहीं करते, हम नहीं पढ़ते और हम नहीं जानना चाहते. आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट डिफरेंस जो हमें दुनिया के जर्नलिज्म से अगर हम कम्पीट करने की बात करें. जो पाकिस्तानी जर्नलिज्म है, हमारा जर्नलिज्म ज़्यादातर रिफ्लेक्ट करता है हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के साथ. हम उसकी कॉपी कैट्स बनने की कोशिश करते हैं, कभी कभी उसमें आगे भी चले जाते हैं. लेकिन आई एम प्राउडली सेइंग कि अल्लाह का शुक्र है कि हम उनके लेवल पे नहीं पहुंचे जर्नलिज्म के अंदर, क्योंकि वो उनका जर्नलिज्म मोर लुक्स लाइक अ exaggerated movie to me, and thank God हम उस लेवल तक नहीं पहुंचे, और अल्लाह ना करे कि कभी उस लेवल पे हम पहुंचे भी. बट आपने जिक्र किया शोर मचाने का, तो एक चीज जो नोटिस की एक आम आदमी ने कि सनसनी ज्यादा होती है ब्रेकिंग न्यूज की रेस के अंदर. न्यूज अक्सर होती नहीं लेकिन उसको क्रिएट किया जाता है, और जब एक चीज है नहीं और उसको क्रिएट किया जाए तो बात की जो क्रेडिबिलिटी है वो वहीं खत्म हो जाती है. देखिए, एक चीज आपने लफ्ज इस्तेमाल किया सनसनी का ना. सनसनी फैलाने के लिए खबर का होना, उसका वजूद होना ज़रूरी है जी. अब जब किसी चीज़ का आपने जैसे का वजूद ही नहीं है, तो उस पर आप क्या खबर दे रहे हैं? ये कहलाते हैं गिमिक्स. और जो TRPs होती हैं वो इन्हीं गिमिक्स के थ्रू आपको डिलीवर हो रही होती हैं. देखिए, आजकल सोशल मीडिया का दौर है. अगर आपका कैप्शन लिखा हुआ होता है कि ज़रा देखिए उसने उसका थप्पड़ क्यों मारा,
पीपल नीड टू नो कि वो क्या हुआ है और वो उसको क्लिक ज़रूर करते हैं। सोशल मीडिया का मेरा जैसा शायद थोड़ा बहुत, या मेरे ख्याल है आप जैसा आदमी बहुत कम होगा कि उसको जाके क्लिक करे, क्योंकि हमें पता है कि अंदर कोई फजूली चीज़ होती है, कोई काम का मटेरियल नहीं निकलेगा। बट टेलीविजन के मीडियम में क्या होता है कि यहाँ आपको टीआरपी गेन करने के लिए समटाइम्स उस तरह का खबर देनी पड़ जाती है जिससे शायद आप जिसे कहते हैं ना रिफ्लेक्शन नहीं दिखा सकते किसी सोसाइटी का। लेकिन क्यों कर रहे होते हैं आप? क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स वो सारा काम कर रहे होते हैं। अगर आपका कॉम्पिटिटर वही काम कर रहा है, इस वक्त लगभग अगर 72 चैनल्स हैं और वो काम कर रहे हैं 72 चैनल्स, उसमें रीजनल्स भी हैं और बाकी सारे चैनल्स भी हैं, लेकिन जो स्पेशली न्यूज़ चैनल्स हैं वो अगर कोई एक टिकर लगा दें कि फला शख्स ने थप्पड़ मार दिया एसएचओ को या कुछ भी कर दिया, अब उसकी खबर आने में शायद बहुत टाइम लग जाए, उसकी खबर के अवामिल पता करने में बहुत वक्त लग जाए, लेकिन इस दौरानिए में जो कि लगभग 2 से 1.5 मिनट का होगा, सारे टीवी चैनल वही खबर नशर करना शुरू हो जाएंगे। और इसमें इस चीज़ को बिल्कुल मलूज़ खातिर नहीं रखा जाएगा कि इसमें सनसनी का एलिमेंट ज़्यादा है, इसमें खबरियत ज़्यादा है, या इसमें हकाइक ज़्यादा है, या इसमें सोसाइटी को आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। ये तीनों चीज़ें पस से पुश चली जाती है। वो जो एक एलिमेंट है थप्पड़ मारने का या चप्पलिश का या एक्सीडेंट का या किसी की बैशिंग का, वो सिर्फ प्रोमिनेंट होकर रह जाता है। राइट, एथिक्स का आपने जिक्र किया, जो एक ओरिजिनल जर्नलिज्म होता है और जो हम मीडिया स्टूडेंट्स पढ़ते हुए या जर्नलिज्म सीखते हुए जो आप सारे डूज एंड डोंट्स देखते हैं, उसके अंदर सबसे पहली चीज़ ये आती है कि आपने क्या चीज़ नहीं करनी है। जितनी चीज़ें जो नहीं करनी होती, फॉर एग्जांपल शोइंग वायलेंस, शोइंग नेगेटिविटी, इग्नाइटिंग द पीपल फॉर अ सर्टेन कॉज और एनीथिंग, ये सारी चीज़ें डोंट्स में आती हैं। बट पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स जब हम स्विच करते हैं तो 70 to 80% हमें चीज़ें यही दिखती हैं, आग जल रही हैं, बम फट रहे हैं, लोग मर रहे हैं, एंड ऑल द नेगेटिव साइड। Why is that? अच्छा उमर, आपकी इस बात को मैं इस तरह से आपको समझाऊं कि 2011 और 12 आई थिंक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, सो आई थिंक 12-13 के बाद ये वाला जो एक एलिमेंट था सेंसेशनलिज्म जिसको आप कहते हो, या सनसनी के साथ डोंट्स पर जो एक तरीक़ेकार था, वो बहरहाल कम होना शुरू हुआ। हाँ, देखें, पाकिस्तान का जर्नलिस्ट बहुत मेहनत के बाद आज आज़ाद हुआ है, ये भी हमें याद रखना चाहिए। बिल्कुल मैं इस गलती को मानती हूँ, तस्लीम करती हूँ, क्योंकि हम उस चीज़ का हिस्सा बने जब 2000 में मैंने इस जर्नी का आगाज़ किया था जर्नलिज्म की। तो उस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत ख़राब थी, हमें रोज़ाना की बुनियाद पर बम ब्लास्ट भी नज़र आते थे, क्योंकि आपको पता है 9/11 के बाद सूरत हाल दुनिया की बदल चुकी थी। उस दौरान में हमसे जर्नलिस्टिक गलतियाँ हुई हैं। हमने ब्लड भी दिखाया, हमने खुरेजी भी दिखाई, हमने लोगों को मरते हुए भी दिखाया, और हमने मरते हुए लोगों से ये पूछा भी कि आपका बंदा मर गया, आपको कैसा लग रहा है। लेकिन उसके बाद ही, एंड आई थिंक एज आई सेड दैट कि 2010 बिटवीन और मे बी द 11 हमने इस पोस्चर को चेंज किया, और जो कोड ऑफ कंडक्ट मीडिया का तैयार किया गया उसमें इन सब चीज़ों को रखा गया। और जो सुप्रीम, जो हमारे, जैसे मैंने कहा, जो सीजन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अपने जो पैरोकार थे बाकी दीगर जर्नलिस्ट, उनको समझाया कि आप जब टेलीविज़न पर कोई चीज़ नशर कर रहे हैं या दिखा रहे हैं, उसको लोगों तक टेलीकास्ट कर रहे हैं, तो उसका इथिक क्या होना चाहिए। क्या ब्लड दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए? दिखाना चाहिए तो कैसे दिखाना चाहिए? उसका बिलर कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए? एक एक्यूज से क्या क्वेश्चन कर सकते हैं? अगर कोई फैमिली का कोई किसी के लवाहिकीन है तो आप उससे क्या बात कर सकते हैं? ये सारे कोड ऑफ कंडक्ट मीडिया ने खुद तरतीब दिए, मीडिया के लोगों ने खुद बनाए। मैं ये बात फिर कहूँगी कि हाँ, गलती हुई है, और अब भी शायद कहीं माइनर से जाके, जैसे एक मुझे याद आ रहा है वाकया, पिछले साल की बात होगी, मैं दूसरे टीवी चैनल पे थी, ईद उल अजहा का मौका था और कुर्बानी हो रही थी, तो उसमें ब्लड दिखाया जा रहा था। खैर बहरहाल ये एक प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी होती है, जो न्यूज़ रूम का प्रोड्यूसर होता है, न्यूज़ प्रोड्यूसर के, वो देखे एक एक चीज़ को कि जो वो एयर करने जा रहा है वो क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ें हैं। लेकिन प्रोड्यूसर से वहाँ गलती हुई, और एडिटर ने वो ब्लड जो है, जो गाय ज़िबा हो रही थी या जो नहार किया जा रहा था, ऊँट को नहर किया जा रहा था, वो पूरा ब्लड ऑन एयर चला गया। वो ऑन एयर गया ही था, मतलब सेकंड्स का, कुछ लम्हे का मेरा ख्याल है टाइमिंग आया होगा, कि मैं खुद बैक पर थी न्यूज़ फ्लोर पर, मैंने दौड़ कर वहाँ पर से चिल्ला के, आपको पता है न्यूज़ रूम का एक अलग माहौल होता है, तो मैंने बहुत ज़्यादा लाउड होके कहा कि ये हम क्या दिखा रहे हैं। तो हमने उसको उसी वक्त रोका, और फिर ज़ाहिर सरजनिश भी हुई, उन लोगों को हमसे पूछा भी गया कि ये गलती कैसे सरजद हो गई, क्योंकि हम एक मीडिया चैनल के लोग हैं, हमसे हम
इस तरह के एक्सीडेंट्स को रोजाना की बेसिस पे बर्दाश्त नहीं कर सकते. सो यस, मीडिया एथिक्स ये हैं कि आप लोगों से, मरते हुए आदमी से ना पूछें जाकर कि आपको कैसा लग रहा है आप मर रहे हैं, या उसका बंदा किसी के घर में कोई मतलब चोरी डकैती कुछ भी हो गया और आप पूछें उससे कि आप उस वक्त कहाँ थे, वो कहेगा अगर मैं होता यहाँ तो मैं ये सब तो ना होता ना. मतलब आई मीन समटाइम्स हम बहुत ही फुलिश किस्म के कॉमन सेंस होना जरूरी है. इसमें एक और चीज पे अगर हम आए देखें, आपने सीजन जर्नलिस्ट का जिक्र किया, तो हमारे पास बहुत अच्छे सीजन जर्नलिस्ट हैं who are on the top level. But when we talk about the reporters and everyone who's on the field और जो रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि जितने सीजन जर्नलिस्ट उनका शायद पूरे दिन में आधे घंटे 1 घंटे का प्रोग्राम होता है, बट जो ज्यादातर मटेरियल आ रहा होता है ऑन दैट इज रिपोर्टर्स who are creating stories around the city and around the country. तो एक कोई बेंचमार्क होना चाहिए, कोई खास एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि व्हाट आई हैव नोटिस, मैं किसी को यहाँ डिमीन नहीं करना चाह रहा या पॉइंट आउट नहीं करना चाह रहा, बट व्हाट आई हैव नोटिस कि लैक ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा छलकती है. मैं किसी की अंग्रेज़ी का मजाक यहाँ नहीं उड़ाना चाहता, लेकिन जब आप फॉरेनर से बात कर रहे हैं या आप अंग्रेज़ी में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका नेशनल जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, उस पर ये चीज़ पोर्ट्रे हो रही है कि ये पाकिस्तान का रिपोर्टर है और ये न्यूज़ चैनल का वो रिपोर्टर है जिसकी ये ज़बान है जो क्लियरली बात भी नहीं कर सकता. तो जो आपका इमेज इंटरनेशनली जा रहा है वो हर तरह से, चैनल का भी, मुल्क का भी और उस रिपोर्टर का भी, वो बहुत डिस्टॉर्टेड जाता है. अच्छा, इसमें 2 क्वेश्चंस हैं जो आपने किए. एक तो आपने कहा कि रिपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात आ गई ना. देखिए, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि हमारे यहाँ वर्कशॉप्स बहुत होती हैं, रिपोर्टर्स की भी होती हैं, प्रोड्यूसर्स की भी होती हैं और शायद मेरे ख्याल एंकर्स की भी होती हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है वो नहीं होती है. ये एक डिलेमा है, और ये डिलेमा मुझे लगता है इसलिए भी है कि मेरे बाद की जो जनरेशन अब मैं देख रही हूँ, अपने बाद की इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब वो हमारे सामने जिस तरह से काम कर रहे होते हैं तो हमें नज़र आ रहा होता है. हमारी नेक्स्ट जनरेशन बहुत कम कैपेसिटी रखती है सीखने की. उसको समझाया भी जाए तो शायद वो उस तरबियत से नहीं समझना चाह रहे होते हैं. अब दूसरा सवाल जो आपने कहा, एक तो देखिए ट्रेनिंग का फुकदान है. मीडिया टीवी चैनल्स के लोगों को मैं यहाँ से ग्रीनिच के इस स्टूडियो से इस बात का ज़रूर पैगाम देना चाहूँगी कि आप अपने लोगों की ट्रेनिंग्स करवाएं. आप प्रोफेशनल जर्नलिस्ट को दुनिया भर से, यहाँ पे बड़े बड़े इदारों के नाम आपको लेके बता सकते, मतलब लोग आए थे यहाँ, हमने ट्रेनिंग्स हासिल की, हमने रॉयटर्स से हासिल की, हमें बताया गया कि हाउ टू एडिट, हाउ टू प्रोड्यूस द प्रोग्राम्स, हाउ टू एडिट द न्यूज़ एंड हाउ टू एडिट द प्रोग्राम. न्यूज़ की लिखने का तरीका क्या है, कैप्शन कैसे बनेगा. आई मीन बहुत ही निटी-ग्रिटीज में जाके हमारी ट्रेनिंग हुई है. लेकिन अब मैं वो बार बार बात दोहरा रही हूँ, लेकिन शायद मुझे लगता है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा कमी है हमारे रिपोर्टर्स की ट्रेनिंग की. वो लगता है कि माइक पकड़ के बस बोले जाना है, क्या बोलना है, किस पेस में बोलना है. देखिए, गुफ्तगू करते हुए 2 मयार होते हैं. जब आप किसी से बात करें तो आपकी बात मुकम्मल तौर पर उसको समझ आनी चाहिए और आपका लहजा इतना शफाफ होना चाहिए कि अगर वो आपके जुमले गिनना चाहे तो वो गिन ले कि आपने 1 मिनट में 70 अल्फाज बोले कि 100 अल्फाज बोले या लफ्ज बोले. तो कहने का मकसद ये है कि एक तो ट्रेनिंग का बहुत बड़ा फुकदान है. फिर जब आप बात करते हो अंग्रेजी की या उर्दू की या जिस भी आप जुबान में बात करते हैं, देखिए अंग्रेजी का तो मामला ये है उमर साहब कि ये हमारी कोई मदर टंग तो है नहीं, ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें फ्लुएंट होना चाहते हैं और अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम कोई तीसमार खान हैं, तो फिर उसके लिए भाई पढ़ लिख के आए तो ज़्यादा बेहतर है. लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसका काम उसी को साझे. जो काम आपको आता नहीं वो काम ना कीजिए. जिस लहजे या जिस लैंग्वेज में आपकी कमांड ही नहीं है, तो आप अगर उस पर ना भी बात करें तो कोई उसमें मजायका नहीं है. लेकिन जब आप इंटरनेशनल इमेज की बात करते हो तो मैं इसमें 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगी. देखिए, नेशनल मीडिया पे जो रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं, इल्ला माशाल्लाह मेरा ख्याल है कोई मैथ्स कॉम करके आया हुआ होगा, इल्ला माशाल्लाह होगा. तो अगर इल्ला माशाल्लाह लोग मैथ्स कॉम करके आए हुए हैं तो वो कैसे उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उस तरह डिलीवर करेंगे. मैंने इनिशियली बात ये की थी कि एक एंट्रेंस पे बेंचमार्क बने, कोई रिक्वायरमेंट्स हो, क्योंकि एक जो इमेज बना हुआ था वो ये कि जी आप कहीं कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं कर सकते तो मीडिया में आ जाओ. देखो, एक ये भी उमर, मैं बड़ी अक्सर आप जैसे स्टूडेंट्स और दीगर लोगों से जब हमारी मुलाकात होती है, हम लेक्चर्स पे जाते हैं, तो हम उनको ये कहते हैं कि ये भी एक तरह का ट्रेंड है कि आप क्या करते हैं. जी मैं मीडिया में काम करता हूँ. क्या करते हैं? जी मैं प्रोड्यूसर हूँ. क्या करते हैं? जी मैं एंकर हूँ. क्या करते हैं? जी मैं रिपोर्टर हूँ. एक ज़माना था, मुझे अच्छी तरह याद है, पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के ना ड्रम्स बन गए थे, इतने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे.
मैं हर दूसरे लड़के लड़की से पूछती थी, वो कहते थे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना। तो प्लीज बी क्लियर इन योर फ्यूचर, व्हाट यू वांट टू डू इट, व्हाट यू वांट बी, मतलब आप करना क्या चाहते हो, बनना क्या चाहते हो। मैं आप जैसे स्टूडेंट्स की नहीं लेकिन और दीगर लोगों की बात करी, मैं बेतहाशा ऑडिशन ले चुकी हूँ, मुझे अंदाजा है, मैं बच्चों को देखती हूँ, वो बिल्कुल उनको अंदाजा ही नहीं है कि उनका फोकस क्या है, क्लैरिटी नहीं है, डीफोकस्ड हैं कि उनको आप कहीं पे भी लगा दें। मतलब मैं जब उनको फॉर्म फिलिंग के लिए देती हूँ कि आप मुझे बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो वो जो स्पेस होती है वो खाली होती है और वो सोचते हैं कि शायद वो मुझे भर देनी चाहिए कि मैं उनको बताऊं कि उनको क्या करना चाहिए। देखो मैस्कॉम पढ़ें, जो बात फवाद चौधरी साहब ने कही थी मैं उसको बिल्कुल नहीं मानती कि चैनल्स का कोई फ्यूचर नहीं है और लोग डिजिटल मीडिया की तरफ जाए। डिजिटल मीडिया की अपनी अहमियत है और नेशनल टेलीविजन की अपनी अहमियत है, लेकिन देखो जब आप पढ़ रहे हो आपको ये नहीं पता कि इस 4x4 के कमरे में 2 लाइट्स की कैपेसिटी है या 4 लाइट की कैपेसिटी है, बाउंस ऑफ लाइट क्या है, विदाउट पेपर बटर पेपर बाउंस करेगा या नहीं करेगा, या इसके ऊपर जेल लगाना पड़ेगा। तो प्लीज यार फॉर गॉड से आप फिर उस चीज को जब तक नहीं समझोगे आप डिलीवर नहीं कर सकते। मैस्कॉम के बच्चे जो पढ़कर आ रहे हैं या तो वो आई डोंट नो, मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैंने मैस्कॉम नहीं पढ़ा हुआ, इसलिए मैं बड़े क्लियरली आपको बता रही हूँ कि मैं मैस्कॉम स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े होकर सीखा है। मुझे पता है कि ट्राइपॉड को कितना मुझे पकड़ना है, कैसे पकड़ना है, एंगलिंग कैमरे की क्या करनी है, इंचेस ऑफ फ्रेम्स भी हमें सिखाए गए। जो मैस्कॉम का स्टूडेंट आता है वो बाय बुक जाता है। देखो जब आप फ्लोर पे यहाँ खड़े में हैं और हमने एक सिटिंग अरेंजमेंट ये आपने मुझे बना के दिया है, हो सकता है कोई और प्रोड्यूसर आए सीनियर और वो हमें इससे अच्छा फ्रेम बना के दे दे, राइट, तो वो कैसे बनाएगा। देखो मैं और आप बाय बुक जाएं अगर तो हम कहेंगे कि नहीं इस रूम की डायमेंशन के हिसाब से मुझे लाइट इतनी बाउंसी मिल रही है, मेरा फ्रेम सेटल्ड है, मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर है, तो मैं इसमें बहुत कंफर्टेबल हूँ। लेकिन कोई और सीनियर आदमी आके हो सकता है हमसे बेहतर बात करे क्योंकि उसका एक्सपीरियंस होगा, बट आई एम ट्राइंग के बाय बुक जरूर जाएं, ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस काउंट्स, राइट। अब एक बात आपने की कि क्लैरिटी नहीं आती बच्चों को, तो अब का जो हमारी यूथ है, एक मेरा भी बहुत एक सोच है इसके ऊपर और मैं काफ़ी कंसर्न हूँ इस बारे में भी कि जब आप किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो आपको उनकी इंटेलेक्ट का पता चलता है। एक बच्चे की इंटेलेक्ट बनती है उसकी सराउंडिंग से, जो वो देखता है, जो वो सुनता है। तो ग्रोइंग अप से, अपने टीनेज से जो अपने टीवी पे देखता है उसका उसकी इंटेलेक्ट में एक बड़ा अहम किरदार है। एंड नाउ ग्रोइंग अप जो न्यूज़ चैनल पे एक बच्चा, अगर कभी ज़िंदगी के अंदर मेरे फ्यूचर हो तो मैं किसी भी बच्चे का अपने न्यूज़ चैनल सबसे पहले बैन करूँगा कि आपको इजाज़त ही नहीं देखने की। कितना किरदार है हमारे न्यूज़ चैनल का हमारी इंटेलेक्ट को आज ये बनाने में। अगर आप न्यूज़ चैनल की बात ना करें, खाली ओवरऑल मीडिया, इसलिए आपको लेके जा रही हूँ उस तरफ। आजकल एक ड्रामा बहुत हिट चल रहा है पाकिस्तान में, हर तीसरे बंदे को उस ड्रामे का पूरा गाना भी आता है, उसका जिंगल भी आता है, उसके कैरेक्टर्स के नाम भी पता है, नाम भी ले लेती हूँ ड्रामे का, सिर्फ तुम के नाम से है, पता नहीं क्या, मुझे तो पता भी नहीं है, शायद मैं कुछ इसी तरह का नाम है आई थिंक। देखो सोसाइटी रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, जो आपकी सोसाइटी में हो रहा है वो ड्रामा रिफ्लेक्ट करता है, वही न्यूज़ रिफ्लेक्ट करती है। देखो रेप हो रहा है तो मैं रिपोर्ट कर रही हूँ ना, अब्यूज हो रहा है तो मैं रिपोर्ट कर रही हूँ ना, मिसकमिटमेंट्स हो रहे हैं सोसाइटी में तो मैं रिपोर्ट कर रही हूँ ना, आप लोगों को मिसबिहेव कर रहे हैं तो मैं रिपोर्ट कर रही हूँ। अगर सोसाइटी इतनी सेटल्ड हो जाए कि वहाँ इतने इम्बैलेंस किस्म के इमोशंस ना मिले मुझे, तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा दिखाने के लिए। मैं आपको यहाँ मिसाल देना चाहूँगी, BBC आप सब लोग देखते होंगे और हम भी देखते हैं, एक सर्टेन टाइम पर BBC के ऊपर डॉक्यूमेंट्री चलती है। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? उनकी FPC में क्या खबरें दिखाने के लिए नहीं होती? क्या उनके लैंड पर इस तरह की चीजें नहीं हो रही होती कि वो ना दिखाएं? बट उनका एक नेचर है, उनको एक चीज में सेटल्ड कर दिया गया सोसाइटी को कि फॉर दैट सर्टेन पीरियड आप दिखाएंगे और इसके बाद आपने मूड को स्विंग कर देना। हमारे यहाँ दिखता यही है हमारे। That's the irony because देखो आपका देखने वाला आपको नहीं देखेगा। आप अगर 4 किताबें लेके बैठे ना कि आज हम बात करते हैं
कि अशफाक अहमद साहब ने क्या लिखा था, या ना चले आज ऐसा करते हैं. Why is that? Because we fed them that. अगर आप अच्छा काम करेंगे और अगर आप लोगों को पॉजिटिविटी की तरफ लाएंगे तो वो क्यों नहीं आएंगे. मेरा कहने का मकसद है नॉट ओनली न्यूज़, जितना मीडिया है, जो आपने बीच में डॉक्यूमेंट्री का जिक्र किया, और अगर हमारी सोसाइटी में रेप हो रहा है, चोरी हो रही है, क्राइम हो रहा है, तो एजुकेट करने का भी तरीका है. होता क्या है कि व्हेन वी ट्राई टू मेक समथिंग टू एजुकेट देम, पीपल गेट न्यू आइडियाज फ्रॉम दैट एंड कम टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड ऑफ इट. एब्सोल्युटली राइट एंड आई एग्री. लेकिन मैं तारिक अजीज साहब को सभी सारी दुनिया जानती है. तारिक अजीज साहब से एक दफ़ा मेरी टेलीफोन पर बात हुई. मैं उनको अपने टेलीविज़न शो के लिए मदऊ करना चाह रही थी कराची, लेकिन वो नहीं आ सके बहरहाल. तो उनसे मैंने पूछा कि सर बड़ी एक सवाल का तो मुझे जवाब देते, तारिक अजीज कैसे बन गया, मतलब आज तो कोई सोच ही नहीं सकता. तो उन्होंने कहा कि उस वक्त मैंने वो काम किया जो कोई नहीं कर रहा था. उस तरह का शोज उस जमाने में जो शोज हो रहे थे वो आपको भी पता है, स्टूडियो 2:45 हो रहा था, स्टूडियो 2:30 हो रहा था, मोइन अख्तर शो हो रहा था, यस सर नो सर हो रहा था, और बहुत सारे दीगर शोज हो रहे थे. गिफ्ट देना, लोगों से सवाल करके उनको अप्रिशिएट करने का काम तारिक अजीज साहब ने शुरू किया. उन्होंने कहा ये मैंने लोगों को सिखाने की मेरी एक या पहले पाकिस्तान टेलीविजन का एक विजन था कि हम लोगों को एजुकेट भी करें और उनको प्रेज भी करें साथ साथ. अब क्या हो रहा है, उसका बिल्कुल अलग हो रहा है. आप लोगों को सिर्फ आई एम सॉरी फकीर बना रहे हैं या भिखारी बना रहे हैं. True. ये ले लो मोटर बाइक, ये ले लो कपड़े, ये ले लो और गाना, उसके लिए करवा और ये क्या रहे हैं, एजुकेट करने की जगह डांस करवा रहे हैं, ये चीज उनका मजाक बनवा रहे हैं. इसी एलिमेंट पे एक केक रखा है, आप कह रहे हैं इस केक को आप मुंह से खाएं, और वो पूरा केक खाते हुए बंदी की शक्ल बिगड़ गई या खातून की शक्ल बिगड़ गई. देखो मैं आपसे फिर उसी बात पे आऊंगी, व्हाट सोसाइटी नीड्स. ये बात मुझे तारिक साहब ने कही, नहीं सोसाइटी अभी जो मैंने अपनी पिछली बात की उस बात की नफी करेगी, क्योंकि वो एक सीनियर आदमी, उन्होंने बिल्कुल मुझे सही सीख दी कि जो दिखाओगे ना वही लोग सीखेंगे. अगर हम पॉजिटिव चीजें दिखाना आज से कोई एक चैनल शुरू कर दे, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारे पाकिस्तानी बच्चे कार्टून नेटवर्क्स देखते हैं तो वो भी हिंदी देख रहे होते हैं डबिंग्स में. हाँ, हमारे पास हमारे बच्चों के लिए कंटेंट नहीं है. हम अपने बच्चों को ना गेम्स दिखाते हैं, ना इंडोर गेम्स के बारे में बताते हैं, ना आउटडोर्स. हम बच्चों के लिए कोई कंटेंट जनरेट ही नहीं कर रहे. जिस जमाने में मैं बच्ची थी हमारे पास बड़ा कंटेंट होता था भाई, हम देखते थे, चाहे आप ऐनक वाले जिनका मजाक उड़ाते रहे बैठे हुए आज के दौर में, लेकिन हम उसको देखकर बड़े हुए. कैम कैंडी कार्टून आता था, हमारे लिए 5 बजे का वो टाइम बड़ा प्राइम टाइम होता था. हम कहते थे दुनिया इधर से उधर हो जाए, कैम कैंडी जरूर देखना है हमने. तो निंजा टर्टल्स एंड सो ऑन एंड ऑन, हम देखते थे. तो आपने बच्चों को रिमूव कर दिया, आपने सिर्फ वायलेंस को दिखाना शुरू किया. तो मीडिया ने अपना शिफ्ट जब चेंज किया कंटेंट का, तो सोसाइटी ने भी उससे वही डिमांड करना शुरू कर दी कि ओके वी नीड मोर. मैं यहाँ पे जो जितने किड्स कंटेंट है उसकी एट द सेम टाइम तारीफ करना चाहूँगा. वी हैव लेजेंड ऑफ मारखोर, 3 बहादुर ग्लोबली अवार्ड्स जीते हैं. वी हैव द बुरका एवेंजर्स, एक नई चीज़ ब्रांड्स ने शुरू की है कि वो अब अपने ब्रांड को बच्चों को टारगेट करके कमांडर सेफ गार्ड हो जाते हैं, और डर्टू आ जाता है जर्म से फाइट करने के लिए, और 10 चीज़ें आ गई हैं. तो एट द सेम टाइम वो चीज़ें भी चल रही हैं. बट ये जो आपने कहा ना कोई एक चैनल, यहाँ एक चैनल से आई डोंट थिंक कि कुछ होगा, क्योंकि एक चैनल जब अच्छा काम करेगा और बाकी वही कर रहे हैं तो उस एक को साइडलाइन कर दिया जाएगा और बाकी नेगेटिव टेलीविजन लोग कितना देखते हैं. दैट्स द पॉइंट. क्योंकि अगर आप पीटीवी देखते हैं तो आपको दिखता है कि पाकिस्तान में कितनी प्रोग्रेस हो रही है. और यही एक मेरी बात पहले हमारी बात में रह गई कि एक सीन चल रहा है किसी जगह पे, XYZ जगह पे, और मैं चैनल स्विच करना शुरू करता हूँ. फ्रॉम 1 to 20 मैंने 20 डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स स्विच किए, और एक ही सिनेरियो दिख रहा है और उसके मुझे 20 अलग एंगल दिखे. नाउ बीइंग अ कॉमन मैन आई एम वंडरिंग कि इसमें से हकीकत क्या है, क्योंकि 20 के 20 लोग मुख्तलिफ बात कर रहे हैं, डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से. किसी जो एक चैनल किसी को हीरो दिखा रहा है, एक उसी को विलन दिखा रहा है, एक उसी को सपोर्ट कर रहा है, और एक कह रहा है कि नहीं इनकी बात बिल्कुल जस्टिफाइड है. व्हाट टू बिलीव? इस पे भी मैं आपको एक वाकया बता देती हूँ. हम बैठे हुए थे कुछ सीनियर जर्नलिस्ट के साथ, तो उन्होंने बताया कि एक वक्त पाकिस्तान में ऐसा था कि हम कहते थे कि हुकूमत भी हम बनाते हैं, हुकूमत भी हम गिराते हैं. ये जर्नलिस्ट की अप्रोच थी. और वहाँ पर जो जर्नलिस्ट बैठे थे वो बड़े नामी गिरामी जर्नलिस्ट थे. ऐसा नहीं है कि वो कोई छोटे मोटे लोग थे. कहने का मकसद क्या है इस बात के पीछे, कि जब जर्नलिस्ट को अपनी पावर का अंदाज़ा है कि वो जो दिखाएगा लोग उसको अब्जॉर्ब कर जाएंगे,
आप क्या हुआ ये है पिछले 20 वर्षों के दौरान कि सोसाइटी डिवाइड हो गई। तो ये तो हमने सारी बातें कर ली और सारे प्रॉब्लम्स को भी आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन व्हाट आर द सॉल्यूशंस, और वो सॉल्यूशंस जो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। आई नो इट इज़ इम्पॉसिबल कि हम अपनी आवाम को, उनकी मेंटालिटी को, जितने लोग सब गलत काम कर रहे हैं उनको सुधार सकें, बट कहीं से तो स्टार्ट हो सकता है, कहीं से तो वी कैन मूव एन इंच टूवर्ड्स बेटरमेंट। एग्रीड ऑन दैट उमर, कि देखें कहते हैं कतरा कतरा दरिया बनता है, ठीक है। हमारे तो दरिया भी सूख गए। मसला ये है कि किसी एक को जैसे आपने कहा कि फ़र्क पैदा करना पड़ेगा या पहला स्टेप उठाना पड़ेगा। उसके लिए चाहे एंटरटेनमेंट साइड हो, चाहे न्यूज़ साइड हो, या फिर दीगर और जो जॉनराज हैं उसमें काम करने वाले लोग हों, टेलीविज़न के अलावा रेडियो का मीडियम हो, अखबार हो, या फिर डिजिटल मीडिया हो आपका, कहीं बेहतरी की शुरुआत करनी पड़ेगी। जितनी नेगेटिविटी को प्रमोट कर रहे हैं हम, अगर हम थोड़ा सा इसमें एजुकेशनल एलिमेंट ऐड कर दें तो वो नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली बिल्कुल ख़त्म या आहिस्ता आहिस्ता उसका असर ज़ायल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसमें जो बुनियादी चीज़ है उसमें ज़रूरत है आपको पढ़े लिखे जहनों की, विजनरी लोगों की, जिनके पास जहन हो, उनको सिर्फ ये अहमियत ना हो कि मेरे कितने व्यूज़ आ गए, मेरी कितनी TRP आ गई, या मैं कितना लोगों में मकबूल हूँ। उनको ये मालूम होना चाहिए कि जो वो बात बता रहे हैं या कह रहे हैं या दिखा रहे हैं टेलीविज़न पर या किसी भी मीडियम पर, उसकी अहमियत क्या है और उससे उनकी सोसाइटी की पॉजिटिविटी पे कितना बेहतर असर पड़ेगा। आई थिंक अगर कोई एक या दो भी ये शुरुआत कर देंगे तो बाकी भी सब फिर उसी लाइन पे चल पड़ेंगे, मेरा ख्याल। राइट, वेरी वेल सेड। और इस बात को अगर मैं समराइज करूं तो आई वुड से कि जी सबसे पहले तो आप अपने आप से सवाल करें कि आप कौन हैं, आप क्या हैं, आपका ज़िंदगी में पर्पस क्या है। इंसान में उसकी इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है, और अगर आप खुद से ऑनेस्ट नहीं हैं तो यू कैन नॉट गिव ऑनेस्टी और गिव एनीथिंग बैक टू द वर्ल्ड। तो चाहे आपका पर्सनल सक्सेस हो, बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम जहाँ हमने स्टार्ट की थी बात रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आती है कि आपने लोगों तक जब कोई कहानी पहुँचानी है तो आपको इस बात की श्योरिटी हासिल करनी है कि वो बात आपकी 100% करेक्ट हो, ऑथेंटिक हो, ताकि क्योंकि जब आप टीवी पे आके कोई एक बात करते हैं तो लोग बगैर उसकी तस्दीक किए दुनिया में जाके वो बात फैलाते हैं, और इस चीज़ की एडवांटेज लोग लेते हैं जो गलत काम कर रहे हैं कि आप कुछ भी बात फैलाएं और वो यूँ सोसाइटी में फैल जाती है। तो एजुकेट करना हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है, एजुकेट करने के साथ साथ सही बात बताना हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। वी एट ग्रेनिच यूनिवर्सिटी वी डू हैव आवर मीडिया डिपार्टमेंट, जहाँ मीडिया स्टडीज़ के अंदर यही कोशिश करते हैं कि जब हमारा बच्चा फील्ड में जाए तो वो एथिक्स, इंटेग्रिटी और किस तरह से काम होता है वो सीखे और इस मीन वर्ल्ड के अंदर सरवाइव कर सके, जहाँ पे अच्छा काम करने पे हमेशा आपको रेजिस्टेंस मिलेगी। तो इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कि अगली दफ़ा मुलाकात हो तो हमारे ये जो मसाइल हैं जो हम फेस करते हैं मीडिया के अंदर नेगेटिविटी की तरफ, वो बेहतर हो। थैंक यू सो मच मैम फॉर टेकिंग योर टाइम, एंड इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मदद किया, बहुत यू मोस्ट वेलकम। सो बिल्कुल आपने सुना सना हाशमी को, द सीनियर न्यूज़ प्रोड्यूसर एट GTV, ऑल्सो अ न्यूज़ एंकर, a host and a very charismatic personality, as you just heard. So until next time, Pakistan Zindabad. Dr. Sirajuddin Aziz is an experienced banker having served in Pakistan, United Kingdom, China, Hong Kong, United Arab Emirates, and Nigeria, covering a wide spectrum of portfolios. Despite a prolific banking career spanning over 3 decades, he also is a true teacher at heart. His scholarly contributions span across various domains, including human behavior, economics, ethics, leadership, management, politics, and religion. Mr. Aziz is a regular contributor to national and international dailies, journals, and magazines.
He has published several works of scholastic distinction, including The Art and Craft of Management, Corporate Pakistan, Insights to Leadership and Governance, In Quest of Mirage, The Essence of Islam, and Mongolian Pot, among others. He has also featured in televised discussions on finance and economy and is an audible speaker across various fora on a wide array of subjects. In 2015, Greenwich University conferred upon him the honoris causa degree in recognition of his multidimensional services. आज सबसे पहले मैं मुखातिब होना चाहूँगा उन वालिदैन को जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं कि आज का दिन आपके लिए बाइस मसरत होना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चों ने एक इल्म हासिल किया है ग्रीनिच यूनिवर्सिटी से, जो मुझे पूरा यकीन है वो बरूए कार लेकर आएंगे अपनी आगे ज़िंदगी में और कुछ ऐसा काम करेंगे इस कौम मुल्क के लिए कि आपका भी सर बुलंद रहेगा हमेशा फ़ख्र के साथ। तालिब इल्मों से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, आप आइंदा जब अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हों तो सिर्फ़ अपने लिए नहीं बल्कि अपने माशरे के लिए काम कीजिए, अपने मुल्क के लिए काम कीजिए और ऐसा कोई काम कीजिए जिससे हमेशा आपकी यूनिवर्सिटी और आपके वालिदैन का सर झुके नहीं बल्कि फ़ख्र से ऊँचा रहे। कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है, सही कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सजील लियाकत है और आप देख रहे हैं लाइव कॉर्ड विद सजील लियाकत। जी हाँ, इस शो के अंदर हम लोग आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, म्यूजिक के हवाले से, इंस्ट्रूमेंटल कैसे प्ले होता है और आप गाना किस तरीके से गा सकते हैं, कौन सा राग किस टाइम सूट करता है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं। बहुत सारे गेस्ट आने वाले हमारे साथ, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। देर किस बात की, अभी लाइक करें ग्रीनिच वेब टीवी को, ग्रीनिच यूट्यूब चैनल को और ग्रीनिच फेसबुक को। स्टे ट्यून्ड विद अस। कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है, सही कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सजील लियाकत है और आप देख रहे हैं लाइव कॉर्ड विद सजील लियाकत। जी हाँ, इस शो के अंदर हम लोग आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, म्यूजिक के हवाले से, इंस्ट्रूमेंटल कैसे प्ले होता है और आप गाना किस तरीके से गा सकते हैं, कौन सा राग किस टाइम सूट करता है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं। बहुत सारे गेस्ट आने वाले हमारे साथ, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। देर किस बात की, अभी लाइक करें ग्रीनिच वेब टीवी को, ग्रीनिच यूट्यूब चैनल को और ग्रीनिच फेसबुक को। स्टे ट्यून्ड विद अस। Founded in January 2015 as an email marketing firm, eMarketers have quickly expanded itself to become a digital marketing firm offering a one-window solution to its customers. Usman PEG creative thinking and leadership that eMarketers currently offers the market with 6 services which consist of email marketing, branded SMS marketing, social media marketing, search engine optimization, web development services and photography services to its client. Specializing in business to business marketing, we currently possess diverse portfolio of firms which consist of companies such as HP Paper Pakistan, where we are their official vendor for digital marketing Pakistan, NAFA Funds by National Bank of Pakistan, and also serving as official digital marketing partner of IEEP along with Badr Expo. Mr. Sirajuddin Aziz is an institution within himself.
He's regarded as one of the leading bankers of this day and age, not only on a national level but internationally as well. His contributions to the executive financial sectors of banking like marketing, foreign trade, corporate credit, and trading and development, to name a few, are groundbreaking. Mr. Aziz started his career in 1977 at the Bank of Credit and Commerce International. After making his mark, he moved to different professional assignments, which took him to numerous countries, such as Nigeria, Abu Dhabi, and England, where he rendered his exemplary services. Mr. Siraj is currently heading the Habib Metropolitan Bank as President and CEO. Under his unparalleled leadership, the bank has seen immense growth, with the network growing impressively in all parts of Pakistan. He is also one of the founding members of UBL and served as CEO of Bank Al-Falah, where he led the bank to sustained growth. With 406 branches in 5 countries and an HR complement of over 10,000 employees. He has vigorously promoted Pakistan as a trading partner and attracted large investments in his capacity as bank head. He has proceeded on to actively overseeing the entire spectrum of banking operations of various banks for over the last 15 years. So you've held top positions in the banking sector. What was the one thing that made you choose this sector, and why do you keep going on in it? To be honest, I did not select banking as a profession. I went there accidentally, in the sense that everybody from my class while we were at the university were applying for a classified ad response in the Daily Dawn. And from one interview to the other, it was a journey, and suddenly I decided to plunge into banking. The fact that I have clung to it is the fact that I realized over the period of time that I spent there that banking is not about money, banking is not about economics, banking is about people, and people interest me. So in your book, Bitter and Sweet, you've wrote that you gave meaning to your father's life. How was that? The book that you're mentioning is actually an autobiography of my father. I have only put upon each and every single graduate today that please look at the faces of your parents. They're smiling, they're happy. Don't pull out that smile ever from their face. Let it remain there, radiating and smiling and giving you strength for your life. Thank you so much for giving us your time, sir. Thank you. Pleasure is mine. Aziz, an inspirational personality and a noted visionary of our time, is not only binded to the banking and financial sectors, but is also a teacher at heart. He yearns to see the youth of today taking our country to greater heights. He has penned a number of poems and writings on different topics and is also an avid reader. Mr. Siraj's career is one which has seen growth at an exponential level. He has been the recipient of numerous awards, all highlighting the milestones that he has acquired over the time of his illustrious career. He is a man of many talents and is duly credited for it. Despite being a distinguished banker and having a strenuous schedule, Mr. Aziz is still a dedicated family person. He has always been and remains a man of virtue. When I got married, we went abroad, we went to Nigeria. His first posting was when I got married. Before that, he has been staying at London, Abu Dhabi. But at Lagos, we had a very good time there. He's a very good husband. और यानी कि we take advantage of it also because he's good. और बस एक शिकायत है because time ज़्यादा नहीं देते ये घर पे और he comes around about 9:30 at times. ज़ाहिर है we hardly, because he's very fond of his children. So even though they don't get the time they need, or he's not fond of going out, having food out. Giving. He inspires those he meets with his undiluted humbleness, sincerity, and compassion. He delivers every word he speaks with a dignified thoughtfulness and humble sweetness that leaves his audience overswept with a sense of calm and an urge to listen to more. For his significant contributions to the development of his beloved country's financial sector and for his honorable public service,
the degree of Doctor of Financial Management, honoris causa, is being awarded to Mr. Sirajuddin Aziz at the Convocation 2015 of Greenwich University, Pakistan. जब मेहनत, हिम्मत, जहानत, लियाकत और खिदमत इंसानियत की सिफात इंसानी वजूद में ढल जाएं, तो सरदार मोहम्मद यासीन मलिक का खाका सामने आता है। सरदार यासीन मलिक एक अहद साज और हमा जहद शख्सियत के मालिक हैं। फ़रोग़ तालीम के लिए अनथक मेहनत, मुस्तहक़ीन की मुसलसल खिदमत और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए खिदमत बा तर्ज़ इबादत आपकी जिंदगी का नस्बुल ऐन है। सरदार यासीन मलिक 1941 में बर्रे सगीर में पैदा हुए और तक़सीम हिंद के बाद 9 साल की उम्र में पाकिस्तान तशरीफ ले आए। इल्म की शमा से मुआशरे को मुनव्वर करने वाली शख्सियत यासीन मलिक ने अपनी इब्तिदाई तालीम लियारी से हासिल की और बाद अज़ां हुसूल इल्म की गरज से सिंध मदरसतुल इस्लाम और सेंट पैट्रिक कॉलेज से मुंसलिक हुए। यासीन साहब की इब्तिदाई जिंदगी उसरत से इबारत है। वो बिजली की अदम दस्तयाबी के सबब सड़क किनारे आवीजा बरक़ी कुमकुमों तले मुताला किया करते और इसी इल्म, दोस्ती, अज़्म हिम्मत, मेहनत और लगन और जहद मुसलसल की बदौलत आप कठिन लम्हात और मुश्किल औकात को शिकस्त देकर कामयाबी और कामरानी से सरफराज हुए। सरदार यासीन मलिक जहां मुल्की मईशत को इस्तेहकाम बख्शने में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, वहीं दुखी इंसानियत की खिदमत और बेसहारा लोगों की मुआवनत के साथ साथ फलाही और रिफाई इदारों से भरपूर ताउन करना इनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बतौर नायब सदर अंजुमन हिलाल अहमर पाकिस्तान, आपने कुदरती आफात से मुतासिरा अफराद की बहाली के लिए जो इक़दामात किए वो यकीनन काबिल सताइश है। सरदार यासीन मलिक ने उबूरी हुकूमत में न सिर्फ सूबाई वजीर बराए मजहबी उमूर खिदमात अंजाम दी, बल्कि अपनी लियाकत और वक़ी तजुर्बे की बदौलत वजीर आज़म पाकिस्तान के मुआविन खुसूसी भी मुकर्रर हुए। बहैसियत डायरेक्टर पाकिस्तान स्टेट ऑयल सरदार साहब की खिदमात को किसी तौर फरामोश नहीं किया जा सकता। दर्स व तदरीस की फरोग व तरवीज और तलबा को जदीद उलूम व फनून से आरास्ता करने के लिए यासीन साहब ने सैकड़ों तालीमी इदारों की माली मुआवनत फरमाई और आज भी मुताद्दिद स्कूलों, कॉलेजों और जामियात की सरपरस्ती के फराइज अंजाम दे रहे हैं। यासीन साहब को इनकी गिरा कद्र समाजी खिदमात के एवज हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हिलाल इम्तियाज और सितारे इम्तियाज अता किए गए। अवामुन्नास की बेपनाह फलाह बहबूद के एतराफ में इन्हें साल 2004 में मुल्क का बेहतरीन आदमी करार दिया गया। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Sir, as you have known Mr. Sardar Yasin Malik for a very long time, and we are awarding him with an honorary doctorate degree. Is there anything you would like to say about his personality? Sardar Sahab is a very interesting and impressive personality. He is a man of many qualities. Most among them, or most foremost among them, is that he is a very humane person, always considerate for others. And interestingly, we met regarding public service to do with the setting up of public toilets. And he was forthright in helping establish a chain. Then whether it had to do with medical treatment, educational stipends, other marriages and other needs of people, he was always forthcoming.
ever ready to help. Now, these are qualities that are, mashallah, needed and dear to Allah subhanahu wa ta'ala and to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And I think it is something that leaves a deep mark on society. What do you think is the one thing that has made Mr. Yasin Malik achieve all the milestones that he has achieved? Of course, everything is with the blessings of Almighty Allah, but it is his hard work, his sincerity, his vision, and like I said, his concern for others. And I'm glad that you recognized his services to society and awarding him with this degree. I wish you and Sardar Sahab the best. May Allah bless you all. Assalamu सर, आपका ताल्लुक सरदार यासीन मलिक से बहुत पुराना और गहरा रहा है। क्या आप उनके बारे में अपने ख्यालात का इज़हार करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। जब आपने सरदार यासीन मलिक के बारे में पूछा तो यकीन इनका नाम सुनते ही फरिश्ता खतलत इंसान की याद आ जाती है। आपको याद होगा, पढ़ा होगा आपने कभी कि नूरजहां ने कश्मीर के बारे में कहा था कि अगर फिरदौस बर रुए ज़मीयत हमी हस्तो हमी हस्तो हमी हस्त, तो मैं ये कहूँगा कि अगर ज़मीन पर कोई फरिश्ता मौजूद है तो वो सरदार यासीन मलिक हैं। उनको आप देखिए, चलते फिरते फरिश्ता हैं, नहायत खुश मिजाज, नहायत नरम गो, नहायत अनजूमिंग, किसी किस्म का तसन्नुन नहीं है उनकी बातों में या उनके रहन सहन में। ये वो चीज़ें हैं कि जो उनको सबसे नुमायाँ करती हैं। पाकिस्तान इज़ ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। यहाँ बहुत कुछ है, तनहा काम करने की कोशिश ना करें, बल्कि इसमें अपने कारोबार के लिए, अपने कैरियर के लिए कोशिश करें कि दयानतदार लोग आप ढूंढें। ग्रेजुएशन में थे तो हमारे साथ मोहम्मद सिद्दीक शेख हमारे क्लास में पढ़ते थे। उनका केमिकल का काम था, जहाँ से मेरे कैरियर शुरू हुआ कारोबार का। मैं वहाँ पर एज ए सेल्समैन काम करता था कॉलेज के टाइम के बाद में। तो 1% कमीशन मिलती थी मुझे, और मुझे एक्नॉलेज करना चाहिए मोहम्मद सिद्दीक शेख को। उन्होंने मुझे बहुत आगे बढ़ाया और अल्टीमेटली एंडेड अप व्हाट आई एम टुडे। मुस्तफ़ा कमाल पाशा प्रैक्टिकल लाइफ में ही वाज माय गाइड, और ऑफ कोर्स हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी ज़िंदगी में पहले नंबर पे आते हैं। माँ का जिक्र है तो मेरी माँ की दुआ मेरा ख्याल है कि बहुत ज़रूरी है। बहरहाल माई फादर हैज़ बीन 105 years old। मुझे नहीं मालूम कि मैंने कभी अपने बड़े भाई के सामने या अपने वालिद के सामने कभी ऊंची आवाज़ में बात की हो। सरदार यासीन मलिक पाकिस्तान और अक़वाम आलम के दरमियान बेहतर तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। शोबे तालीम की बेहतरी और मईशत की बहाली के साथ साथ यासीन साहब ने अपनी जिंदगी दूसरों का मयार जिंदगी बुलंद करने और अवामुन्नास को राहत पहुंचाने के लिए वक्फ कर दी है। ग्रीनिच यूनिवर्सिटी सरदार यासीन मलिक को इनकी गिरा कद्र खिदमात के एवज एजाजी डॉक्टरेट की सनद तफवीज करती है। रसूल का जन्नत रसूल की और दोज़ख में कैसे जाएगी ये उम्मत रसूल की। भर तो झोली भर तो झोली भर तो झोली तुम्हारे आसान से ज़माना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आसान से ज़माना क्या नहीं पाता।
Greenwich Global Program gives students an opportunity to study in over 5 continents, with universities like the University of Bangor, the University of Hertfordshire, the University of Leeds in the UK, with universities such as the University of Murdoch in Australia and the University of Sigmund Freud in Austria, just to name a few of our partner universities. The 2+2 program gives students the access to study at Greenwich University for the first 2 years and then move on to any of our partner universities around the world and carry on with global careers anywhere around the world. And I'm one of the alumni of Greenwich University. Currently, I'm the Group Director of HROC Group, which is a Malaysian-based HR business solutions organization, which started off from Karachi and later on expanded to Malaysia. At this point in time, this is one of the leading companies which is helping other organizations to have a proper setup in Pakistan with having all resources available. Wherever I am today, it's probably because of what I was taught back then when I was at Greenwich University, and I'm quite thankful to my faculty and my Vice Chancellor and everybody who was a part of the Greenwich University. They put in all their effort to ensure that they shape out an ordinary person into somebody who can bring in a change into the society. So I have represented myself at a lot of places, on international forums, local forums, and everywhere. I've mentioned very proudly that I am not a foreign graduate from any university of Harvard, but I'm actually a graduate of Greenwich University, and I'm quite thankful to it. So thank you, Greenwich, for shaping me out. Looking forward to having more forever. Hello, my name is Akib Sayed. I am currently the Group GM Marketing for Multinet Pakistan Limited. I am a very proud alumnus of Greenwich University. Greenwich was a great experience in overall shaping my personality in the corporate world, and I thank you everyone at Greenwich and the current students and wish them a lot of success. Thank you so much. So welcome to a session of the High Level Political Forum. We need to rethink the idea of governance by placing SDG 16 at its center. Institutional and policy innovations at local, national, regional, and international levels can accelerate the implementation of SDG 16 and promote integrated whole of society approaches. This is essential in order to tackle complex challenges such as increasing inequalities, social and economic insecurity, climate change, and rapid technological disruption. As the pandemic continues to rage, public service institutions in conflict-affected countries have been tested in their capacity to mount a coordinated response. Slow, ineffective, or unfairly distributed responses have fueled simmering discontent and distrust in the state and undermined social cohesion and economic resilience. Renewing the social contract, strengthening the rule of law, democratic institutions, and rebuilding trust between people and governments has emerged as key to making progress on the SDGs. The poor and vulnerable are more exposed to its impact and face more difficulties in adjusting to the new normal. We therefore need to ensure that our responses are well targeted and effectively reach the poor and vulnerable. For this, accountable governance is the key. Уважаемая госпожа модератор, мы хотели бы сделать короткую
ремарку по теме цели устойчивого Madam Moderator, we'd like to make a statement on SDG 3. The Russian scientists have already developed 4 vaccines for COVID on their relevant technical platforms. The first of them, Sputnik V, has now being used in 60 countries, being used by more than 1.5 billion people. We are ready for future cooperation with other partners in the future to put an end to the COVID-19 pandemic and to ensure efforts are made to achieve SDG 3. Bonjour, permettez-moi de m'exprimer en français. Monsieur le... Myself in French, if I may. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, the COVID-19 pandemic has had a spectacular impact of the world's efforts to reduce poverty. It also provides us with an opportunity to build a better future. The context of SDGs is key in terms of inclusive and sustainable development. These partnerships should include governments at all levels, civil society, the university world, multilateral organizations, and companies and civil society. We also would call for an approach based on human rights to build more peaceful, fair, and inclusive societies while ensuring that no one is left behind. Thank you, Madam Moderator. We believe that SDG 17 is of particular importance following the pandemic because it is this SDG on international partnerships. And today, in fact, we do hope that it's the SDG after the pandemic. We live in strange and unpredictable times when the threat of a pandemic and restrictive measures imposed by those in charge has made peaceful assembly even harder than before. Times when inclusive and transformative efforts to counter deep-rooted inequalities are essential. In this decade of action, Sweden remains a dedicated ally in the pursuit of peace, at home and throughout the world. The EU has recently also taken steps for the integration of fighting the inequalities in its development cooperation. Promoting and upholding the rule of law is a major priority for the EU internally and externally. The COVID-19 pandemic has set back progress on governance. In its external action, the EU will continue to support progress on democratic governance, rule of law, justice reform, and more effective taxation. Peace, progress, and sustainability are built on the foundation of justice. Nepal's constitution has internalized such ethos and institutionalized the peace process and political transformation. And I'd like to start with one that was made by Ambassador Idris on the need to think of a new social contract to prevent what he called simmering discontents. And this, I think, is a crucial issue that has come out of the pandemic. It not only has caused immediate suffering, but it has exposed inequalities and exclusion that were in existence beforehand, but not so visible. And that has great risk of grievance and of, in the end, the rise of social unrest. So this social contract, I think it will be important, of course, that it covers all the SDGs. The SDGs are the best medicine, but with particular emphasis on leaving no one behind. Trying to use the leverage and influence of the international community in order to build national fiscal capacities rather than inadvertently undermining them. I mentioned 2 ways in which I would say those capacities, alas, have been undermined in the past. One, the relentless ideological pursuit of free trade, even when that has meant reducing or eliminating tariffs on luxury goods. And secondly, via deeply entrenched resistance of members of the international community to setting a good example by paying taxes and tariffs themselves when they are in host developing countries. And lastly, even if we mobilize resources and have effective governance, the question, of course, is governance for whom? And there, I think, the principle that's come out very clearly in the COVID crisis and will come out again in the climate crisis, that we need to have equal rights to health and to a safe environment. Principles that, by the way, are deeply embedded in national constitutions around the world, need to be upheld and fought for. It's not enough just to
have them in constitutions, they have to be more than words written on paper. Corruption has diverted funds from investment in healthcare. Where corruption is systematic, governments tend to spend less on healthcare, thus increasing inequalities among societies, but also among countries. As the UN Secretary General pointed out, we're facing the same storm, but we are not in the same boat. In the midst of the campaign for a decade of accountability for the SDGs, we at the Contraloría, the Chilean Supreme Audit Institution, are committed to doing our part. At the same time, the crisis has shown us that institutions that are ensuring transparency and accountability have become more important than ever. Supreme audit institutions can carry out audits at all levels of government. They have the essential task of assessing how taxpayers' money is used and whether the measures taken are transparent, sustainable, and inclusive. COVID-19 has exacerbated our systemic vulnerabilities to crises and exposed the failure of macroeconomic governance, as 40 out of 43 countries are experiencing an unprecedented increase in debt to GDP ratio in the Asia-Pacific alone. Yet, business as usual continues, as almost 96% of the support provided by multilateral banks and international financial institutions to Asia-Pacific countries in 2020 are loans, with meager amounts in grants or debt relief. On the other hand, inequalities have been on the rise. Less than 1% of the region's 4.6 billion population is worth almost 54 times more than the combined GDPs of Asia-Pacific's least developed countries, further widened by the pandemic. So rather than pushing the poorest countries for economic self-reliance, financing for development processes should help them address corporate capture, debt distress, illicit financial flows, tax evasions, and neoliberal instruments like investor-state dispute settlement. The very lesson from COVID-19 is to strengthen public healthcare systems, enfeebled by massive privatizations. And yet, almost 76 out of 91 IMF negotiated loans in 2020 pushed for further belt tightening that could result in deep cuts to public healthcare and social protection systems. Such systemic issues have escalated health crises into economic, social, and environmental crises. As a result, decades of progress on poverty, hunger, health and education, gender, water and sanitation, inequalities, climate action, and stronger institutions is being reversed. The transformative new social contract requires urgent action to redress inequalities within and among countries, reconfigure power relations across socio-economic and political spheres, dismantle neoliberal capitalism, democratize governance, and ensure climate justice. COVID-19 has intensified the need for accelerated, united action in light of the devastating toll the pandemic is taking on global health, social and environmental security, and progress on Agenda 2030. Interlinked challenges such as COVID-19, climate change, diminished biodiversity, and continuing crises rooted in economic, judicial, and human rights inequalities inform our call for accelerated action. While some people have access to healthcare, medicines, and vaccines, too many suffer without recourse. While human rights abuses go unpunished and access to justice remains the domain of the few, societies will not know peace and inclusion. These are well-worn truths. But civil society plays a pivotal role in advocating for healthy lives and well-being, reversing widening inequality, and promoting a peaceful, inclusive world. There is broad agreement among governments that we need new global tax rules, but we still don't have an inclusive body where those rules can be negotiated. Instead, decision-making on global tax rules is being led by the G7, the G20, the OECD, which is also known as the Rich Countries Club. This is resulting in rules that do not reflect the interest of the world's poorest countries, but also in rules that do not effectively ensure that the world's wealthiest corporations and individuals pay their share of taxes and do not represent a global consensus. When it comes to international negotiations, we as UN youth representatives experience many hurdles in our advocacy and negotiation efforts. Young people are described as active agents of peace, which means that equal treatment and representation should occur. We want to change the narrative from passive stakeholders to active shareholders. This is why we are also working on the establishment of a framework for the youth in order to participate as equals in negotiations. This notion was agreed upon by all member states in SDG 16, and this so-called generational test will be our main tool to translate that notion into practice.
In conclusion, by the words of the former Secretary General Kofi Annan, we are never too young to lead, and you are never too old to learn. This youth-led campaign pleads the UN member states to request an advisory opinion from the International Court of Justice and the linkage between climate change and human rights, as well as the integration of the concept of intergenerational justice. International governance, standards and rules for trade, investments, taxation, and financial flows must underpin national efforts to achieve more equal and inclusive societies. 6 years into the implementation of the 2030 Agenda, the international community is still off track on achieving SDG 16+, and we've unfortunately seen further stagnation and even serious backsliding of progress, even before the COVID-19 crisis. Civic space is shrinking, human rights abuses are on the rise, faith and trust in institutions is waning, conflict and fragility is deepening, and inequalities are widening, leading to blossoming protest movements in many countries where people still feel left behind. We need to continue to seek cooperative approach to shared challenges, not only to be better prepared and to create resilience for future shocks and crises, but also to reinforce trust and strengthen security for all. As we continue to relentlessly encroach on nature and degrade ecosystems, we endanger human health. We need to rethink our relationship with nature and build back better. It has been recognized that business as usual is no longer an option. We need to rethink the way we generate wealth, the way we live, produce, consume, move, and eat. We must shift to a new paradigm of resource use that is socially equitable, economically resilient, and environmentally healthy. Research by UNEP International Resource Panel proves that it is possible. Muchas gracias. Saludo a todos los. Thank you very much. And greetings to all the participants in this important political forum. The indigenous peoples have indicated that the Agenda 2030 for Sustainable Development and the SDGs provide us with a historical and unique opportunity to ensure that the more than 370 million indigenous people in at least 90 countries are not left behind. And yet, we continue to be victims of serious violations of human rights. Access to justice for all persons with disability who have experienced gender-based violence during the pandemic by guarantee accessibility and reasonable accommodation in the judicial process. So this meeting is adjourned, and thank you very much again to all of you for your active participation. Dr. S.M. Munir is a dynamic personality with diverse experience in various sectors, including tanneries, textiles, and banking. He is the chairman, Dean Textile Mills Limited, and director, Dean Pharma Products Limited. He is a consummate industrialist and was awarded with the Best Export Performance Trophy by the Federation of Pakistan Chamber of Commerce and Industry and the Gold Medallion Award from the International Export Association, United Kingdom. Dr. S.M. Munir was awarded Ambassador of Hope by the Prime Minister of Pakistan, Mr. Imran Khan, on 15th January 2021. Dr. S.M. Munir was awarded the Lifetime Achievement Award by the President of Pakistan in 2012. He was also awarded Sitara-e-Isar and Sitara-e-Imtiaz in 2006 and 2007 respectively by the President of Pakistan in recognition of his outstanding public services for the cause of humanity. His contributions and achievements go beyond the economic sphere into the education sector as well. Greenwich University bestowed upon him the honoris causa degree in recognition of his tremendous services for the business sector. तमाम इतने पेरेंट्स हैं जो बच्चे आज ग्रेजुएट हो रहे हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। तमाम पेरेंट्स को यकीन दिलाता हूँ कि ग्रीनविच यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए बच्चे आपके लिए एसेट साबित होंगे। ये आगे जाके अच्छे काम करेंगे, आपका भी नाम रोशन करेंगे और अपने मुल्क का नाम भी रोशन करेंगे। एक चीज़ और भी मैं कहना चाहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि वालिदैन की इज़्ज़त करें, जो वालिदैन मशवरा दें उस पर अमल करें, कि बड़ों का तजर्बा हमारे से बहुत ज़्यादा होता है। हम समझते हैं हम बहुत समझदार हो गए, नहीं, टाइम लगता है, एवरीथिंग टेक्स टाइम। तो आप अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, उनकी बात सुने, उनकी पीस ऑफ एडवाइस को हुक्म मानें।
morning. My name is Ishan Shah. I'm a proud alumni of Greenwich University, batch of 95. I was Dean's List here as well, apparently, and yeah, it's been great. The memories are tremendous. It's great to see everybody out here as we celebrate all these years. I'm basically from the banking profession and I'm part of the media and broadcasting. And all of that combined, it's been a fabulous, fantastic experience to be part of this institution. I wish you all well and hope that we meet again. Take care and have a great day. Mr. Ali Jilani. He's a development practitioner focused on democratization of state and society in Pakistan, with over 10 years of advocacy at the national, regional, and global level. He has expertise in capacity building, advocacy, and research for governance reforms concerning access to justice, political, economical equality, human rights, social development, and environmental protection. He currently serves with the Karachi Research Chair, a policy think tank driven for evidence-based advocacy around sustainable development. Mr. Jilani, the floor is yours. Thank you, moderator, and APRSM for the opportunity. The decade of action and delivery for sustainable development can only be realized if systemic barriers like global inequalities of wealth, power, and resources, international economic trade and monetary frameworks, militarism and conflict, patriarchal authoritarianism, marginalizing governance, shrinking democratic spaces, as well as a guilt-free pass on means of implementation commitments are addressed. The unprecedented COVID-19 crisis has reinforced the need to address such vulnerabilities caused by neoliberal globalization and flawed macroeconomic governance. ODA is falling short of its commitment of 0.7% of GNI, evident of the fact that only 6 countries could meet their ODA targets in 2017, with the overall contribution amounting to $147.2 billion against the required investment of US $5 to $7 trillion to achieve the SDGs. On the flip side, wealth and resources continue to flow from developing countries through illicit financial flows, tax evasions, capital flows, asset stealth, trade mispricing, and profit shifting by multinational corporations, where the data shows that the developing economies lost over 7.8 trillion between 2004 and 2013, with the outflows increasing at 6.5% every year, twice as fast as the global GDP. The terms of discussion around official development assistance need to change from an act of benevolence to that of responsibility for global north, reckoning the historical debt owed to the developing world after centuries of colonial plunder and its continued patterns through imperial neoliberal tactics. People of the Asia-Pacific reject official development assistance use to catalyze private sector engagement, achieve trade, military, and political objectives of donor countries, and its substitution with climate financing, refugee costs, or debt cancellation as recently proposed by the Development Assistance Committee. ODA needs to be reformed, reviewed for impact, and held accountable for failure to deliver on the commitments rather than being reduced to buzzworded negotiation outcomes going 1 step forward, 2 steps back. Debt stress is another key challenge exacerbated by COVID-19, where increased debt financing along with economic downturn will lead to higher government debt to GDP ratio expected to rise to 49% in 2021 among the least developing countries, while the pandemic generally affecting a much larger group of 40 out of 43 countries in the Asia Pacific. Reiterating the Secretary General's appeal reckoning COVID-19 situation, we cannot resort to the usual tools in such unusual times, so we need strong multilateral commitments to address debt distress, having pushed poor countries into generational debt traps, leaving virtually no fiscal space for effective COVID recovery or sustainable development priorities. Trade as a critical MOI need to be democratized through structural reforms prioritizing people and the planet over profits, upholding the essence and multidimensionality of the Agenda 2030, safeguarding state policy space. Localization of SDGs shouldn't mean the absence of accountability mechanism at the global level.
to ensure the establishment of global reform entities for SDGs compatibility impact assessment of taxation architecture, trade and investment agreements, and synergizing multilateral cooperation to avoid corporatocratization of the globe. Rather than pushing the poorest countries for economic self-reliance, the processes should help them address macroeconomic pressures embodied in hegemonic trade agreements through conditions of market deregulation, massive privatizations, corporate capture of resources and governance, and neoliberal instruments like ISDS, among others. In terms of technology, the corporate control of data as the raw material for the fourth industrial revolution and concentration of technological innovation in the hands of a few technology giants must not be allowed to compromise privacy, hinder technology transfer, impede the capacity of developing countries to develop their technological capacity, marginalize human workforce, or undermine local knowledge systems. Policy emphasis on digitization and technological advancement must ensure a civil society-led thorough review of the potential adverse effects on the environment, the social, cultural, economic, civic, and political rights of the people. Our decade of action demands the dismantling of neoliberal development framework that destroys the environment, starves people of resources, and strips them of rights, and criminalizes those who stand for justice. The people of the Asia Pacific demand development justice. If the Agenda 2030 is to be endorsed as the global social contract between people and governments of the world, it's high time they walk the talk. Thank you, Chair. Thank you very much, Jelani, for those very cogent comments. I'm sure that the participants have taken note of them and will bring them up in the breakout discussions. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है अर्रहमान वो जो निहायत मेहरबान है अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान तालीम फरमाई उसी ने कुरान की पैदा किया उसी ने इंसान को अल्लमहुल बयान सिखाया उसी ने बोलना उसको अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान सूरज और चांद पाबंद हैं एक हिसाब के वन नज्मु वश-शजरु यसजुदान और झाड़ियां और दरख्त उसको सजदा कर रहे हैं वस्समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान और आसमान को बुलंद किया उसी ने और कायम कर दिया मीज़ान अदल अल्ला ततगौ फिल मीज़ान ताकि ना तजावुज़ करो हद से निज़ाम मीज़ान में वक़ीमुल वज़न बिल क़िस्त वला तुख़सिरुल मीज़ान और कायम करो सही तोल इंसाफ के साथ और मत कम करो तोलते वक्त वल अर्ज़ वज़अहा लिल अनाम और ज़मीन बिछाई उसी ने खलकत के लिए फ़ीहा फ़ाकिहतु वन नख़्लु ज़ातुल अकमाम इसमें मेवे हैं और खजूर के दरख्त हैं जिनके खोशों पर ग़िलाफ़ होते हैं वल्हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान और अनाज भूसे वाला और खुशबूदार फूल फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे ख़लक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार पैदा किया उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मट्टी से वख़लक़ल जन्न मिन मारिजिम मिन नार और पैदा किया उसने जिन्नात को शोले से आग के फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन रब दोनों मशरिकों और रब दोनों मग़रिबों का
فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे मरज البحرين يلتقيان रवा किए उसने दो दरिया जो आपस में मिलते हैं بينهما برزخ لا يبغيان दोनों में है एक आड़ नहीं करते तजावुज فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان निकलते हैं इन दोनों में से मोती और मूंगे فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام और उसी के हैं जहाज भी जो ऊंचे खड़े होते हैं समंदर में पहाड़ों की तरह فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام जो कुछ है इस जमीन पर उसको फना होना है और बाकी रहेगी जात तेरे रब की जो साहिब जलाल और एहसान करने वाला है فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان मांगता है उसी से जो कोई है आसमानों में और जमीन में हर रोज वो किसी काम में होता है तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे सनफ़ुरुगु लकुम अय्युहा थक़लान अन करीब हम फारिग होते हैं तुम्हारी तरफ ए दो बोझल जमातों जिन और इंसान فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان ए ग्रोहों जिनों और इंसानों को अगर तुम्हें कुदरत हो के निकल जाओ तुम किनारों से आसमान और ज़मीन के तो निकल जाओ नहीं निकल सकते तुम सिवाय जोर के तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران छोड़ दिए जाएंगे तुम पर शोले आग के और धुआं तो फिर ना कर सकोगे तुम उनका मुकाबला فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان फिर जब फट जाएगा आसमान तो हो जाएगा वो गुलाबी तेल की तलछीट की तरह فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان तो उस रोज ना पूछा जाएगा उसके गुनाहों के बारे में किसी इंसान से और ना किसी जिन से فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे
युअरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम फयुअख़ज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम। पहचाने जाएंगे मुजरिम अपने चेहरों से, फिर पकड़े जाएंगे पेशानी के बालों और पाँवों से। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? हाज़िही जहन्नमुल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून। यही है वो जहन्नुम झुटलाया करते थे जिसे मुजरिम लोग। यतूफून बैनहा व बैन हमीमिन आन। घूमते फिरेंगे वो दरमियान में उस दोज़ख के और खौलते हुए गर्म पानी के। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? वलिमन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतानि फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और जो डरा खड़े होने से अपने रब के सामने, उसके लिए दो जन्नतें हैं। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? ज़वाता अफ़नान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बहुत सी शाखों वाले दरख्त, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? फ़ीहिमा ऐनानि तजरियान। इनमें दो चश्मे बह रहे होंगे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? फ़ीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजानि फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इनमें हर तरह के फल दो किस्म के होंगे। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? मुत्तकिईन अला फुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक़ वजनल जन्नतैन दान। तकिया लगाए हुए होंगे ऐसे बिछोनों पर जिनके अस्तर रेशम के हैं और फल दोनों बागों के नजदीक झुक रहे होंगे। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? फ़ीहिन्न क़ासिरातुत तर्फ़ लम यतमिसहुन्न इंसुन क़ब्लहुम वला जान। होंगी उनमें शर्मीली निगाहों वालियां, ना छुआ होगा जिनको किसी इंसान ने उनसे पहले और ना किसी जिन ने। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? कअन्नहुन्नल याक़ूत वल मरजान। गोया वो हैं याकूत और मरजान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान। नहीं है जज़ा उम्दा नेकी की मगर ये बदला है आला दर्जे का। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? वमिन दूनिहिमा जन्नतानि फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और इन दोनों के अलावा दो जन्नतें और हैं। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? मुदहाम्मतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। दोनों गहरी सब्ज रंग की शादाब, तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? फ़ीहिमा ऐनानि नज़्ज़ाख़तान। उन दोनों में हैं दो चश्मे उबलते हुए। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? फ़ीहिमा फ़ाकिहतुन व नख़्लुन व रुम्मान। इन दोनों में हैं
फल और खजूरें और अनार। فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? فيهن خيرات حسان इनमें होंगी नेक सीरत खूबसूरत औरतें। فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? حور مقصورات في الخيام वो हूरें जो महफूज हैं खैमों में। فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان ना छुआ होगा जिनको किसी इंसान ने उनसे पहले और ना किसी जिन ने। فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان तकिए लगाए बैठे होंगे मसनदों पर सब्ज रंग के और खूबसूरत नफीस। فبأي آلاء ربكما تكذبان तो कौन सी नेमत को अपने रब की तुम झुटलाओगे? تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام बाबरकत है नाम तेरे रब का जो साहिब अजमत है और एहसान करने वाला है। We would like to introduce you with a student of Greenwich University, Ibad Mahmood. He has completed his BBA Marketing and currently completing his MBA in Supply Chain Management. Nigat Welfare Trust was started on 1st February 2014 on his beloved mother's name as she is no more in this world. Nigat Welfare Trust is a non-profit organization. Nigat Welfare Trust wants to work for the betterment of society by providing individuals with basic necessities of life and free medical facilities. Along with studies, Ibad is passionate about serving humanity and is the Managing Director of Nigat Welfare Trust. Choose a job you love and you will never have to work a day in your life. Our society aims to help you firstly identify your goal and then explore all the paths which will lead you to follow your dream career and enable you to manage and upgrade your skills through various seminars and interactive corporate sessions. Join us now on a fulfilling journey.
certified Deloitte faculty member and business advisor, Mr. Sufyan Yousfi is a partner and head at one of the world's topmost consulting firms, Deloitte, where he serves as a lead business partner for NASA, an international development organization. Mr. Yousfi graduated from Greenwich University and went on to prove his mettle at Carnegie Mellon University, where he also served as a lead recruiting partner and a board member. Mr. Yousfi has been a part of Deloitte's commercial practice in New York City, serving multiple Wall Street financial service clients, large banks, private equity firms, and hedge funds. At present, he oversees multi-dimensional teams tasked with operational resilience, internal controls, cost optimization, trust and transparency programs. His client services include advanced machine learning, artificial intelligence, data analytic capabilities, and managing large-scale operational transformation programs. He has also published in Respond, Recover, Thrive, amongst other digital media platforms. John is one of the most engaging young men that I've had the pleasure of teaching here at Carnegie Mellon. I met him 6 years ago, and we've become friends, and that has broadened my perspective more than it has his. I'm glad, and looking at Sufyan, it makes me even more confident to say that the Greenwich University prepared him to get this far, and then he certainly worked hard to realize his own dream. अगर आप चाहते हैं कि कुछ काम करें, दुनिया में अपना नाम बनाएं, तो अपना जो बेंचमार्क है ना कि आपको क्या बनना है या क्या करना है, वो काफ़ी ऊपर रखें. He is a loving husband and a true friend. He is always there to help anyone and everyone who's around him. He genuinely cares for people and loves to propel them forward. His positivity is infectious. He loves to spread it around, and he is the life of every party. सुफियान के बारे में बताना चाहती हूँ. वो शुरू से बहुत आउटस्टैंडिंग बच्चा रहा है, पढ़ने में भी अच्छा था, बहुत सोशल था, बहुत सारे इसके दोस्त अहबाब, और हम हमेशा ही समझते थे कि बहुत अच्छा नहीं करेगा, क्योंकि ये सारा सोशल बहुत था, इसकी दोस्ती बहुत थी. In recognition of his achievements, Greenwich University presents him the Alumni Excellence Award 2022. Founded in January 2015 as an email marketing firm, eMarketers have quickly expanded itself to become a digital marketing firm offering a one-window solution to its customers. Usman PEG creative thinking and leadership that eMarketers currently offers the market with 6 services which consist of email marketing, branded SMS marketing, social media marketing, search engine optimization, web development services, and photography services to its client. Specializing in business-to-business marketing, we currently possess diverse portfolio of firms which consist of companies such as HP Paper Pakistan, where we are their official vendor for digital marketing Pakistan, NAFA Funds by National Bank of Pakistan, and also serving as official digital marketing partner of IEEP along with Badr Expo. Japan is an island country in East Asia, located in the Pacific Ocean. It lies to the east of the Sea of Japan, the East China Sea, China, North Korea, South Korea, and Russia, stretching from the Sea of Okhotsk in the north to the East China Sea and Taiwan in the south. The kanji that make up Japan's name means sun origin, and Japan is often called the land of the rising sun. Japan is a member of the UN, the G7, the G8, and the G20. The country has the world's third largest economy by nominal GDP and the world's fourth largest economy by purchasing power parity.
It is also the world's 5th largest exporter and 5th largest importer. Japan ranked first in the country brand index. Japan is a developed country with a high standard of living, and the country is ranked high in the Human Development Index. The Japanese population enjoys the highest life expectancy of any country in the world and the 3rd lowest infant mortality rate. Japan is the highest ranked Asian country in the Global Peace Index. Pakistan and Japan have a history of glorious relationships spanning more than 6 decades. Both share age-old ties of common cultures, traditions, outlook, and consciousness. Pakistan's relationship with Japan is based on mutual trust and respect. Both countries have worked for regional peace and stability. Greenwich University's socio-cultural and educational tour is also a step forward by a top-ranking private university in Pakistan to develop people-to-people relations between the two countries. I'm very thankful for Greenwich University. They took us to Japan, where we visited many different places. Over there, we went to Tokyo Tower, we went to Hosei University, Disney World, we went to Nissan production plant, and many different places. The experience was very different. It is much cleaner, much safer over there, and the people are very nice, but they are quiet, but they are very workaholic. People in Japan were very nice, very helpful. There might have been a language barrier, but they never hesitated to help us out every time we got lost. I think the city itself was very clean. They were very punctual about timings. 5 o'clock in the morning used to be the rush hour at train stations, and I think that's amazing. I don't think I've ever seen or met people like that who were so work focused, who are so focused generally in life, and I think that's pretty amazing. I don't think Japan would have been a place where I would have visited otherwise. So thank you, Greenwich University, for giving me this opportunity. Japanese people are workaholic. They wake up at 5 o'clock in the morning. They're very determined. Like a couple of people that I met, they're doing part-time jobs. Like, Japanese people are so determined that they have 3 jobs at a single time. So one job from 9 to 2, and then so on and so forth. And they're very workaholic people. They're always working. They're always up to something. The norms of Japanese people are very clear, that they're very honest with whatever they do. They're very determined, as I said before, and they're very useful. Like they're very helpful. Whatever problem that first of all, there's a language barrier that we faced in Japan. But other than the language barrier, through determining their actions, they're very helpful. Like wherever we got lost and whatever we wanted to find out, they were very helpful in communicating that with us. Hosei University was a wonderful experience. It was a big university, and it was very good. Like we did a presentation there, and it was very resourceful as well. I'm very thankful to Greenwich University to take me as part of the delegation, and I would love to go to Japan another time. Mount Fuji was surreal. To be honest, it was something I saw it first time in my life, and it was so scenic, it was so beautiful. I remember when I was going up towards to look around the Mount Fuji, I could literally see the clouds touching my foot and all that, and I could literally feel the pressure of air. It was getting really hard for me to breathe, but it was amazing. It was breathtaking, dude. To be honest, when I was going to Japan,
I was really excited about their technology and to see what they have got, how technological advanced they are. I couldn't agree more that that country is completely technically so advanced. When I went there to the factory of Nissan, I saw literally machines doing work over there. Like literally they were just walking beside us, and it was something really new for me. And looking at them made me realize that how technically advanced they are. They don't need they don't need labor. They've got machines to do the labor work. That's differently done in Pakistan, because over here there's more of a human labor than the technical labor. But over there I saw machines doing work, so it was something amazing. Jose University was a great experience, and I thank Ms. Seema Mughal, who is the Vice Chancellor of Greenwich University, to give me the opportunity, because over there I went on the stage to give out the speech about Greenwich University. It was something really, really good experience, because over there was like Japanese people. They were living like different culture and from different ethnic backgrounds. And over there, when I was giving speech about my university and how amazing it is, I think I felt really, really great. और दोज़ख में कैसे जाएगी ये उम्मत रसूल की। भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली, तुम्हारे आस्थान से ज़माना क्या नहीं भागा, तुम्हारे आस्थान से ज़माना क्या नहीं।
I am heading cost control at Bank Alfala Limited. I am a proud alumni of Greenwich University and very thankful and appreciated for laying foundations for my success. Ever since my childhood, I have been afraid to step on the podium and to speak in front of public. Yet I realized that this can only be solved when you put yourself in situations where you challenge yourself and you can then push your limits and your boundaries. So this is the very same purpose of the Debate and Oration Society, that you refine your oration skills, your presentation, your argumentation, and work with your peers in a collaborative and supportive way so that we can all grow together. So I look forward to welcoming you all as a part of Debate and Oration Society and working with you all in the future. Thank you. Hello, my name is Kareem Teli and I am Director Igloo, working under the patronage of Pakistan Dairy Products. The journey at Greenwich was absolutely amazing for me because I learned a lot. It gave me and taught me a lot of lessons, gave me a lot of hardships, heartaches, joys, celebrations and special moments, due to which I am here at my destination today. Well, over the last couple of years, our company has grown into a more versatile business, and as I am managing the food division of the group, we have introduced different brands, different product lines besides ice cream as well. Besides the frozen division, which is called Igloo, we now have a different division called by the name of Homemade. We introduced different kind of frozen parathas, puris, chapatis, which is instant ready to cook within 2 minutes. This is a good achievement for us because we weren't doing that at all. We were just focusing on ice cream initially, and then we just transformed ourselves into a frozen food company as well. Besides that, in the last couple of years we introduced our own chocolate brand by the name of the Chocolate Factory. I believe we're going to be introducing that product line into the market as well for the normal consumers. So we currently supplying to all the industries and businesses which produce different kind of desserts, cakes, pastries, and we produce chocolate chips and cooking and baking slabs. Well, there has been multiple things. It's not just one thing that makes a person who you are today. I believe there are many factors involved, including my education. I did my bachelor's from Greenwich University, and then I went for my master's abroad to Boston University. Did a different kind of degree there, innovation in technology, computer information systems, which made me learn a lot throughout my educational time. And then when I came back to Pakistan, I implemented those strategies here in my business where I worked, and that created a huge moment for me. Obviously, to be here, I mean, education is not the only thing. You have to give time to your family, to your loved ones, spend quality time with them, maybe to relax your mind, watch good quality content, videos, movies. So I mean, your life should be balanced.
if your life isn't balanced and you're just doing one thing and you're focusing only on that particular thing, there is going to be a time that you're going to divert yourself or you're going to get tired of that particular thing. So I mean, one should have the passion to do the job which he or she likes, and once they have that passion, they can do anything in this world. I mean, there are people who are going to say that you can't do this or you can't do that. But I mean, if you have the passion and the courage to do something, then you just have to be positive and just work after it, and you're going to reach your destination soon. Well, the need of the time is follow your passion, follow your heart. I mean, you cannot do something which somebody else tells you to do. I've met a lot of students, I've had a lot of interviews with different people, and they usually say that I'm doing this particular degree or particular program just because my parents told me to do so, or my elder brother or sister told me to do so. This isn't going to help you a lot in your future, because if you are doing a marketing degree and your interest is media science, I mean, you're going to get the degree obviously, but it's not going to help you in the future because you're not going to pursue your career in that particular field. Or maybe even if you do, then you might not be good at it, or you're always going to be addicted or diverted to the things which you like. So I mean, follow where your heart leads you to and focus on that. Work positively on that things, and I believe with over a period of time you're going to feel a change in yourself, and once that change arrives, your life is going to change forever. Well, for me, Greenwich is a one big happy family, and all those people who are a part of Greenwich should also feel the same. There are a lot of things to do at Greenwich. I spent most of my time at Greenwich when I was having my classes, and I used to have the gap between the classes as well. So I usually used to stay back at the university and used to play sports, maybe play badminton, cricket with friends, sit and enjoy in the cafeteria with friends. This is also needed in life, because I mean, if you just study, then your mind is just going to get blocked at one point of time, and then you cannot take in more information and data. So to do these things, I mean, you need to relax your mind, you need to calm down, you need to be happy, because if you are happy, then you can do anything. So be happy, make others happy, and make your family proud by doing whatever you desire. Hello, my name is Kareem Teli, and I am Director Igloo, working under the patronage of Pakistan Dairy Products. Placement on job, internship during and after the studies. Overall personality grooming courses. Scholarships and financial assistance. Credits earned at Greenwich University are transferable to all the recognized universities around the globe. Affordable tuition fee and student loan facility to pay the fee in installments. Boost your career by earning internationally recognized certificates, diplomas, degrees. Corporate social responsibility and co-curricular activities. Internationally qualified faculty with rich industry experience. Multidisciplinary trainings by national and international conferences, workshops and symposiums. It will provide you with regular career counseling and guidance sessions to help you in your practical life. To develop entrepreneurial skills via entrepreneurial incubator.
national and international social, cultural and educational tour for students' exposure and skill development. You will develop versatile skill sets that will apply across diversified sectors. Working independently and decision making. State-of-the-art campus with all the essential facilities in the posh area of Karachi. With media lab, computer lab and high-end classrooms, we have it all at Greenwich University. Assalamu alaikum everyone, I'm Omar Khan and I'm the mentor of the Sports Society here at Greenwich University. We have all the sporting facilities on campus that includes cricket, football, basketball, badminton, table tennis, snooker, FIFA and also an in-house gym for the fitness freaks. So participate, be active, be healthy. See you soon and welcome to Greenwich University. Assalamu alaikum everybody, my name is Awais Agha and I'm the mentor for the Entrepreneurship Society at Greenwich University. I would like to welcome you all to the university, and in this society we will have a series of events starting with discussion sessions in which we will ask all of you to come in and pitch your business ideas, and we are going to discuss their viabilities. Apart from that, we are going to have a series of guest speaking sessions in which we will invite budding entrepreneurs to share their experiences with you. And finally, our main event is going to be a competition where we will invite you all to come up with business ideas and pitch them in front of a series of investors. The winner will either receive a prize or get a chance to incubate their business. I'm looking forward to you all to this society. तुझे हर नज़र पे उबूर दूँ, तुझे ज़िंदगी का शऊर दूँ. This is the purpose of art, and so is the purpose of GU Literary Society. What is art? Art is all about unsung songs of human emotions and stories. We all have stories, complicated stories, connected stories. The purpose of this society is to bring into light all those stories and unsung songs of literary giants and people we are not even aware of. I want to welcome all of you to Greenwich University and looking forward for your participation into the society. And I wish you a very memorable stay here. Hello everyone, my name is Ali Jalani and I'm the mentor for Greenwich University's Diplomatic Society. The vision for Diplomatic Society is to provide the students with the opportunities to engage in simulated scenarios of international entities to foster their analytical vis-a-vis oratory skills. The Society will also be responsible for the conduct of Greenwich University's Model United Nations. You're more than welcome to be part of the Society's events, and would also like to have some of you who are passionate about developing a worldview to be part of the Diplomatic Society moving forward. And by the way, welcome to Greenwich Fraternity, all of you. Looking forward to have you around. Thank you. हुसूल जाह की खातिर नकज़ बिज़र के लिए ये मकतबा है मिल्लत के हर बशर के लिए. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज CSR एक ऐसी सोसाइटी कि जिसमें आप अपनी ज़ात से निकलकर दूसरों के लिए कुछ करने का जज्बा हौसला रखते हैं. तो आइए और ज्वाइन करें CSR सोसाइटी, और जिन लोगों ने CSR को ज्वाइन किया है मैं उन तमाम मेंबरान को इस सोसाइटी में खुशामदीद कहता हूं. Choose a job you love and you will never have to work a day in your life. Our society aims to help you firstly identify your goal and then explore all the paths which will lead you to follow your dream career and enable you to manage and upgrade your skills through various seminars and interactive corporate sessions. Join us now on a fulfilling journey. In a world which is always moving, photography lets it stand still. It's something much more than just a collection of pretty pictures. It's the stories that are behind those pictures. Hi, my name is Faraz Iqbal. I'm your mentor for the Photography Society at Greenwich University. So for the next 3-4 months, I have planned a lot of events that will be happening under this society. For example, we have photo walk, photo contest, photography exhibition, photography trip. That will really help you guys understand
what goes behind taking the pictures. We also have planned a couple of photography workshops, and in those workshops you'll understand how pictures are taken, what a lens does, what the body does, what is good lighting, what is bad lighting, what is good composition, and you'll really get a chance to explore yourself. So I really look forward to seeing you guys in the society, and yeah, let's have fun. Thank you. Ever since my childhood, I have been afraid to step on the podium and to speak in front of public. Yet I realized that this can only be solved when you put yourself in situations where you challenge yourself and you can then push your limits and your boundaries. So this is the very same purpose of the Debate and Oration Society, that you refine your oration skills, your presentation, your argumentation, and work with your peers in a collaborative and supportive way so that we can all grow together. So I look forward to welcoming you all as a part of Debate and Oration Society and working with you all in the future. Thank you. Hi, I'm Anam Durrani, Mentor, Performing Arts Society. The purpose of this society is to provide platform to all artists. So whether you act, dance or sing, the society will provide platform to you. So please join us. अशर सोसाइटी ग्रीनविच यूनिवर्सिटी की अहम तरीन सोसाइटी है। इसमें आपको सीखने के बहुत मौके मिलते हैं। मैं मेंटोर हूं ग्रीनविच अशर सोसाइटी का, और मैं आपको वेलकम कहता हूं जिन बच्चों ने हमें ज्वाइन किया है और जो फ्यूचर में हमें ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये वो सोसाइटी है जो कि हर इवेंट्स को कवर करती है। तो इसमें सीखने के मौके और सोसाइटी से कहीं ज़्यादा हैं। तो आइए और ज्वाइन करें ग्रीनविच अशर सोसाइटी। In a world which is always moving, photography lets us stand still. It's something much more than just a collection of pretty pictures. It's the stories that are behind those pictures. Hi, my name is Faraz Iqbal. I'm your mentor for the Photography Society at Greenwich University. So for the next 3-4 months, I have planned a lot of events that will be happening under this society. For example, we have photo walk, photo contest, photography exhibition, photography trip. That will really help you guys understand what goes behind taking the pictures. We also have planned a couple of photography workshops, and in those workshops you'll understand how pictures are taken, what a lens does, what the body does, what is good lighting, what is bad lighting, what is good composition, and you'll really get a chance to explore yourself. So I really look forward to seeing you guys in the society, and yeah, let's have fun. Thank you.
रसूल का जन्नत रसूल की और दोज़ख में कैसे जाएगी ये उम्मत रसूल की। भर दो झोली भर दो झोली भर दो झोली तुम्हारे आसान से ज़माना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आसान से ज़माना क्या नहीं। अशर सोसाइटी ग्रीनविच यूनिवर्सिटी की अहम तरीन सोसाइटी है। इसमें आपको सीखने के बहुत मौके मिलते हैं। मैं मेंटोर हूं ग्रीनविच अशर सोसाइटी का और मैं आपको वेलकम कहता हूं जिन बच्चों ने हमें ज्वाइन किया है और जो फ्यूचर में हमें ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये वो सोसाइटी है जो कि हर इवेंट्स को कवर करती है। तो इसमें सीखने के मौके और सोसाइटी से कहीं ज़्यादा हैं। तो आइए और ज्वाइन करें ग्रीनविच अशर सोसाइटी। A great university. When I came back from America, it was my first stint to come back to a local university and join it, and Greenwich was my obvious choice. It's made me what I am today, basically. The friends that I made, the things that I learned as far as my marketing and communication skills are concerned, and the fact that I'm proud to be part of the Greenwich alumni, and the fact that I'm back here supporting more students. I think that's more than what anybody else can say. Enjoy yourself, live it, learn it, and love it. You know, the education part, especially when we are going to college, is so important, because this is something that doesn't come back. As you grow older, as responsibilities increase, you don't have time for a lot of things, baby friends, relationships, meeting, just meeting people generally. And the time that you impart and the time that you have with each other is just so important. You only realize that once you're out of a college or a university. The fact that it's a success story, the fact that all of Greenwich students are somebody. You can never turn around and say that, oh, I graduated from Greenwich and I didn't get a job, or I graduated from Greenwich and I didn't get somewhere in life. You know, we just met somebody who's at LinkedIn. I've met somebody who, I've met so many people all over the world from Greenwich, whether it's Indus Motors, whether it's Igloo, whether it's myself, whether it's Toyota, whether it's like, you can go on and on and on. There are managers, GM Marriott in Dubai is Greenwich. There's so many people, they're all over the place. And surprising for a university, when we joined, it's a new university at that time. It wasn't something like IBA or LUMSO. It was a new university when we walked in. And we were not expecting this quality of education, and also not expecting this quality of our future and what's defined for us. I flunked math 9 times. Sultana Siddiqui, a woman of substance, a woman of courage, a woman of international fame.
Sultana Siddiqui came from Hyderabad, Sindh, a historical city that has produced legends in many fields. She studied at a government high school, then at Government College for Women. She did her BA Honours and Masters in Comparative Religion from Sindh University. Oh, she's a role model. बच्चों की तालीम में she's a role model. और फिर उन्होंने economically अपने को खुद दो पैरों पर खड़ा किया. तो तीनों she's a role model. Very hard working, intelligent हैं और बहुत ज़्यादा उनकी नज़र जो है वो मुस्तक़बिल पे काफ़ी होती है. She is a very good planner. बहुत कम लोग हैं पाकिस्तान में जिन्होंने सिर्फ अपनी सलाहियत की बिना पर यह मुकाम हासिल किया है और सबसे अच्छी खूबी ये है कि उसने एज ए सिंगल पेरेंट अपने बच्चों को इतना आले तालीम और तरबियत दी है कि वो आज ज़िंदगी में बड़े कामयाब हैं. इसके लिए मैं समझता हूँ कि वो हम सब की बड़ी ख्वाहिश है कि इस तरह के रोल मॉडल हमारी सोसाइटी में बहुत होने चाहिए सुल्ताना जैसे. Sultana Siddiqui joined PTV in 1974 and took the most difficult task, production of programs for children. She then expanded her horizons with producing music shows and from there moving on to dramas. In 2005, Sultana Siddiqui launched her first TV channel, Hum TV, with a very enthusiastic team of family, friends and fellow workers. Hum TV quickly turned into the talk of the town and then the world. I think Sultana Siddiqui leaves a legacy of great professionalism. She's probably a woman leader, who has given empowerment to a lot of women, and in Pakistan, not just in Pakistan, but the entire subcontinent Asian region, she's probably the only president of a broadcasting network who has taken this network to a level where no other institution has been taken by a woman. मोहब्बतों से गुंदी एक शख्सियत है जो सिर्फ मोहब्बतें फैलाना जानती हैं और बहुत ही प्यार मोहब्बत से काम भी सिखाती जाती हैं. इंसान को पता ही नहीं चलता और इंसान उनके पास सिर्फ बैठा होता है और उनसे सिर्फ बात करता है. तो उस थोड़े से टाइम में भी रोज़ जितनी देर मैं उनके साथ बैठती हूँ मुझे लगता है मैं कुछ नया सीख के उस कॉन्वर्सेशन में से निकली हूँ. एंड आई एब्सोल्युटली लव हर. आई थिंक शी इज़ वन रिलेशनशिप दैट आई एम प्राउड ऑफ. I think she's an amazing mother, and the motherly love and motherly affection and motherly advice she would give to us, she gives to everyone, and she makes everyone treat as special. And I cannot think of any mother or any professional better than, of course, my mother. मम्मी ने जो हमारी फैमिली को एक स्ट्रेंथ दी हुई है ना, I think it's unbelievable. It's basically a learning experience for everybody. और मैं कहती हूँ कि 3 बहुएं डिफरेंट बैकग्राउंड से, 3 बेटे बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड, फिर इतने सारे बच्चे, उसके साथ साथ वो दुनिया का वो हर काम कहती हैं हमसे कि करो, और कहती हैं जो चीज़ तुम लोगों को करनी है उसमें और बेहतर करो, बैठो नहीं, क्रिएटिव बनो. हम सब क्रिएटिव हैं और कभी हमें ये फील नहीं हुआ कि घुटन है या आप आगे नहीं बढ़ सकते. तो उनकी लाइफ अगर आप देखें तो वो पूरी दुनिया के लिए इंस्पिरेशनल सिर्फ नहीं है, वो हमारे लिए इंस्पिरेशनल भी है और थोड़ी सी हमारे ऊपर एक बर्डन भी है कि वी नीड टू डू बेटर, वी कैन नॉट लेट हर डाउन एंड वी नीड टू प्रूव हर कि वी कैन डू बेटर एंड help her achieve the goals further. Now Hum TV has 2 more siblings, Hum Masala TV and Hum Sitare. Sultana Siddiqui has been behind the introductions of many renowned names in the industry. Abda Parveen, Tina Sani, Ali Haider, Nazia Hassan, Shazia Khushk are some of which come to mind. I think that Sultana is a remarkable woman. She's one of those people who doesn't need degrees to demonstrate her skills. She has the most potent communication skills in the field of television broadcasting. She has converted her skills into a legendary, I think, demonstration of what is possible within the context of clean, wholesome and artistically well-honed entertainment in Pakistan. In
her long media career, she has won many national and international awards, including the prestigious Pride of Performance Award from the Government of Pakistan. Sultana Siddiqui is truly a pride of Pakistan. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुल्ताना सिद्दीकी से सुल्ताना आपा तक का सफ़र कैसा रहा? सफ़र बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जब सक्सेस हो जाती है, जो आपका विजन होता है, जिस जगह आप जाना चाहते हैं, अगर वो आपका हो जाए तो फिर सारे जो हैं मंजिलें आसान हो जाती हैं। इस मकाम पर पहुंचने में कोई तो रोल मॉडल होगा आपकी ज़िंदगी का। मैं रोल मॉडल अपने बड़े भाई मज़हर सिद्दीकी को समझती हूँ, जिसने ज़िंदगी भर इतना इनकरेज किया, इतनी हिम्मत दिलाई कि बहुत सी चीज़ें जो मुश्किल भी हुई मुझे मुश्किल न लगी, तो वो मेरा रोल मॉडल है। मैडम, बहैसियत खातून इस शोबे में आपको किन किन मुश्किलात का सामना रहा? जब ख़वातीन बाहिम्मत होकर निकलती हैं तो मर्दों से बेहतर और ज़्यादा मजबूत होती हैं। कुछ फ़ैसले होते हैं जिनको करने में आपको ज़ाहिरी बात है कि वो कुछ प्रॉब्लम्स तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मुश्किल समझ में आती है, जो मेरे लिए तो आसान हो गई कि 3 लड़कों को सिंगल हैंडेड पालना और तीनों को इस सोच से पालना कि कोई एक दूसरे से कम भी ना हो, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ या उनकी सक्सेस। तो जब मैं उसमें कामयाब रही तो मैंने अल्लाह का शुक्र किया कि इससे बेहतर काम शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं किया। हमारे ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स के लिए आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं तो ये कहूँगी कि आपके जो मास कम्युनिकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको कभी कोई ऐसी ज़रूरत पड़े तो हमारे दरवाज़े भी उनके लिए खुले हैं और हम उनको अपने पास कुछ ना कुछ जो कुछ आता है उनको सिखा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। Hi, I'm Anam Durrani, mentor Performing Arts Society. The purpose of this society is to provide platform to all artists. So whether you act, dance or sing, the society will provide platform to you. So please join us. The Grid is an ideology put forth by Alicia Kanani. The Grid is a community center in its purest form that provides the general community a creative space to organize events. They facilitate 3 broad categories of artists, musicians, and writers. For musicians, they offer them a free stage to perform, sell tickets, and make money. For artists, they offer space for exhibition without charging any commission. For writers, they have a library and a typewriter. The vision aims to streamline a generation of creative minds who will become a change agent in the society. They vociferously campaign against the notion that art and music is an impractical profession in Pakistan by facilitating talent to earn money. They offer courses and services ranging from classical vocals to philosophy classes.
The model of this community center relies on the crowdfunding with an assumption that the community will reciprocate if a venue is provided to them, which becomes a meeting point to discuss general problems in the society and possibly come up with solutions. Assalamu alaikum, this is Faisal Yusuf. I was from the first batch of Greenwich when we had the Southeastern University program. I've been associated with Greenwich for the last 25 years, and I'm the proud alumni for Greenwich, and I want to be very active and proactive in this whole program that Greenwich has just started. Thank you very much. Ever since my childhood, I have been afraid to step on the podium and to speak in front of public. Yet I realized that this can only be solved when you put yourself in situations where you challenge yourself and you can then push your limits and your boundaries. So this is the very same purpose of the Debate and Oration Society, that you refine your oration skills, your presentation, your argumentation, and work with your peers in a collaborative and supportive way so that we can all grow together. So I look forward to welcoming you all as a part of Debate and Oration Society and working with you all in the future. Thank you.
मिस शर्मीन लारी क्या करती थी कि अगर आप क्लास में लेट आए तो आपको गाना गाना है। भाई आवाज अच्छी नहीं है, गाना कैसे गाए बंदा? और फिर नजर आ रहा है कि सामने आपके पास 30 बच्चे हंसेंगे आपके ऊपर, कैफेटेरिया में मजाक बनाएगा। अच्छा, थोड़ा सा पर्सनल सवाल है, यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ रहे होते हो तो हमने भी देखा हमारे मुख्तलिफ अलमनाइज आए, उनकी हमने लव स्टोरीज सुनी, ठीक है, तो सक्सेसफुली माशाल्लाह से अचीव भी हुई, किसी की नहीं हुई तो उन्होंने कहा जी छोड़ दें बस इस बात को, ना आप डिस्कस करें। आपके साथ क्या कुछ हुआ, कुछ आप शेयर करेंगे? मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। अच्छा। कोई मेरे पास नहीं आई, किसी ने मुझे प्रपोज नहीं किया, किसी ने मुझे नहीं बोला कि आप अच्छे, और ना ही ये चीज मैंने की। लेकिन आप किसी को पसंद करते थे? मैं सबको पसंद करता था। मेरी पर्सनालिटी हमेशा से ऐसी रही है कि आई वांट टू इंटरैक्ट विद एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोहिल इंतखाब और आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं कॉफी विद अलमनाई। हर एपिसोड में आपकी मुलाकात डिफरेंट अलमनाई से करवाते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ग्रीनविच यूनिवर्सिटी में क्या कुछ किया, उनकी मेमोरीज को रिकॉल करते हैं, उस पर बात करते हैं। और आज जिस अलमनाई में हमें ज्वाइन किया है, आपको सुन के भी मज़ा आएगा और हम भी उनकी बातें सुन के बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। हम वेलकम करेंगे आगा अहमद हुसैन साहब को और पूछेंगे, जानेंगे कि वो प्रोफेशनली अब क्या कर रहे हैं। आगा अहमद, आपको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पर दावत दी, हमें इज्जत दी, ग्रीनिच ने हमें इज्जत दी, एंड इट्स अ ब्लेसिंग टू बी हियर। थैंक यू सो मच सर। सर, सबसे पहले तो बताएं कि आप प्रोफेशनली कर क्या रहे हैं? आगा अहमद हुसैन अब क्या कर रहे हैं? ग्रीनिच की बातें तो हम पूरे प्रोग्राम में ही करेंगे, अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी अपने फैमिली बिजनेस से वाबस्ता हूँ। हम कराची में सदियों से लैंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। लैंड डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हम हाउसिंग स्कीम्स बनाते हैं। हाउसिंग स्कीम्स बनाकर उनकी प्लॉटिंग करके हम आगे उसको सेल आउट करते हैं। उसकी डेवलपमेंट होती है, उसकी मेंटेनेंस होती है, उसकी केयर टेकिंग होती है, उससे वाबस्ता दीगर चीज़ें हैं जिसका हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो आई एम एट द मोमेंट विद माई फैमिली in this family business, and alhamdulillah it is a great feeling to be working side by side with your father. क्या बात है। That feeling is something that I cherish every day. क्या बात है। Professionally मेरा ये काम अब चल रहा है। ठीक है, वेल सेड सर। सर, ग्रीनविच यूनिवर्सिटी का आपका टेन्योर कौन सा था, कब ज्वाइन किया, कौन से प्रोग्राम में आप एनरोल्ड हुए? ग्रीनविच यूनिवर्सिटी से मेरा रिश्ता कायम हुआ 2007 में। मैं ए लेवल्स करके निकला और सीधा ग्रीनविच यूनिवर्सिटी आया। ग्रीनविच यूनिवर्सिटी आने की वजह बड़ी मेरे लिए सिंपल थी। हमारे कुछ जानने वाले यहाँ पर मौजूद थे जिनके थ्रू मैंने रिसर्च की, तो पता चला कि यहाँ के प्रोफेसर्स अच्छे हैं, यहाँ की यूनिवर्सिटी का एटमॉस्फेयर अच्छा है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा दी जाती है। इट वाज एक्चुअली अ नो ब्रेनर फॉर मी टू एनरोल माई सेल्फ इन ग्रीनविच। 2007 में मैंने बैचलर्स ऑफ साइंस एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में अपना एडमिशन लिया, एंड 2010 में मैं यहाँ से ग्रेजुएट हुआ। पढ़ाई भी की, एंजॉय भी किया, बहुत सीखा, बहुत सीखा। एक ख़ास बात मैं आपको बताऊं, यू लर्न द मोस्ट व्हेन यू पुट योर थियोरी इनटू प्रैक्टिस। दिस वाज गिवन टू अस बाय ग्रीनविच यूनिवर्सिटी एट अ वेरी अर्ली एज। ऑफ कोर्स आपके कुछ फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं जिनको आप 001 कहते हैं या 101 कहते हैं। ये फाउंडेशन कोर्सेज हैं जिस पे आप अपनी थियोरी को समझते हैं कि आप करने क्या जा रहे हैं। बट एज सून एज यू एंटर द सेकेंड लेवल ऑफ योर कोर्सेज, you start putting all of that in practice and it is the best feeling ever. आपको पता होता है कि अभी अगर आप जो पढ़ कर आए हो आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो, आप गिरोगे, you are bound to fail. It's good to fail. And you know that you have a teacher right next to you saying, okay, now you know there is one way that how you're not supposed to do it. So now you'll do it the right way. So they've prepared you for the real life. And once you enter into the industries, आपको सारी अपनी फ्लैशबैक्स आती हैं कि क्या क्या गलतियां आपने की थी और अब आपने क्या क्या नहीं करना, और आप सही डायरेक्शन पे जा रहे होते हो। 2010 में मैंने बैचलर्स कंप्लीट किया
और मैं प्रोफेशनल इंडस्ट्री में आ गया. I started working. I was associated with the media industry for a short time, and then predominantly I was associated for a decade with the aviation industry of Pakistan. I served as the head of sales for Oman Air for 6 years. Then I served as the head of sales for Turkish Airlines for 4 years, until my recent moving to my family business. But in सब के बीच में 2015 में I enrolled myself for my master's program at Greenwich University. लग रहा था ऐसा कि पढ़ाई और होनी चाहिए. You have to keep yourself in that momentum of learning continuously. और शायद अगर मैं इतना अच्छा पढ़ाई में पहले नहीं था, प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद वो स्पिरिट और थोड़ी तेज़ हो गई. तो 2015 से 17 मैंने अपना मास्टर्स किया और ग्रेजुएशन बड़े अच्छे हाई परसेंटेज से जीपीए से मैंने अचीव की. अल्हम्दुलिल्लाह. आई एम स्टिल थैंकफुल टू माई सेल्फ, मोर थैंकफुल टू माई वाइफ फॉर पुशिंग मी टू डू माई MBA. वरना आप नहीं करते, राइट? वरना शायद मैं नहीं करता, क्योंकि you always need that motivation behind you. No doubt, sir. And this can come from your parents, from your friends, from your colleagues, from your teachers. मेरी जो ड्राइव थी वो मेरी वाइफ की तरफ से आई, और उसकी भी एक वजह थी कि हमने एक पैक्ट किया था कि I will do my masters. As soon as I end it, you will do your masters. And both of us did it, you know. अल्हम्दुलिल्लाह. एक ख्वाब होता है, ख्वाब पूरा होता है, सबको अच्छा लगता है. बहुत खूबसूरत बात. आगे बढ़ते हैं जी. अब ये बताएं कि MBA भी आपका हो गया, कोई ऐसा टीचर जो आपको स्टिल अच्छा लगता हो कि यहाँ इन्होंने सिखाया, इन्होंने पढ़ाया, और मेरी जो प्रोफेशनल लाइफ है मैंने अपना उसमें उनकी वजह से थोड़ा बहुत बेहतर किया, तो कोई याद है आपको ऐसा प्रोफेसर? क्यों? मुझे अपने सारे प्रोफेसर याद हैं, और हर प्रोफेसर ने मुझे सिखाया. वो भले मेरा रिमीडियल का कोर्स हो या वो मेरा सबसे फाइनल कोर्स हो. एवरी टीचर इन दिस यूनिवर्सिटी calls you out, understands you, knows you, gets to know you, and then deals with you in a manner where we are ought to learn. टीचर्स के मैं नाम लेने जाऊंगा तो लिस्ट बहुत लंबी है, बट इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आई वुड थैंक ऑल माई प्रोफेसर्स, ऑल माई टीचर्स, ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन. It is because of these people that I am where I am. And the way I am here sitting in front of you, trust me, there are thousands of people जो मेरे साथ भी रह चुके हैं, मुझसे पहले के बैचेस में भी रह चुके हैं, who feel equally grateful to all the teachers. क्या बात है. अच्छा सर, विच प्रोफेसर यू डिडंट लाइक? मतलब ऐसा कोई प्रोफेसर हो जो आप जिससे खौफ खाते हो, यार इसकी क्लास नहीं लेनी, या इससे पढ़ना नहीं है, इससे भागना है, जिसने सख्ती की हो सही तरीके से? उनकी मैं इतनी इज्जत करता हूँ, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, उनके लिए हमेशा दुआएं देता हूँ. दुरानी साहब, you are talking about? I am talking about a professor who used to teach us calculus. His name was Professor Barkat Ali. एंड ये मैं आपको अपने बैचलर्स की बात बता रहा हूँ. गलती उनकी नहीं थी, गलती मेरी थी. मुझे मैथ्स नहीं पढ़ना था, मुझे कैलकुलस नहीं पढ़ना था, और उनको पढ़ाना था. और उनका अंदाज पढ़ाने का, वो उनको पता था क्लास में कि ये आगा बैठा हुआ है, इसको तो पढ़ना नहीं है, you know, तो मैं इसको उसी अंदाज से मैं डील करता हूँ. अब एग्जाम में बैठने के लिए आपको 2 से ज़्यादा एब्सेंस की इजाज़त नहीं थी, तो बैठना भी है. प्रोफेसर की इज्जत करते हैं तो उनको तंग भी नहीं करना है, जो वो कह रहे हैं उसको आपने बर्दाश्त भी करना है. पढ़ के फिर भी नहीं दिया. ये तो पहला सेमेस्टर उनके साथ जब किया तो ये इस तरह का मेरा रवैया था. फेल हो गए, कोर्स रिपीट किया, फिर से वही प्रोफेसर, ले भाई खुद फंस गए, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा. तो मैंने कैलकुलस 3 अटेम्प्ट्स में पास किए, और तीनों दफा प्रोफेसर बरकत थे
लास्ट अटेम्प्ट में क्या आपका ग्रेड रहा ये बता दें। लास्ट अटेम्प्ट में मेरे ख्याल में इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आई गॉट अ सी। और जो मुझे याद है उस कोर्स में एग्जाम में आया था वो मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि मैंने इतना उसके लिए पढ़ा था। प्रेशर दिमाग में बन गया होगा, एक कोर्स को 3 दफा पढ़ना। मुझे खुद वो हो रहा है कि आप मतलब बताओ स्टूडेंट कैसे करेंगे, दूसरी दफा समझ में आता है, लेकिन तीसरी दफा जो आपके दिमाग में ये गया होगा वो आपको सारी जिंदगी अब याद रहेगा। मुझे याद है। हाँ, आगे बढ़ते हैं, आप वही चीज आंसर भी कर दोगे। अच्छा आगा साहब, एक्टिविटी बताएं, आपकी किस तरह की एक्टिविटी कैंपस में रही, कहाँ आप इन्वॉल्व थे? इन्वॉल्व मीन इन सोसाइटीज़ जो एकेडमिक्स की हमारी होती हैं यूनिवर्सिटी की, किस तरह का आपका ग्रुप था, किस तरह का बैच था, क्या एक्टिविटीज़ आप करते थे? हमारा यूनिवर्सिटी में कल्चर है, वो कल्चर बहुत ज़्यादा फैमिली फ्रेंडली ओरिएंटेड है। हम जिस टाइम मैं बैचलर्स में था, यकीन माने एवरी स्टूडेंट न्यू द अदर स्टूडेंट एंड एवरी स्टूडेंट न्यू एवरी टीचर एंड एवरी स्टाफ मेंबर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। हम जो भी करते थे इस यूनिवर्सिटी में हम साथ मिल के करते थे। अगर वो स्पोर्ट्स है तो हमारा स्पोर्ट्स में एक सर्कल बना हुआ है और वो सर्कल को सब एक्सेप्ट करते हैं। एकेडमिक्स है, हम सब मिलके करते थे। मेरा पर्सनल एसोसिएशन कभी किसी सोसाइटी के साथ नहीं रहा, मगर आई ट्राई टू बी एज prominent in this university as possible. और उस प्रोमिनेंस की वजह ये नहीं थी कि मैं कुछ सोसाइटी से लिंक्ड हूँ, उस प्रोमिनेंस की वजह ये थी कि ये यूनिवर्सिटी आपको वो इज्जत देती है, तो आपकी पर्सनालिटी उस हिसाब से ग्रूम होती है। बिल्कुल सही बात है। ये मैं अकेला नहीं कहूँगा, आप जिससे बात करेंगे वो आपको यही जवाब देगा। बिल्कुल सही बात है। सर क्लास बंक की कभी ये बताएं कि अभी दिल चाह के क्लास नहीं लेनी और निकल गए बाहर? देखिए जी, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसने क्लास बंक नहीं की हो। अच्छा हमें वाकया बता दें, आपने कैसे की, कैसे प्लान किया, या कभी पकड़े गए क्लास बंक करते हुए, एडमिनिस्ट्रेशन को पता लग गया, टीचर को पता लग गया? देखें, हमारी एक टीचर थी और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं अभी भी उनसे इन टच हूँ, मिस शर्मीन इम्तियाज लारी। मिस शर्मीन लारी क्या करती थी कि अगर आप क्लास में लेट आए तो आपको गाना गाना है। भाई आवाज अच्छी नहीं है, गाना कैसे गाए बंदा? और फिर नजर आ रहा है कि सामने आपके पास 30 बच्चे हंसेंगे आपके ऊपर, कैफेटेरिया में मजाक बनाएगा, तो अगर आप लेट आ रहे हो तो आओ ही नहीं। तो हम आते थे, कैफेटेरिया में जाके बैठ जाते थे। हमारे यहाँ होती है क्लास के बीच में एक ब्रेक, उस टाइम पे प्रोफेसर्स भी आते हैं कैफेटेरिया की तरफ। उन्होंने देख लिया कि बैठे हुए यहाँ पे तो चाय क्लास नहीं ले रहा, और क्लास नहीं ले रहा। अरे भाई अब तुम गाना गाओगे कैफेटेरिया में। अच्छा, मतलब ये क्लास तक महदूद नहीं रहा, पूरा कैंपस देखेगा। मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ कि ये यहाँ का कल्चर अच्छा था। क्या बात है, बड़ा मजा आया सुन के। तो बंक की है, मगर एक पॉइंट आता है कि आप का दिल नहीं चाहता बंक करने का, आपको क्लास में रहने का दिल चाहता है। तो इससे ज्यादा बेहतर नहीं था कि वो गाना आप 30 लोगों में गा लेते तो वो ज्यादा सही रहता। हाँ, तो उसके बाद गया। क्या बात है आगा साहब। अच्छा, थोड़ा सा पर्सनल सवाल है, यूनिवर्सिटी में जब आप पढ़ रहे होते हो तो हमने भी देखा, हमारे मुख्तलिफ अलमनाइज आए, उनकी हमने लव स्टोरीज सुनी, ठीक है, तो वो माशाल्लाह से अचीव भी हुई, किसी की नहीं हुई तो उन्होंने कहा जी छोड़ दें, बस इस बात को ना आप डिस्कस करें। आपके साथ क्या कुछ हुआ, कुछ आप शेयर करेंगे? वैसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, कोई मेरे पास नहीं आई, किसी ने मुझे प्रपोज नहीं किया, किसी ने मुझे नहीं बोला कि आप अच्छे, और ना ही ये चीज मैंने की। लेकिन आप किसी को पसंद करते थे? या मैं सबको पसंद करता था। मेरी पर्सनालिटी हमेशा से ऐसी रही है कि आई वांट टू इंटरैक्ट विद एवरीवन। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, मेरी किसी से गलत कोई किसी किस्म का रिश्ता नहीं है, मेरी सबसे अच्छी बात है आई एम इन टच विद ऑल द फ्रेंड्स दैट आई मेड ड्यूरिंग माई टाइम इन द यूनिवर्सिटी। अभी भी मेरे साथ उनसे बातचीत। क्या बात है। तो मेरा कभी कोई पर्सनल रिलेशन या उसको आप कहते हैं लव एंगल से अगर आप देखते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ।
क्योंकि आपको फिर ये चीज ना होने से आप फिर आपको पता है आपका ट्रैक क्या है, आपका मिशन क्या है, आपको पढ़ाई करनी है, आपने फिर घर जाना है, तो मैं उस पे फिर राग़िब रहा। चलिए अच्छा हो गया, आगे बढ़ते हैं, अब इस पे ज़्यादा बात नहीं करते, ठीक है। अच्छा सर, हमारा एक राउंड होता है, इसको हम कहते हैं रैपिड फायर राउंड। इसमें हम जो ग्रीनविच यूनिवर्सिटी का पुराना स्टाफ है उनका एक नाम हम आपके सामने रखेंगे, आपके दिमाग में जो भी उनके बारे में आए आपने 1 वर्ड में उनको डिस्क्राइब करना है। और अगर मैं 1 वर्ड में नहीं कर पाया आप सेंटेंस ले लें। थैंक यू सो मच। ठीक है, इजाज़त है सर। राशिद इकबाल। राशिद के पास हम जाते हैं और राशिद कहते हैं राशिद ये वाला कोर्स चाहिए मुझे, राशिद कहता है डन। और फिर मिलता था। अच्छा। राशिद इज योर मैन टू गो टू गेट एनीथिंग डन। ज़बरदस्त। अच्छा सर, राशिद के बारे में मुख्तलिफ अलमनाइज़ मुख्तलिफ बातें करते हैं, लेकिन अच्छे अल्फाज में उनको याद किया जाता है। सर, रब नवाज के बारे में क्या कहेंगे? रब नवाज इज द स्वीटेस्ट पर्सन दैट यू कैन मीट इन दिस यूनिवर्सिटी, प्रोफेशनली भी एंड पर्सनली। जेम। सर, कामरान भाई, अगेन ही इज द मोस्ट हेल्पफुल पर्सनैलिटी यू विल फाइंड इन दिस यूनिवर्सिटी। एनीथिंग दैट यू आर फेसिंग and you want to discuss with someone to get out of that problem, you can go to Kamran bhai. अच्छा, सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं, हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं कामरान साहब के साथ, वो सब किसी को नो कहते ही नहीं है। नहीं कहते। उनके लिए मतलब आधी रात को भी आप फोन करेंगे, कामरान भाई ये काम है, हाँ हो जाएगा, डन है। 100% सही है। और मतलब because he is true to himself and वो हमारे ऊपर भी यही रोशनी डालते हैं। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। सर, जमील अहमद के बारे में आप क्या कहेंगे? जमील साहब एग्जामिनेशंस के थे, उस टाइम बड़ा डर लगता था। अभी भी एग्जामिनेशंस का हिस्सा है। हाँ, मतलब अब मेरे एग्जाम नहीं हो रहे ना, अब तो अच्छा, तो उस टाइम एग्जामिनेशंस पे अच्छा, उनका दफ्तर ऊपर होता था। ठीक। एग्जामिनेशन में कंपल्सरी कि आपकी अटेंडेंस पूरी हो, तो उस टाइम जमील भाई हेल्प करते थे। तो जमील भाई एक लेटर दे देते कि लिख दो इसको, ये ना हम अप्रूव कराने की बात करते हैं। सही। सर, मुनीर के बारे में? मुनीर साहब is a foundation of this university when it comes to the students. He's been here since day one. Amazing personality, always helpful, always here to help you out. मेरे admissions, जितने दोनों admissions, direct मुनीर साहब. Okay. And he will make sure that I would receive the best of care possible in this university. Amazing. क्या बात है। वाइस चांसलर मैडम सीमा मुगल, उनके बारे में मैं इतना कुछ कह सकता हूँ, उनकी तारीफ में इतना कुछ कह सकता हूँ कि हमारा शो खत्म हो जाएगा। शी इज अ लिविंग लेजेंड। बिल्कुल सही। शी इज अ लिविंग लेजेंड इन एजुकेशन इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, एंड अल्लाह उनको लंबी जिंदगी। आमीन सुमा। बहुत अच्छी बात आपने बोली, बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह। रजिस्ट्रार सईद मुगल के बारे में आप क्या कहेंगे? Saeed Mughal Saab is the reason why there is a friendly culture here, because he is the one who made sure that he interacts with everyone, every student, meets them, shakes hands with them, interacts with them, and make everyone comfortable. And that person who does that, उनके लिए तो तारीफ इतनी कर सकता है बंदा कि खत्म ना हो। सर, लास्ट वर्ड अबाउट द होल यूनिवर्सिटी, इसकी क्या आप स्ट्रेंथ समझते हैं, क्या पावर समझते हैं? ग्रीनविच यूनिवर्सिटी है क्या आपके दिमाग के हवाले से, क्योंकि अब आप पास आउट कर चुके हैं, आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप अब क्या सोचते हैं कि ग्रीनविच यूनिवर्सिटी की स्ट्रेंथ पावर क्या है? सी, ग्रीनविच यूनिवर्सिटी जब मार्केट में मैं एंटर हुआ, आई स्टार्टेड मीटिंग tons of people who have graduated from this university. And at that time, I figured out that professional बंदा पैदा होता है, उसको पैदा करता कौन है? उसको यूनिवर्सिटी पैदा करती है। ग्रीनविच यूनिवर्सिटी पैदा करके दे रही है प्रोफेशनल्स फॉर द मार्केट। No doubt, sir. It is one of the best universities in Pakistan where your child will learn discipline, education, personality building, speaking power, logical thinking, experiential learning,
पर्सनालिटी ग्रूमिंग एंड वेरियस ट्रेड्स जो एक प्रोफेशनल में होते हैं। ग्रेनिच यूनिवर्सिटी ऐसे स्टूडेंट्स को पैदा करके मार्केट में डालता है कि नाउ यू आर रेडी टू फेस एनी चैलेंज in the working environment. I have been here since a very long time. अगर बैचलर्स के बाद मेरा 7 साल का गैप था या 5 साल का गैप था, मैं किसी और यूनिवर्सिटी भी जा सकता था। मैं नहीं गया, मैं वापस यहीं पर ही आया, मैंने अपना MBA किया। इससे बड़ी मेरे लिए तो कोई बात नहीं हो सकती। क्या बात है आगा अहमद हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप मसरूफ़ हैं, आप काम कर रहे हैं, हमने आपको याद किया और आप यूनिवर्सिटी के लिए दौड़े चले आए। यूनिवर्सिटी आपको सर एक छोटा सा तोहफा दे रही है, आई होप आपको अच्छा लगे। एक शील्ड है ताकि आपको भी ये याद रहे कि आप आए हमारे शो में और ये शील्ड आपको मिली है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। हम आपको दोबारा भी इनवाइट करेंगे, मोस्ट डेफिनेटली, हमारी पब्लिकेशन है सारा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया होगा, जितने भी अलमनाइज हमें देख रहे हैं कि वो हम उनको भी रिकॉल करेंगे, बुलाएंगे और उनसे भी पूछेंगे कि उनकी क्या कुछ एंगेजमेंट ग्रेनिच यूनिवर्सिटी में रही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। In a world which is always moving, photography lets it stand still. It's something much more than just a collection of pretty pictures. It's the stories that are behind those pictures. Hi, my name is Faraz Iqbal. I'm your mentor for the Photography Society at Greenwich University. So for the next 3-4 months, I have planned a lot of events that will be happening under this society. For example, we have photo walk, photo contest, photography exhibition, photography trip. That will really help you guys understand what goes behind taking the pictures. We also have planned a couple of photography workshops, and in those workshops you'll understand how pictures are taken, what a lens does, what the body does, what is good lighting, what is bad lighting, what is good composition, and you'll really get a chance to explore yourself. So I really look forward to seeing you guys in the society, and yeah, let's have fun. Thank you. My name is Farah Agha. I'm a proud alumni of Greenwich University. I'm the COO of Abbas Spinning and Weaving Mills and currently setting up a steel manufacturing plant. Greenwich has been instrumental in shaping not only our personalities, but providing us the life skills necessary for the professional success that some of us have had in our careers. Assalamu alaikum. My name is Fareed Zafar. I am the head of HR operations of Angro Corporation. And also I am a proud alumni of Greenwich University. So I'd like to thank Greenwich University for providing me a platform to enhance my skills, my education, and now I am in the corporate world and bringing a good name to the university. Thank you. Choose a job you love and you will never have to work a day in your life. Our society aims to help you firstly identify your goal and then explore all the paths which will lead you to follow your dream career and enable you to manage and upgrade your skills through various seminars and interactive corporate sessions. Join us now on a fulfilling journey. Hi, my name is Fuad Mehdi and I'm the CEO at FNH Ventures. I'm a very proud alumnus of Greenwich University, and I would like to thank Greenwich for laying the foundations of my success and career. हुसूल जा की खातिर नकज बिजर के लिए ये मकतबा है मिल्लत के हर बशर के लिए
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, CSR, एक ऐसी सोसाइटी कि जिसमें आप अपनी जात से निकलकर दूसरों के लिए कुछ करने का जज्बा, हौसला रखते हैं। तो आइए और ज्वाइन करें CSR सोसाइटी। और जिन लोगों ने CSR को ज्वाइन किया है, मैं उन तमाम मेंबरान को इस सोसाइटी में खुशामदीद कहता हूं। Hi, I am Haider Ali Asad and I am the Chief Operating Officer of FNX Ventures and a proud alumnus of Greenwich University. I would like to thank Greenwich University for giving me such wonderful memories. Hello everyone, welcome to Greenwich University Karachi campus. This is Afshan Farooq. I'm Vijay Hotwani, your today's host. And my name is Amit Prem and I'm very glad to host you all since I have been to your campus. And to be very honest, your campus is beautiful and Moshid itself is an amazing place. Today we're going to show you Greenwich University's Karachi campus. Let's have a look inside at the Greenwich family. This is our very own lobby. And this lobby is one of the most favorite places of students over here. The class has just ended and you can see a lot of people waiting over here. They wait for their cars, they have gossip sessions over here, and they especially like this place when it's really hot outside. Let's have a look at rest of the campus. And that's our reception. And reception is one of the most important places over here since all your queries, all your questions are answered over here and they are very respondent to whatever you're asking. And this is our counseling room. Let's have a look inside in the counseling room. Over here you can see our counselors counseling a lot of students. They're helping you out with all your queries, whether it's about admissions, whether it's about anything in university, regarding your courses, regarding your attendance. They're always there to counsel you and help you out in the best possible way. Now we are standing outside computer lab. Let's have a look inside. So over here you can see a lot of students working in the computer lab. This is one of the most important places we have in Greenwich University Karachi campus. Now our computers are with high-tech technology and we have experts also working over here to help out the students with any concern which they have. Moreover, we have printing facility, we have free Wi-Fi in the entire campus and the Wi-Fi works really nice in the computer lab too. The Greenwich Library offers you a lot. From books, magazines, newspaper, it has a lot to offer to the students and this place is extremely optimized during the exams. Also, we have to add up a little more about this library. We have Wi-Fi facility over here as well and we have computers over there. So right when you're done with your books and stuff, you can also log in to your accounts. You can also refer to the internet for whatever information you need. And I personally love the magazine collection in this library. And not only this, we have the e-library right over there and you can see the students working very hard. Moving on to our auditorium right now. Assalamu alaikum, welcome to the Greenwich family. People, If you have any queries or concerns regarding to your courses, our communication center is here to help you out. And not only queries and concerns, but Communication Center ensures effective communication with each of the students they have in Greenwich University Karachi campus. And besides me, let me show you. Besides me, I have a student desk right over here. You can log into your account over here and then you can know your status, check your courses, your timetable and any kind of query which you have regarding your fee challan, regarding anything which you want to know is right over here inside with our experts. Now we are at the examination department. The students usually consider this as one of the scariest places. Scary but very important. All your exam queries, all the things regarding your attendance are solved in this department and so this is very, very important. And like we mentioned before that there is huge crowd at Communication Center when the semester begins. There is huge crowd at the Examination Center too, just when there are exams coming up on students' head. So we'll give you a glance of the examination department as well. Now we're at Center of Creative Linkage Learning. Let's move on to what it is. Like you can see over here, the Center of Creative Linkage Learning has three basic functions. The first one is Language Academia, and under this Language Academia we learn three different languages which are French, Italian and Chinese. The second basic function of CCL is Executive Development Program, and the third function which it performs is corporate communication. So we're standing outside the very interesting and very colorful place in Greenwich University, the state-of-the-art media lab. Let's have a look inside.
So right over here you can see colorful walls, photographs, and this is basically our post-production studio, and we have high-tech technology over here as well, like we had in the computer lab, and it's an outstanding place for media students. Now this place is a practical vision of, you know, what you see on TV, like the lights, camera, action you hear on TV. It is practically done over here, and you guys can have a very interesting look over here. This little miniature but beautiful window which you're seeing is of our radio lab. Let's have a look inside. This is our room with beautiful interior, and this is meant for radio recording and GTV. Let's have a look over here. It's kind of colorful over here. You can see a lot of pictures, a lot of quotations, and obviously very high-end technology. Hello everyone, and welcome to Greenwich radio station. You're listening to Afshan Farooq at Audio Diaries, and the GTV is operated by our media lab controllers. Besides me, I have the Greenwich University Research and Development Center, and with that we have the Office of Research, Innovation and Commercialization, ORIC. Let's have a look inside. We're going to have an inside view of Greenwich University Research and Development Center, and this is a very, very useful place for research students, especially those who are doing MPhil or PhD. Over here we have research journals and also ebooks, and most importantly we have a lot of research experts over here who help students out with their queries. So this was the Greenwich University Research and Development Center, a very useful part of our university. That's our indoor sports complex. Let's have a look inside. This is our very fascinating sports room, and over here students get a variety of games. From snooker, table tennis, foosball, Xbox, and a lot more things over here. Not only the sports area, but we also offer a gymnasium, and fitness freaks are often found over here. Heading to the cafeterias now. Here we have 2 cafeterias where you get delicious food in subsidized rates. This is our Cafe 1. Over here you have delicious food available in subsidizing rates, like I said before, and there's a lot more which Greenwich offers you. There's a variety of food which you can have over here, chill out with your friends, have selfies, and have a lot of fun after your class or before your class. Hello everyone, my name is Ali Jalani and I'm the mentor for Greenwich University's Diplomatic Society. The vision for Diplomatic Society is to provide the students with the opportunities to engage in simulated scenarios of international entities to foster their analytical vis-a-vis oratory skills. The Society will also be responsible for the conduct of Greenwich University's Model United Nations. You're more than welcome to be part of the Society's events, and would also like to have some of you who are passionate about developing a worldview to be part of the Diplomatic Society moving forward. And by the way, welcome to Greenwich Fraternity, all of you. Looking forward to have you around. Thank you. The idea of TCF came up. Karachi was burning. We were at our lowest ebb. Let's ask this question amongst ourselves. We were 5-6 of us. That do we want to actually be part of the problem? So answer was no, we don't want to be part of the problem. But we asked ourselves a question that whatever we want to do, we want to actually get to the root of the problem. That once we settled on that we work on health, but what is the root of the health problems? That 40% of the health problems in Pakistan are hygiene related. So we said, okay, then we should work on hygiene. And the root of hygiene lies in education. So that is why we stumbled onto this cause of education. But we didn't know that that solution was TCF. हमारा जो ये इदारा है द सिटीजन्स फाउंडेशन, इसमें ये रोज़े अव्वल से हम सब के लिए एक मजबूत सुतून की तरह है. He has got a feeling for the less privilege of this country. I think that very few people in this country have a mindset which Allah has given Ehsan Salim. You know, somebody said, let's go out and big target. So how about 100 schools? And I said, no, maybe 500 schools. Then one of the founders, Maroom Rashid Abdullah,
He said, "Nahi yaar, not less than 1,000 schools." So each one of us put up money ourselves to build 5 schools in a go. We said we will spend 1 year in trying to debug anything which is involved with the school, and if we think that we have perfected it, then we'll go out and ask other people to join. इनकी जो राय होती है उसमें समझदारी भी होती है, दानाई भी होती है, और वो दूर तक एक चीज़ को देखते हैं और फिर अपनी राय देते हैं और संजीदगी से देते हैं. One of the reasons why people don't send their girls to school is because of male teachers. So we also decided that all our teachers will be female. And to this date, all our teachers in the entire system are female. Mr. Ehsan Salim is a visionary and he's a exemplary human. I would like to say that he has the heart in the right place. Our fathers always made it a priority to ensure that all of us, like my siblings and I, understand that we need to be responsible actors in every way. We need to be responsible friends and family, responsible colleagues, responsible citizens, and overall responsible humans. The one thing that I feel he actually really inculcated in all of us is that the whole is greater than the sum of all its parts. Baba does not talk about his achievements, Yeah. and we kind of feel overwhelmed, dwarfed by it, and also proud that he's managed to achieve so much, mashallah. And like Baba says, it's his ticket to heaven. एक्चुअली तो उनके साथ बहुत सारे अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स हैं, मगर एक जो है कि एक एल्डरली लेडी ने उनका हाथ पकड़ के एजुकेशन का थैंक यू करने के लिए उनका हाथ पकड़ के उनके हाथ पर किस किया और बोला कि जी अब बेटा मुझे नज़र आने शुरू हुआ है जब से मैंने ये अडल्ट लिटरेसी में पढ़ाई करने शुरू की है. Then I would actually much respect a child who gets up and becomes a doctor or something and say, "What does your father do?" And he proudly says कि सर वो गधा गाड़ी चलाता है. Because उसकी गधा गाड़ी चलाने से ये डॉक्टर बन गया. तो they should have no shame because every work, गधा गाड़ी चलाएं, sweeping the floor, this is work. And work cannot ever be menial. Work is work, and there is a lot of pride in doing your work. I want to honor and congratulate Ehsan first on getting this doctorate of humane degree, and also feel that Greenwich University also should be congratulated for choosing and picking out the right people who have done service to the nation. We set up a very audacious target, but Alhamdulillah, that has been surpassed. तुझे हर नज़र पे उबूर दूँ, तुझे ज़िंदगी का शऊर दूँ. This is the purpose of art, and so is the purpose of GU Literary Society. What is art? Art is all about unsung songs of human emotions and stories. We all have stories, complicated stories, connected stories. The purpose of this society is to bring into light all those stories and unsung songs of literary giants and people we are not even aware of. I want to welcome all of you to Greenwich University and looking forward for your participation into the society. And I wish you a very memorable stay here. Hi, my name is Haider Javed. I'm a graduate of Greenwich. It's been 17-18 years that I've been in the market working for the financial sector. Presently, I'm working for an investment bank where I'm heading the corporate and investment banking division. Definitely, I would like to praise the knowledge and education which has been given to me by this university, because from day one, as I entered the market, I started my career from investment banking.
where I was exposed to many structured and one of their own kind of transactions, which were first time floated in Pakistan. And I was able to execute them and excel in them and perform in those transactions because of the knowledge which I gained from this university, because of the expertise and technical know-how which was given to me by the teachers who were professionals, who were from the financial sector, who were from the field, who were from the marketing side. It all helped me in becoming whoever I am today. Thank you, Greenwich. Assalamu alaikum everybody, my name is Awais Agha and I'm the mentor for the Entrepreneurship Society at Greenwich University. I would like to welcome you all to the university, and in this society we will have a series of events starting with discussion sessions in which we will ask all of you to come in and pitch your business ideas, and we are going to discuss their viabilities. Apart from that, we are going to have a series of guest speaking sessions in which we will invite budding entrepreneurs to share their experiences with you. And finally, our main event is going to be a competition where we will invite you all to come up with business ideas and pitch them in front of a series of investors. The winner will either receive a prize or get a chance to incubate their business. I'm looking forward to you all to this society. Assalamu alaikum everybody, my name is Awais Agha and I'm the mentor for the Entrepreneurship Society at Greenwich University. I would like to welcome you all to the university, and in this society we will have a series of events starting with discussion sessions in which we will ask all of you to come in and pitch your business ideas, and we are going to discuss their viabilities. Apart from that, we are going to have a series of guest speaking sessions in which we will invite budding entrepreneurs to share their experiences with you. And finally, our main event is going to be a competition where we will invite you all to come up with business ideas and pitch them in front of a series of investors. The winner will either receive a prize or get a chance to incubate their business. I'm looking forward to you all to this society. Hi, I am Jarjeet Seja and I am currently working as Chief Executive ARY Network, and I'm a proud alumni of Greenwich University. I've been part of Greenwich since 1994, and I would like to just say one thing, that wherever I am and whatever I am, I think Greenwich played an instrumental role, or one of the key role in making what I am today. So I would just like to say thank you to Greenwich. Assalamu alaikum. My name is Kareem Theli and I am Director Ibrahim Group of Companies. Also Managing Director Pakistan Dairy Products, Igloo Ice Cream naam suna hoga aapne. It's one of the largest ice cream manufacturers in Pakistan. I am a proud alumnus of Greenwich University, and I have learned a lot from Greenwich. Greenwich brought a lot of opportunities in my life, and therefore here right I am. And to bring a change, you need to get out of your comfort zone, and once you get out of that comfort zone is when you are up at a certain level. So I would like to say to all the Greenwich University students to keep focusing on their studies. Also play and do the entertainment part as well, because that's really important in life. But with that, you need to bring a change in your life to come at a certain point. Because being an entrepreneur is not as easy as it seems. आप लोगों ने कुछ सक्सेस स्टोरीज ही सुनी होंगी, लेकिन हम उस सक्सेस स्टोरीज को बेंचमार्क बना देते हैं अपनी लाइफ के अंदर कि यार इसको देखो हम इस लेवल पे पहुँचें। तो उस लेवल के पहुँचने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, एंड व्हेन यू गेट आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन
is the time you come up at that certain level. So I would like to thank you, Greenwich University once again, its faculty, team members, and all the staff for inviting me here today and also making me part of the Greenwich family. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Kashif Arif. I joined Greenwich in the very first batch of the Southeastern University program that they were running. I did my BBA in marketing as well as my MBA with specialization in marketing too. After that, I've had a very long career in the marketing and advertising, more like business communications career, and eventually I've recently joined the Synergy group, Synergy advertising group. I'm looking after the content development. I'm the head of content development at Syntax Communications, which is one of the PR divisions of Synergy. We also have our digital marketing and digital communications setup. Going back to the Greenwich days, it's been a very exciting journey. We've had the most memorable times of my life, at least, in this institution. It's come a long way. Started off from a very humble start, and I wish best of luck to the graduating students of this institution. They have a long way to go. The market is ready for good people. If you have the capacity, the capability, the talent, the market has a lot of space for students who are from, regardless of the institution they get. But Greenwich has a special advantage of being there for such a long time with a lot of, the curriculum is, as far as I've seen the curriculum here, the media related curriculum, it looks pretty wholesome, it's pretty rich, and it's a great opportunity to learn before you enter the practical life. And I wish best of luck to the students who are, especially the students who are doing their media sciences here. That's about it. Assalamu alaikum everyone, I'm Omar Khan and I'm the mentor of the Sports Society here at Greenwich University. We have all the sporting facilities on campus that includes cricket, football, basketball, badminton, table tennis, snooker, FIFA, and also an in-house gym for the fitness freaks. So participate, be active, be healthy. See you soon and welcome to Greenwich University. जब मेहनत, हिम्मत, जहानत, लियाकत और खिदमत इंसानियत की सिफात इंसानी वजूद में ढल जाएं, तो सरदार मोहम्मद यासीन मलिक का खाका सामने आता है। सरदार यासीन मलिक एक अहद साज और हमा जहद शख्सियत के मालिक हैं। फ़रोग़ तालीम के लिए अनथक मेहनत, मुस्तहक़ीन की मुसलसल खिदमत और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए खिदमत बा तर्ज़ इबादत आपकी जिंदगी का नस्बुल ऐन है। सरदार यासीन मलिक 1941 में बर्रे सगीर में पैदा हुए और तक़सीम हिंद के बाद 9 साल की उम्र में पाकिस्तान तशरीफ ले आए। इल्म की शमा से मुआशरे को मुनव्वर करने वाली शख्सियत यासीन मलिक ने अपनी इब्तिदाई तालीम लियारी से हासिल की और बाद अज़ां हुसूल इल्म की गरज से सिंध मदरसतुल इस्लाम और सेंट पैट्रिक कॉलेज से मुंसलिक हुए। यासीन साहब की इब्तिदाई जिंदगी उसरत से इबारत है। वो बिजली की अदम दस्तयाबी के सबब सड़क किनारे आवीज़ा
बरकी कुमकुमों तले मुताला किया करते और इसी इल्म, दोस्ती, अज़्म हिम्मत, मेहनत व लगन और जहद मुसलसल की बदौलत आप कठिन लम्हात और मुश्किल औकात को शिकस्त देकर कामयाबी और कामरानी से सरफराज हुए। सरदार यासीन मलिक जहां मुल्की मईशत को इस्तेहकाम बख्शने में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, वहीं दुखी इंसानियत की खिदमत और बेसहारा लोगों की मुआवनत के साथ साथ फलाही और रिफाई इदारों से भरपूर ताउन करना इनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बतौर नायब सदर अंजुमन हिलाल अहमर पाकिस्तान, आपने कुदरती आफात से मुतासिरा अफराद की बहाली के लिए जो इक़दामात किए वो यकीनन काबिले सताइश है। सरदार यासीन मलिक ने उबूरी हुकूमत में न सिर्फ सूबाई वजीर बराए मजहबी उमूर खिदमात अंजाम दी, बल्कि अपनी लियाकत और वक़ी तजुर्बे की बदौलत वजीर आज़म पाकिस्तान के मुआविन खुसूसी भी मुकर्रर हुए। बहैसियत डायरेक्टर पाकिस्तान स्टेट ऑयल सरदार साहब की खिदमात को किसी तौर फरामोश नहीं किया जा सकता। दर्स व तदरीस की फरोग व तरवीज और तलबा को जदीद उलूम व फनून से आरास्ता करने के लिए यासीन साहब ने सैकड़ों तालीमी इदारों की माली मुआवनत फरमाई और आज भी मुतादिद स्कूलों, कॉलेजों और जामियात की सरपरस्ती के फराइज अंजाम दे रहे हैं। यासीन साहब को इनकी गिरा कद्र समाजी खिदमात के एवज हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हिलाल इम्तियाज और सितारे इम्तियाज अता किए गए। अवामुन्नास की बेपनाह फलाह व बहबूद के एतराफ में इन्हें साल 2004 में मुल्क का बेहतरीन आदमी करार दिया गया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। So, as you have known Mr. Sardar Yasin Malik for a very long time, and we are awarding him with an honorary doctorate degree. Is there anything you would like to say about his personality? Sardar Sahab is a very interesting and impressive personality. He is a man of many qualities. Most among them, or most foremost among them, is that he is a very humane person, always considerate for others. And interestingly, we met regarding public service to do with the setting up of public toilets. And he was forthright in helping establish a chain. Then whether it had to do with medical treatment, educational stipends, other marriages and other needs of people, he was always forthcoming, ever ready to help. Then these are qualities that are, mashallah, needed and dear to Allah subhanahu wa ta'ala and for Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And I think it is something that leaves a deep mark on society. What do you think is the one thing that has made Mr. Yasin Malik achieve all the milestones that he has achieved? Of course, everything is with the blessing of Almighty Allah, but it is his hard work, his sincerity, his vision, and like I said, his concern for others. Exactly. And I'm glad that you recognized his services to society and awarding him with this degree. I wish you and Sardar Sahab the best. May Allah bless you all. Assalamu सर, आपका ताल्लुक़ सरदार यासीन मलिक से बहुत पुराना और गहरा रहा है। क्या आप उनके बारे में अपने ख्यालात का इज़हार करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। जब आपने सरदार यासीन मलिक के बारे में पूछा तो यकीन कीजिए नाम सुनते ही फरिश्ता खतलत इंसान की याद आ जाती है। आपको याद होगा, पढ़ा होगा आपने कभी कि नूरजहां ने कश्मीर के बारे में कहा था कि अगर फिरदौस बर रुए ज़मीयत हमी हस्तो हमी हस्तो हमी हस्त, तो मैं ये कहूँगा कि अगर ज़मीन पर कोई फरिश्ता मौजूद है तो वो सरदार यासीन मलिक हैं। उनको आप देखिए, चलते फिरते फरिश्ता हैं, नहायत खुश मिजाज, नहायत नरम गो, नहायत अनजूमिंग, किसी किस्म का तसन्नुर नहीं है उनकी बातों में या उनके रहन सहन में। ये वो चीज़ें हैं कि जो उनको सबसे नुमायाँ करती हैं। पाकिस्तान इज़ ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। यहाँ बहुत कुछ है। तनहा काम करने की कोशिश ना करें, बल्कि इसमें अपने कारोबार के लिए, अपने कैरियर के लिए कोशिश करें कि दयानतदार लोग आप ढूंढें। ग्रेजुएशन में थे तो हमारे साथ मोहम्मद सिद्दीक शेख हमारे क्लास में पढ़ते थे। उनका केमिकल का काम था, जहाँ से मेरे कैरियर शुरू हुआ कारोबार का। मैं वहाँ पर एज ए सेल्समैन काम करता था। कॉलेज के टाइम के बाद में तो 1% कमीशन मिलती थी मुझे। और मुझे एक्नॉलेज करना चाहिए मोहम्मद सिद्दीक शेख को, उन्होंने मुझे बहुत आगे बढ़ाया
और ultimately it's ended up what I am today. Mustafa Kamal Pasha, practical life में he was my guide. और of course हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी ज़िंदगी में पहले नंबर पे आते हैं। माँ का जिक्र है तो मेरी माँ की दुआ मेरा ख्याल है कि बहुत ज़रूरी है। बहरहाल माई फादर हैज़ बीन 105 years old। मुझे नहीं मालूम कि मैंने कभी अपने बड़े भाई के सामने या अपने वालिद के सामने कभी ऊंची आवाज़ में बात की हो। सरदार यासीन मलिक पाकिस्तान और अक़वाम आलम के दरमियान बेहतर तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। शोबे तालीम की बेहतरी और मईशत की बहाली के साथ साथ यासीन साहब ने अपनी जिंदगी दूसरों का मयार जिंदगी बुलंद करने और अवामुन्नास को राहत पहुंचाने के लिए वक्फ कर दी है। ग्रीनिच यूनिवर्सिटी सरदार यासीन मलिक को इनकी गिरा कद्र खिदमात के एवज एजाजी डॉक्टरेट की सनद तफवीज करती है। जब मेहनत, हिम्मत, जहानत, लियाकत और खिदमत इंसानियत की सिफात इंसानी वजूद में ढल जाएं, तो सरदार मोहम्मद यासीन मलिक का खाका सामने आता है। सरदार यासीन मलिक एक अहद साज और हमा जहद शख्सियत के मालिक हैं। फ़रोग़ तालीम के लिए अनथक मेहनत, मुस्तहक़ीन की मुसलसल खिदमत और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए खिदमत बा तर्ज इबादत आपकी जिंदगी का नस्बुल ऐन है। सरदार यासीन मलिक 1941 में बर्रे सगीर में पैदा हुए और तक़सीम हिंद के बाद 9 साल की उम्र में पाकिस्तान तशरीफ ले आए। इल्म की शमा से मुआशरे को मुनव्वर करने वाली शख्सियत यासीन मलिक ने अपनी इब्तिदाई तालीम लियारी से हासिल की और बाद अज़ां हुसूल इल्म की गरज से सिंध मदरसतुल इस्लाम और सेंट पैट्रिक कॉलेज से मुंसलिक हुए। यासीन साहब की इब्तिदाई जिंदगी उसरत से इबारत है। वो बिजली की अदम दस्तयाबी के सबब सड़क किनारे आवीज़ा बरक़ी कुमकुमों तले मुताला किया करते और इसी इल्म, दोस्ती, अज़्म हिम्मत, मेहनत लगन और जहद मुसलसल की बदौलत आप कठिन लम्हात और मुश्किल औकात को शिकस्त देकर कामयाबी और कामरानी से सरफराज हुए। सरदार यासीन मलिक जहां मुल्की मईशत को इस्तेहकाम बख्शने में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, वहीं दुखी इंसानियत की खिदमत और बेसहारा लोगों की मुआवनत के साथ साथ फलाही और रिफाई इदारों से भरपूर ताउन करना इनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बतौर नायब सदर अंजुमन हिलाल अहमर पाकिस्तान, आपने कुदरती आफात से मुतासिरा अफराद की बहाली के लिए जो इक़दामात किए वो यकीनन काबिले सताइश है। सरदार यासीन मलिक ने उबूरी हुकूमत में न सिर्फ सूबाई वजीर बराए मजहबी उमूर खिदमात अंजाम दी, बल्कि अपनी लियाकत और वक़ी तजुर्बे की बदौलत वजीर आज़म पाकिस्तान के मुआविन खुसूसी भी मुकर्रर हुए। बहैसियत डायरेक्टर पाकिस्तान स्टेट ऑयल सरदार साहब की खिदमात को किसी तौर फरामोश नहीं किया जा सकता।
दर्स व तदरीस की फ़रोग़ व तरवीज और तलबा को जदीद उलूम व फ़नून से आरास्ता करने के लिए यासीन साहब ने सैकड़ों तालीमी इदारों की माली मुआवनत फरमाई और आज भी मुतअद्दिद स्कूलों, कॉलेजों और जामियात की सरपरस्ती के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। यासीन साहब को इनकी गिरा कद्र समाजी खिदमात के एवज़ हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हिलाल इम्तियाज और सितारे इम्तियाज अता किए गए। अवामुन्नास की बेपनाह फलाह व बहबूद के एतराफ में इन्हें साल 2004 में मुल्क का बेहतरीन आदमी करार दिया गया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। So, as you have known Mr. Sardar Yasin Malik for a very long time, and we are awarding him with an honorary doctorate degree. Is there anything you would like to say about his personality? Sardar Sahab is a very interesting and impressive personality. He is a man of many qualities. Most among them, or most foremost among them, is that he is a very humane person, always considerate for others. And interestingly, we met regarding public service to do with the setting up of public toilets. And he was forthright in helping establish a chain. Then whether it had to do with medical treatment, educational stipends, other marriages and other needs of people, he was always forthcoming, ever ready to help. Now, these are qualities that are, mashallah, needed and dear to Allah subhanahu wa ta'ala and for Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And I think it is something that leaves a deep mark on society. What do you think is the one thing that has made Mr. Yasin Malik achieve all the milestones that he has achieved? Of course, everything is with the blessings of Almighty Allah, but it is his hard work, his sincerity, his vision, and like I said, his concern for others. And I'm glad that you recognized his services to society and are awarding him with this degree. I wish you and Sardar Sahab the best. May Allah bless you all. Assalamu सर, आपका ताल्लुक सरदार यासीन मलिक से बहुत पुराना और गहरा रहा है। क्या आप उनके बारे में अपने ख्यालात का इज़हार करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। जब आपने सरदार यासीन मलिक के बारे में पूछा तो यकीन इनका नाम सुनते ही फरिश्ता खतलत इंसान की याद आ जाती है। आपको याद होगा, पढ़ा होगा आपने कभी कि नूरजहां ने कश्मीर के बारे में कहा था कि अगर फिरदौस बर रुए ज़मीयत हमी हस्तो हमी हस्तो हमी हस्त, तो मैं ये कहूँगा कि अगर ज़मीन पर कोई फरिश्ता मौजूद है तो वो सरदार यासीन मलिक हैं। उनको आप देखिए, चलते फिरते फरिश्ता हैं, नहायत खुश मिजाज, नहायत नरम गो, नहायत अनजूमिंग, किसी किस्म का तसन्नुन नहीं है उनकी बातों में या उनके रहन सहन में। ये वो चीज़ें हैं कि जो उनको सबसे नुमायाँ करती हैं। पाकिस्तान इज़ ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। यहाँ बहुत कुछ है। तनहा काम करने की कोशिश ना करें, बल्कि इसमें अपने कारोबार के लिए, अपने कैरियर के लिए कोशिश करें कि दयानतदार लोग आप ढूंढें। ग्रेजुएशन में थे तो हमारे साथ मोहम्मद सिद्दीक शेख हमारे क्लास में पढ़ते थे। उनका केमिकल का काम था, जहाँ से मेरे कैरियर शुरू हुआ कारोबार का। मैं वहाँ पर एज ए सेल्समैन काम करता था कॉलेज के टाइम के बाद में। तो 1% कमीशन मिलती थी मुझे, और मुझे एक्नॉलेज करना चाहिए मोहम्मद सिद्दीक शेख को। उन्होंने मुझे बहुत आगे बढ़ाया और अल्टीमेटली एंडेड अप व्हाट आई एम टुडे। मुस्तफ़ा कमाल पाशा प्रैक्टिकल लाइफ में ही वाज माय गाइड, और ऑफ कोर्स हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी ज़िंदगी में पहले नंबर पे आते हैं। माँ का जिक्र है तो मेरी माँ की दुआ मेरा ख्याल है कि बहुत ज़रूरी है। बहरहाल माय फादर हैज़ बीन 105 ईयर्स ओल्ड। मुझे नहीं मालूम कि मैंने कभी अपने बड़े भाई के सामने या अपने वालिद के सामने कभी ऊंची आवाज़ में बात की हो। सरदार यासीन मलिक पाकिस्तान और अक़वाम आलम के दरमियान बेहतर तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ में भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। शोबे तालीम की बेहतरी और मईशत की बहाली के साथ साथ यासीन साहब ने अपनी जिंदगी दूसरों का मयार जिंदगी बुलंद करने और अवामुन्नास को राहत पहुंचाने के लिए वक्फ कर दी है। ग्रीनिच यूनिवर्सिटी सरदार यासीन मलिक को इनकी गिरा कद्र खिदमात के एवज एजाजी डॉक्टरेट की सनद तफवीज करती है।
Assalamu alaikum. Hi guys, my name is Khurram Parvez and I am from SB 151087. I'm a proud alumni of Greenwich University. I graduated from here in 1997 and I think it's my life-changing experience, and there was a lot of fond memories, past memories which I have of Greenwich University. In fact, after doing my graduation from Greenwich, I also taught in Greenwich University for about 8 years, and now I am working as an assistant professor at ICRA University. I thank all my teachers who taught me during my studies, and I have made many good friends, and we are still, along with my good friends, meeting at different intervals with each other, and I am very much thank Greenwich University once again for all the good experiences I had during my student life and during my teaching life as well. Thank you. My name is Rehan Khwaja. Currently, I'm working as Director Supply Chain in KB Group of Companies, dealing in metals and minerals and chemicals. I'm a proud alumnus of Greenwich University. I would like to thank Greenwich for building my success, creating confidence in me, and laying the foundation stone of my success. Thank you. Mariam Sumro, and I'm a very proud alumni of Greenwich University. I did both my BSc Honours and my MBA from Greenwich. I'm currently working as a Director Education at Standard Chartered Bank, London. I think the one piece of advice that I have is that always be the hardest worker in the room, because that is something that has really served me very well in my career. A lot of people might think that Greenwich, might not have good students, good teachers, or I don't know. Might not be the best place for them. But what I can tell you is that hard work and being at Greenwich has helped me build such a strong network of friends and colleagues through the years that it has only enabled me to achieve success in life. My name is Asfan Nizami. I'm working in Express Publications as Group Executive Director, Marketing and Sales. I'm a proud Greenwich alumni. When I came to Greenwich, I actually flunked my entrance test. I started with a foundation, so I did a foundation. और today आज मैं जो भी कुछ भी हूँ वो Greenwich की वजह से हूँ. Greenwich ने मुझे बहुत कुछ सिखाया. और जो चीज़ मुझे एक टीचर ने कहा था कि इंसान और जानवर में फ़र्क ये होता है कि इंसान टाइम लाइन और डेडलाइन मीट करता है. तो वो क्वालिटी इस तरह मेरे अंदर आई कि आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी चीज़ की टाइम लाइन और डेडलाइन मीट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती. थैंक यू ग्रीनिच फॉर दैट. बहुत शुक्रिया. I'm Mehreen Nasir. I'm a primary teacher at Bayview Academy. I'm a proud alumnus of Greenwich University. Greenwich has shaped my life, and whatever I am today, I owe it all to Greenwich. It's been a wonderful 14-year association with Greenwich University, and I hope to continue that in future. Thank you. My name is Rahil Masood, and currently I'm into construction industry, and I had a great time with Greenwich, and it was a great learning curve. Thank you Greenwich for everything. My name is Shahzad Hassan Khan, and I'm a proud alumni of Greenwich University. And currently I am the head of marketing for ARY Network and Karachi Kings. And about Greenwich, basically I think that what I am today, Greenwich contributes a lot
to it, and it is because of Greenwich environment and teachers that I've learned so much in such a short time, and then grown in the industry. Hi, my name is Vajat Rauf and I'm a filmmaker and I've done television for 16-17 years. I'm a proud alumni of Greenwich University, and I'd like to thank the faculty and all of my fellow students for helping me carve out a career in media. Assalamualaikum, मेरा नाम शाज़िया वजाहत है. I'm an executive producer at Showcase Productions, producing dramas, and I'm also teaching media studies at the Indus Academy. I'm a proud alumni of Greenwich, and my experiences and learnings at Greenwich has really helped me in my career. Thank you. My name is Suhail Amin. I started my journey with Greenwich in September 1989. Completed my masters. Started off with bachelor's, and then finally completed my masters in '93. I have had a long association with Greenwich. I've always been associated with the alumni affairs at Greenwich. Was also part of the visiting faculty, assisted a number of professors here. Currently, I head my own company. In fact, I head my own group of companies. We represent Petronas of Malaysia. We represent Oman refineries for both Pakistan and Afghanistan. We also represent certain other companies like Oxia, Germany, and Milliken, US, for Pakistan, Afghanistan, and some other countries. And Alhamdulillah, we're doing well, and almost the entire professional career that I have had so far, Greenwich has had a major role to play, and obviously I would not want to forget 3, 4, 5 names who have played a major role in my life. Shahid Anwar Bajwa Sahab, of course, S.N. Durrani Sahab, Talib Kareem Sahab, Mrs. Rukhsana Nur Khan, Shafqat Hussain Sahab, so many. I mean, I'm sorry if I forget any of you, but you all of you, all my teachers who've coached me, you are so close to my heart that please don't, if I've not taken your name, please don't take it personally. It is you, each one of you is so fabulous, so amazing. You guys have made me what I am today. And of course, Seema, Saeed Bhai, rest of Greenwich, I am all yours. Whenever you need me, I'll always be there. Thank you. I'm Sonia Amjad and I'm a proud alumnus of Greenwich University. Currently, I'm working as the headmistress Beacon House School System. I would like to thank Greenwich University for my success and giving me life-changing experiences. Thank you. My name is Falia Alam Shahzada and I am the founder and chief halwai at Dher Sara Pyar, and I graduated from Greenwich in 1999, and I am an extremely proud alumni because Greenwich was not just home, but it forced you, pushed you, convinced you, and you were left with no choice but to follow your passion and work really hard. Taimur Amjad. I'm the Director Commercial Operations at Transworld Associates. I was at Greenwich from 93 to 97. Some of my best years were spent at Greenwich, and it helped shape who I am, and had a great time.
name is Mohammad Aruj Mirza, and right now I'm working for an ad agency for over like 10-12 years. And the thing is, like, Greenwich has really groomed us, and I'm really proud to be a part of Greenwich Institute. And thank you, Greenwich. Greenwich was a second home because college, you spend more time at college than your home. So you get accustomed to the experiences here and your friends and colleagues and teachers. So it was a second home in a nutshell. I think amazing faculty. Some of the teachers were really brilliant. The experiences were unmatched. I think the extracurriculars were really helpful, and the push we got and the encouragement we got in music and in theatres and in drama classes and all helped us finding a career for ourselves. Secret तो अगर पता चल गया किसी को तो वो adapt कर सकता है बार-बार. There's no secret as such. I think persistence is everything. I read somewhere that talent is kind of common, but when you're at something, you're persistent about something, so eventually you get your goals. I think these days it's pretty specific and structured as to what one needs to do. In our time it was a generic, everybody wanted to do a marketing degree or a business degree, but go with your gut feel, whatever you want to study. If you're towards the arts or towards media, you go for a school that's good in that department. Other than that, then look at the faculty. That would be most crucial. Unforgettable, मैं बता नहीं सकता. एक दफा से सईद साहब आ गए थे, उन्होंने कहा कार्ड लाएं, तुमने कहा अच्छा मरे. But I can't tell you why that was, क्यों ऐसा हुआ. But I think वो performances जो थी, हाँ you can probably know. Unforgettable तो वही है जब उन्होंने ID card लिया था. But there are a lot more other good memories also जब हम perform करते थे on stage. Singing and playing with a band and everything, so वो होगी second most unforgettable memory. Seema Tahir Khan is a CEO of Airwaves Media with a transformative vision for the media industry, believing that channels should enlighten, educate, empower, and then entertain. She demonstrates it in her work as her latest drama, More Muharram, focuses on the impact of climate change in Cholistan. She has directed some of the most famous dramas in Pakistan, including Mohabbat Ho Gayi Tumse and Main Sitara. As a visionary who has the ability to go against the grain, her greatest achievement is to resist the temptation of sensationalist media while ensuring her channel's success in the competitive industry. Seema Tahir Khan is a meticulous CEO as well as a wonderful mom. You're stepping out into a fast-changing world, but you're well equipped. You have the knowledge given to you by your university. You have the ethics and the code of conduct given to you by your teachers, and values and principles that have come from your parents. You will find it complex, challenging, and situations very difficult because the world order has been destroyed and this climate is facing a crisis. So with determination, passion and clarity of thoughts, with confidence and conviction, you can face anything. The world expects you to bring about a change. As you step out, you will find warmth and hospitality. You will be welcomed by some and shunned by others. You will face adversities and difficulties, but that should not deter you. You will acquire wisdom. You will acquire a new skill set. You will learn from the experiences of life. I wish you all the best.
Haji Rafiq Pardesi is a leading tycoon in the real estate sector, with his business spread across different countries of the world and associations with the likes of Swiss Business Council and China Business Council. Haji Saab is a visionary whose business is based on values of good intentions, integrity, and ingenuity. As a true philanthropist and social reformist, he is involved in several endeavors like promotion of Islamic art and culture, bridging traditional and modern educational paradigms, provision of health, education, and social protection services for the most marginalized, and most importantly, advocating the right to self-determination of occupied Jammu and Kashmir as chairman of the World Kashmir Forum, among other services. मेरी हर बच्चे से यही गुजारिश होगी कि आप जिस तरह तालीम तो हासिल कर रहे हो, इसी तरह थोड़ा थोड़ा काम अपने मुल्क के लिए भी किया करो, क्योंकि जब तक एजुकेशन नहीं होगा वो कौम तरक्की नहीं कर सकती। एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मैं भी अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने बच्चों को भी यही सिखाता हूँ, जब भी काम करो फोकस होकर काम करो। फोकस होकर काम करोगे तो काम तुम्हारे कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो इंसानियत है। एक मरतबा अच्छे इंसान बन जाओगे ना, आपको ज़िंदगी में मज़ा आएगा, आपका दिल आपका दिमाग सुकून से रहेगा और अपनी ज़िंदगी भी आसान होगी और औरों की ज़िंदगी भी आसान होगी। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इतना नवाजा है कि इसको अक्सर लोग समझ नहीं पाते। अगर आप मैप के ऊपर देखो तो पाकिस्तान जितना खूबसूरत मुल्क कोई पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। आज आप खुद देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर हम लोग खुद इतनी मुश्किलों में, तकलीफ़ों में, सब चीज़ों में हैं। तो जो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते वो शायद कोई कनाडा चला जाता है, कोई ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। अब बहुत से लोग दुबई जा रहे हैं, बहुत से लोग मलेशिया जा रहे हैं, बहुत से लोग तुर्की जा रहे हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आता मैं अपनी माँ को छोड़ के कहाँ जाऊँ। ये मेरा दिल है, ये मेरी माँ है। पाकिस्तान के लिए तरक्की की तरफ जाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, सिर्फ एक अच्छे विजन की, अच्छी एक लीडरशिप की ज़रूरत है। देखिए, इंडस हॉस्पिटल की जो बुनियाद है ना वो यकीन के ऊपर है और इसके पीछे एक तारीख़ है जो कि डा मेडिकल कॉलेज से शुरू हुई थी, पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन से। फिर वहाँ पर जब एक ब्लड बैंक बना, फर्स्ट वॉलंटरी ब्लड बैंक बना, फिर कैजुअल्टी बनी, जो बॉम्ब ब्लास्ट कराची में हुआ जो 1986 में हुआ था जिसमें सैकड़ों लोग मरे थे। तो उसके बाद ये ख्वाब उस वक्त देखा गया जो शर्मिंदा ताबीर 2007 में हुआ। लोगों को यकीन नहीं था कि ये होगा और जब वो ये कहते थे कि इसके लिए मेहनत बहुत की गई जो फंड रेजिंग के ऊपर, लेकिन मेजर जो स्ट्रगल थी वो अच्छे लोगों को, ह्यूमन रिसोर्स को जो चाहिए था वो मिलने में तकलीफ ज़्यादा हुई थी। बारी साहब इज़ अ वेरी हम्बल पर्सन एंड ही हैज़ ऑलवेज ट्राइड टू डू गुड for the city and for the country. Bari Saab comes from a distinguished career which he has served several patients over the years, so he is a real doctor. जब कार्डियक सर्जन बन गए तो उनकी पोस्टिंग सिविल हॉस्पिटल में हुई जहाँ पे वार्ड नहीं था, सिर्फ कोई कार्डियक सर्जरी का वार्ड ही नहीं था। इन्होंने अपना क्लिनिक शुरू किया। क्लिनिक में वो रोज़ मुझे आके कहानियाँ सुनाते थे कि आज मेरे पास मरीज़ आए और वो बहुत गरीब लग रहे थे और मैं उनसे फ़ीस कैसे मांगता। इन 1990s उस वक्त कार्डियक सर्जरी की, ओपन हार्ट सर्जरी की फ़ीस थी तकरीबन 1.5 लाख रुपए, तो जिसमें कि सर्जन की तकरीबन 80,000 थे। तो वो कहते थे उस आदमी के पास तो मेरे पास फ़ीस के भी देने के पैसे नहीं हैं, तो मैं उससे सर्जरी की फ़ीस कैसे लूँ। तो मैं उसको कहता हूँ कि जी आप मेरे पास सिविल हॉस्पिटल आएँ। मैं उस वक्त उनको कहती थी कि भाई लोग तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अपने क्लिनिक पे पेशेंट्स लाते हैं, आप नेशनल मेडिकल में अपने क्लिनिक से पेशेंट वापस हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं भाई मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। एंड ऑफ कोर्स आहिस्ता आहिस्ता उनका क्लिनिक उन्होंने बंद कर दिया एंड ही फुल टाइम शिफ्टेड टू कार्डियक सर्जरी सिविल हॉस्पिटल कराची। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके अपने वालिदैन उनका रोल मॉडल होते हैं, लेकिन मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे वालिद ऐसे एक इंसान है जो पूरी मुल्क के, बल्कि कहना चाहिए पूरी इंसानियत के लिए रोल मॉडल है, और इस चीज़ के लिए मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ वो काम है। मुझे बड़ी खुशी है कि आज उनको इस एजाज़ से नवाजा जा रहा है।
इसलिए मैं उनके लिए चंद अल्फाज कहना चाहूँगा। अपने सर्जरी के पेशे और फलाई काम की मसरूफियात के साथ साथ उन्होंने हम सबको घर पे मुकम्मल वक्त दिया। इसी वजह से बचपन से वो मेरे रोल मॉडल रहे हैं। मेडिसिन में एंट्री मैंने उन्हीं की वजह से ली थी। मुझे उम्मीद है कि मैं उनके नक्शे कदम पर चल के उनका और मुल्क का नाम रोशन करूँगा। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी वालदा के साथ साथ मेरे रोल मॉडल ने मेरी परवरिश की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं उनके नक्शे कदम पर चल सकूँ। What is important to recognize is that his reach is not just confined to Karachi, but it's in different cities of Pakistan. Finances is very critical in this. It is just the whole operation and all the facilities for the poor people are being run based on the philanthropic contributions that he has been mobilized. देखिए, इंडेक्स हॉस्पिटल में जो मुनफरिद चीज़ें हैं वो ये एक टोटली पेपरलेस हॉस्पिटल, टोटली कैशलेस हॉस्पिटल है, और ये क्वालिटी केयर प्रोवाइड करता है और फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। एक दफ़ा मैंने डॉक्टर बारी से पूछा, मैंने कहा कि अगर मुझे ऐसा महसूस होता है कि अपनी फैमिली और इंडस में से किसी को चुनना पड़े, तो मुझे तो 100% यकीन है कि आप इंडस को चुनेंगे, तो क्या आपको कभी अपने बच्चों का, फैमिली का ख्याल नहीं आता? तो उन्होंने जवाब दिया वो मेरे लिए काफ़ी था। उन्होंने कहा कि देखो, अल्लाह ने जब खुद वादा किया है कि अगर मैं अल्लाह के बंदों का ख्याल रखूँगा तो मेरे जितनी भी जिम्मेदारी हैं उसका ख्याल अल्लाह ने रखना है, तो जो वो करेगा वो मेरे से बदरजा पता नहीं कितने गुना बेहतर है। जो इंडस हॉस्पिटल की स्ट्रेंथ है ना, वो यकीन है, और यकीन यहाँ से अल्लाह के ऊपर। और हम समझते हैं कि आज जहाँ हम पहुँचे हैं वो मेरी वजह से नहीं, या हमारे किसी और की वजह से नहीं, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी और हमारा जो पुख्ता यकीन है इसके ऊपर। आप इंडस हॉस्पिटल से किसी से भी पूछ लें कि इंडस हॉस्पिटल चलता कैसा है, वो यही कहेगा कि अल्लाह चलाता है। आप नौजवानों के अंदर जो है ना एक विजनरी लीडर्स पैदा करें जो कि ख्वाब देख सकें, और ख्वाब जो है ना बड़े ख्वाब देखें। हम समझते हैं कि ख्वाब वो होते हैं जो हम सोते हुए देखते हैं, असल तो ख्वाब वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। At the Department of Social Sciences and Humanities, we teach you social and soft skills that help you land in your dream job. I believe teaching is an act of optimism. Greenwich students will have a positive mindset and a great understanding of field work. Style is an instant language, and we will teach you this language in our fashion program. My goal here is to teach differently, something that makes students think logically and critically. Education here at Greenwich breeds confidence. Our students make success stories. Gain the intellectual tools and practical skills needed to navigate a dynamic society, economy, and culture. Under a department, students will gain a skill set which will make them different. The market is competitive. Our students will stand out when it comes to skills. Here we believe in our students, and we cater them to be reflective practitioners, critical thinkers, and above all, a good citizen of the country. At Greenwich University, you will be optimistic, Creative, self-assured, skilled, inquisitive, responsible, confident. Dr. Sardar Yasin Malik is a walking testimony of excellence built on sheer hard work. He is Chairman Hilton Pharma, one of the leading pharmaceutical companies in Pakistan, having started his journey from do paise. His vision for social reforms has translated into several contributions in education and health, cultural development projects, voluntary services, with Pakistan Red Crescent Society in natural disasters, income support and donation projects for the poorest, and solar energy program in rural Sindh and Punjab, among other eminent philanthropic services. He was also awarded the highest taxpayer award by the government of Pakistan. He has been awarded the Civil Award Sitara-e-Imtiyaz and the highest civil award Hilal-e-Imtiyaz for his services. In 2015, Greenwich University conferred an honoris causa degree upon him
in recognition of his services for humanity. मेरा बहुत सीरियस मैसेज है कि अपने वालिदैन अपने असातिज़ा के साथ में बहुत अच्छा बर्ताव करें और मेहनत से काम करें। तरक्की की कोई लिमिट नहीं है। मैं आई टू स्टडी अंडर द स्ट्रीट लाइट, मुझे कहते हुए कोई शर्म नहीं आती। अल्लाह ताला ने बहुत बरकत दी और मेहनत से काम किया और दीन के लिए भी काम किया। तो ये नहीं कि दीन को आम जिंदगी से जुदा नहीं करना चाहिए। Welcome to Greenwich University, the place where you learn for a brighter and better future. It is a modern, purpose-built campus equipped with all relevant support facilities. The entire building is effectively designed, such as modern lobby, reception area, and a perfectly academic ambience, such as high-tech computer labs, 24/7 library access, new age classrooms, technically equipped media lab with web TV and web radio control room, sports and indoor activities are an essential part of our campus. And our outdoor sports facilities also keep students engaged after their classes. Greenwich University does not only believe on disseminating knowledge, but also on creating knowledge. Thus, the Research and Development Center is an essential part of the university and consists of various journals and research papers. The university offers a unique global program. This program gives an opportunity to study for a semester or more at our partner universities, either in Australia, UK, Canada, China, Austria, Russia, or Malaysia. Greenwich believes on making students explore beyond the limits. Therefore, our campus life includes international tours where our delegates become participants of parliaments across the globe. We engage our students in socio-cultural programs such as those in China, France, Italy, Japan, Netherlands, Thailand, Turkey, UK, and much more. Society events play an important role in keeping a balance between academics and co-curriculars.
The university has more than 5,000 alumni excelling the corporate sector around the globe. Their roles are highly definitive in business and corporate world. They have been making success stories in Pakistan and abroad. And then our convocation. This day is made precious, grand and memorable for all those who are a part of university and will stay with us as Greenwich family forever. So come, learn with us. Join hands in making the future of this country brighter and better through quality education, which matches international standards. Let's create success stories together at Greenwich University. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो तालीम है वो सिर्फ किताबों से पढ़ने से या डिग्री लेने से हासिल नहीं होती। डिग्री तो आपको मिल जाती है, लेकिन असल जो काम है और जिससे आपको सक्सेस मिलती है वो उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो हमने अगर 200 रुपये महीने में पढ़कर ऐसी तालीम हासिल की और कुछ ऐसा इल्म हासिल किया कि जो मुल्क के काम आया, तो यकीन कीजिए कि जो आप लाखों रुपए खर्च करते हैं तो फिर उसका भी कुछ सिला दीजिए अपने वालिदैन को भी और मुल्क को भी। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की शख्सियत के लिए ट्रिब्यूट लफ्ज़ बहुत छोटा है। एक अजीम शख्सियत जिसने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर सिक्योरिटी शील्ड फराहम की और तारीख रकम कर दी। बुनियादी तौर पे वो इंसाफ, अमन और आम भलाई के लिए पुरअज़्म इंसान थे। कई बार बहस के दौरान वो ये दलील देते थे कि जौहरी हथियार अमन के लिए है, ना कि जंग के लिए। His consideration for people around him, I think he was kind to almost everybody who came in contact with him. I was not the only beneficiary of his affection. Whenever I would write anything, he would be the first one to comment in the morning through an email or through a WhatsApp message, or if I were to provide him with any book, he would always write a review for it without asking for it. What a great man he was. ये वो लोग हैं जो commoditize नहीं हो सके। ये वैल्यू बेस्ड लोग थे। ये वही लोग हैं जिनके बारे में फैज साहब ने कहा कि हम खस्ता तनों से मोहतसिबो क्या माल मनाल का पूछते हो। जो उम्र में हमने भर पाया सब सामने लाए देते हैं। दामन में है मुश्ते खाक जिगर, सागर में है हसरत खूने में। लो हमने दामन झाड़ दिया, लो जाम उल्टाए देते हैं। कदीर खान साहब से चूँकि मुख्तलिफ हवालों से मेरी उनसे क्योंकि दिल की बातें होती थी और वो बातें जो वो किसी से नहीं कर सकते थे वो मुझसे होती थी। कदीर खान को मैंने जो देखा, मैंने अपनी ज़िंदगी में मैं कसम खाता हूँ कि मैंने इससे बड़ा इंसान नहीं देखा। मुश्किल हालात में उन्होंने तालीम पाई। लोग तो वाक़ तो मतलब ये कि पिदरमन सुल्तान बूत वरना अक्सर बेशतर कोई आदमी गुर्बत से ऊपर चला जाता है तो वो ऊपर ही ऊपर रहता है। वो कभी ये नहीं कहते, बोले मैं भी बड़े मुश्किल वक्त से गुजरा हूँ और ये बड़े आदमी की निशानी है। ये 2-3 अशार में आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, यही उनकी ज़िंदगी जो मैंने समझी। मंजिल इश्क पर तन्हा पहुँचे कोई तमन्ना साध न थी, थक थक कर इस राह में आखिर हर एक साथी छूट गया। फ़ानी हम तो जीते जी वो मैयत हैं बेगोर कफन, गुर्बत जिसको रास ना आई और वतन भी छूट गया। डॉक्टर साहब जैसी शख्सियत ऐसी थी कि इसको भूलना बहुत मुश्किल है। हम लोग जो इनके साथी थे, बल्कि सही मानों में कहूँ हम इनके नौकर थे। डॉक्टर साहब एक अजीम आदमी थे। ऐसा आइटम बम बना के दिया कि आज हम लोग जो आज सुकून का सांस ले रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा एहसान डॉक्टर साहब का है। अल्लाह ताला डॉक्टर साहब के दर्जात को बुलंदी अता फरमाए। न पूछो कैसी मुशफ़िक़ ज़ात रुखसत हो गई हमसे, बताएं हाल क्या है गमज़दा दिल की गिरानी का। My
name is Ali Abbas Mirza, and I am associated with, I'm a proud alumni of Greenwich University when it was Southeastern University since 1997. I've been working with various multinational companies, brands. The message I want to give the students is that Greenwich is not just another educational institution. जितने भी लोग यहाँ पे आप हैं, alumni हैं, they are very successful people, ठीक है ना? I want you to come to Greenwich, visit Greenwich, see Greenwich, and सिर्फ बिल्डिंग साइज़ वगैरह ना देखें, टीचर्स की क्वालिटी देखें, alumni को देखें वो कहाँ पर है। और I am very proud to be associated. जो ज़िंदगी के गोल्डन ईयर्स हैं एजुकेशन के, वो मैंने यहाँ से हासिल किए। And I welcome you all. Please do visit Greenwich University. Thank you. Assalamu alaikum everyone, I'm Omar Khan and I'm the mentor of the Sports Society here at Greenwich University. We have all the sporting facilities on campus that includes cricket, football, basketball, badminton, table tennis, snooker, FIFA and also an in-house gym for the fitness freaks. So participate, be active, be healthy. See you soon and welcome to Greenwich University. पाकिस्तान के वजूद का पसे मंज़र काबिल फ़ख्र है। इस मुल्क के जवानों की कुर्बानियों की दास्तान ये बताती है कि ज़िंदगी से आगे और अपनी ज़ात से बढ़ के सोचने वालों की कमी नहीं। हमारे शुहदा मेजर अजीज़ भट्टी, कैप्टन सरवर, राशिद मिन्हास और बेशुमार ऐसे नाम जिन्होंने ये साबित कर दिया कि चाहे दुश्मन कितना ही ताकतवर हो, कितना ही ज़ोरावर हो, लेकिन पीछे नहीं हटा सकता, फिर चाहे जान ही क्यों ना देनी पड़े। कैप्टन फरहान अली भी ऐसे ही मुल्क पे जान छिड़कने वाला एक सिपाही था। जब भी घर आता तो या स्कूल जब जाता था तो जितने प्यार मैं उसके हाथ पे या आँखों पे देती थी उतने ही मुझे वो रिटर्न करता था ना, कभी वो अपना हिसाब किताब नहीं छोड़ता था। बहुत मेरे नज़दीक था और दोनों बच्चों से ज़्यादा मतलब इस बात का फख्र है कि उसकी वजह से हमारा नाम भी इस दुनिया में कायम रहेगा। अली और मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी और बहुत स्ट्रॉन्ग थी। मेरा जो बड़ा भाई था वो बचपन में ही मिलिट्री कॉलेज जिलन चला गया और जो छोटा वाला भाई था वो हमेशा अली जो था वो मेरे साथ ही रहता था। लोग हर बात एक दूसरे से शेयर करते थे, मार भी साथ में खाते थे, जूते भी साथ में खाते थे।
जब ये वापस आया तो मैं इसको एयरपोर्ट पे लेने के लिए गई तो इसने जो ही बाहर निकला तो उसने अपने हाथ आगे करके कहता है कि मैं आखिरी दफ़ा आपको मिलने के लिए आया हूँ, तो मैंने शहीद हो जाना ना। तो बस लास्ट में की बात हुई थी, बस उसने कहा था कि मामा से मेरी बात करा दो और मैं बहुत जल्दी में हूँ, फिर से फ़ोन बंद कर दे, फिर उसके बाद मैं इससे कभी बात करूँ। लास्ट उसका जो मैसेज मेरे पास अभी भी रिकॉर्डेड है, मैंने रखा हुआ, वो ये था कि पापा वी आर इन एक्शन, प्रे फॉर अल्लाहू अकबर। मैंने उसका लास्ट टाइम देखा था, वो ये वाली शर्ट थी सुपरमैन वाली, और इस शर्ट के साथ मेरा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो चुकी है, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी मेरे साथ है। मैंने माशाल्लाह उसको बड़े अच्छे कपड़े लेके दिए। बक्सा वापस आया तो मैंने जब खोला तो उसने उसको टच भी नहीं किया, तो इसी तरह मैंने जिस तरह रखी थी। और शहीद की माँ जो है वो 2 दफ़ा मरती है और जिसकी एक दफ़ा जब उसकी डेड बॉडी आई तो मुझे बहुत हुआ। उसके बाद जब उसका सामान आया, क्योंकि फौजी का सामान इतना होता है कि पूरा एक घर की तरह मेरे बच्चे का सामान था, उसको देख के मैं, क्योंकि मैंने उसका सारा सामान खुद पैक किया था, मैंने रखा। ये नई यूनिफॉर्म बिल्कुल बता के, अच्छे बूट शूट डाल के, वेरी फ्रेश लगता था कि शायद उसको पता था और वो तैयारी करके गया था। और वही यूनिफॉर्म शाम जो है उसका वो लास्ट था जिसको शहीद हो। जब भी अली से बात होती थी तो मैं हमेशा अली से एक बात कहती थी कि अली हम सब तुम्हारे लिए बहुत दुआ करते हैं कि अल्लाह ने तुम्हें सही सलामत वापस लेकर आया और सारा कुछ। तो अली मुझे हमेशा एक जवाब देता था कि ज़ारा मेरे लिए दुआ मत करो, मेरी पूरी यूनिट के लिए दुआ करो कि हम सब लोग जो है ना कामयाबी पाकर वापस आए। अली अपनी यूनिट से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसके हर फोल्डर पे, हर टॉय पे, हर जगह पे ना उसकी यूनिट का नाम लिखा हुआ था। पर मुझे लगता है कि मेरे दोनों बेटे मेरे पास हैं, मैं कभी रोऊं या याद करूं तो वो ऐसे लगता है कि मेरे दाएं बाएं भाग के आता है, मुझे पकड़ता है, कहता है कि नहीं अम्मी क्या हो गया ना, मैं आपके पास हूँ ना, आपके पास हूँ, आप क्यों रो रही हैं। तो इसलिए फिर मैं इतना सुकून में हो जाती हूँ कि कभी मैं उसको, मुझे लगता है कि वो मेरे आस पास है, कहीं वो दूर नहीं गया। तो शहीद हमेशा जिंदा है हमारे पास। वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर सन। रिग्रेट्स नहीं है, ना ही मेरी बीवी को रिग्रेट्स है, ना मेरी बेटी को। और बेटा मेरा अभी भी माशाल्लाह वो जो बड़े वाला है, ही इज़ मेजर, ही इज़ नाउ इन पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, प्लेटून कमांडर है। As the COVID-19 pandemic unfolds and its far-reaching effects, we have realized that in all educational institutions, including Greenwich University, we are helping students manage and try and overcome the little problems and stresses that they have faced. At Greenwich University, we have counseling sessions for students who are going through any form of stress. Now, stress is something that happens to be quite normal in situations where there is a change, and a change which is as big as what COVID-19 has given the world today. So here we are managing those mental, those personal, those emotional problems that many of us might be going through. We have an isolation cell in which, if there is any student at any time who falls ill, may take refuge. We have counseling sessions on different occasions, and I myself, being a counselor for students who can come up, take an appointment, meet with me, and we shall discuss. There are certain personal problems that students might have. There might be certain emotional stresses that you might be going through. There might be academic related situations that might affect your well-being. So please feel free to come up
and make sure you make the most of it. Now, these mental problems that we are going through today are not only at a student level or an academic level, it also transpires at home. So if you bring emotional stresses from home, we don't mind talking about it. We will try and iron it out to the best of our abilities. We have group sessions and we also have personal sessions. Learn to acquaint yourself and feel free. But the only and big important point is to remember that it is quite normal to go through a situation which is slightly abnormal. That might be a raised heart rate. Your heart might beat quite fast at times. You might have a bad stomach. Yes, you might have that. So it's quite normal. You might tire. If you tire, that's quite all right. You might be emotionally taken aback. Okay, that's fine. Here we are to handle that. So please feel free to come up and make your appointment and talk with us. Because at Greenwich University, we are well equipped to handling student problems over the years that we've been handling students, which is 33 years of Greenwich University in the market today. So welcome to Greenwich University and make sure we'll make you as comfortable as possible. Thank you so much. Hi, my name is Ali Afandi. I am an alumni of Greenwich, and I work for an American firm by the name of Veruzzi. Greenwich is a great place to come and study. Assalamu alaikum everybody, my name is Awais Agha and I'm the mentor for the Entrepreneurship Society at Greenwich University. I would like to welcome you all to the university, and in this society we will have a series of events starting with discussion sessions in which we will ask all of you to come in and pitch your business ideas, and we are going to discuss their viabilities. Apart from that, we are going to have a series of guest speaking sessions in which we will invite budding entrepreneurs to share their experiences with you. And finally, our main event is going to be a competition where we will invite you all to come up with business ideas and pitch them in front of a series of investors. The winner will either receive a prize or get a chance to incubate their business. I'm looking forward to you all to this society. कुछ ऐसे थे जिनकी क्लास में जाने से आपको डर लगता था, राइट? बट ये था कि सिखाने वाले भी वो सबसे ज़्यादा होते थे. सईद साहब को पता होता था कि ये शैतान वाले बच्चे हैं, तो उनको सिक्योरिटी में डाल देते थे सईद साहब. अच्छा, ना खुद करेंगे ना किसी को करने देंगे. अब एकदम से अदनान साहब आपके लिस्ट नंबर ऑफ लिस्ट आ गई होगी यार, किसकी बात की जाए. अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रोहेल इंतखाब और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कॉफ़ी विद अलमनाई. और हर एपिसोड में आपकी मुलाकात डिफरेंट अलमनाई से करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो अब क्या कुछ कर रहे हैं और उनकी रिकॉल करते हैं मेमोरीज को, जो कुछ उन्होंने ग्रीनविच यूनिवर्सिटी में किया. आज भी हमें बहुत ज़बरदस्त अलमनाई ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बड़ी ज़बरदस्त बातें करेंगे. तो हम वेलकम करेंगे अदनान सैयद को, हेड ऑफ ट्रांजैक्शन बैंकिंग देख रहे हैं और उसके अलावा भी बहुत कुछ वो कर रहे हैं. उन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं. अदनान साहब, आपको वेलकम करेंगे. कैसे हैं आप? Thank you very much. Yeah, it's a pleasure being here. So, Mr. अदनान सैयद, ग्रीनविच की बातें तो हमने करनी है. पहले बताएं कि who is अदनान सैयद, प्रोफेशनली क्या कर रहे हैं, कौन सा बिजनेस है, कहाँ पर जॉब कर रहे हैं? यार बस इफ आप अदनान सैयद को प्रोफेशनली देखें तो I've been in banking for the last 18-19 years plus. कंज्यूमर बैंकिंग से शुरू किया, ब्रांच बैंकिंग, फिर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, और फिर since the last 10 years I'm into financial inclusion. Basically branches banking वाला जो एम्बिट है वो मैंने टेक ओवर किया है, एंड उसको से सीखने को भी बहुत मिला है. बिकॉज
आप देखें कि 2011-12 के बाद इजी पैसा और जैज़ कैश आए मार्केट में, एंड एवरी बैंक वांटेड टू गो टूवर्ड्स दी इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र. फिर उसके ऊपर स्टेट बैंक की रेगुलेशंस वगैरह, बट आई एम वेरी फॉर्चुनेट इनफ टू हैव लॉन्च्ड ब्रांचलेस बैंकिंग इन जीएस बैंक, एंड देन विद माय प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक. माशाल्लाह, अब पूरा कॉर्पोरेट और बैंकिंग हमारा जो ये अहम स्टेट है उस पर आप काम करें. अच्छा, ये हुआ कैसे था, इस पर बात करेंगे बाद में. कि सबसे पहले मुझे बताएं कि टेन्योर ऑफ ग्रीनिच यूनिवर्सिटी आपका क्या रहा, कौन सा ईयर था, किस प्रोग्राम में आपने एनरोल किया? यार, आई जॉइंड ग्रीनिच इन मार्च ऑफ 91. रोल नंबर SB5 था. स्टिल यू रिमेंबर? माशाल्लाह. SB5 235 रोल नंबर था. हमने ज्वाइन किया था खड्डा मार्केट का जो हमारा कैंपस होता था उधर. अच्छा. एंड 2 सेमेस्टर्स के बाद हम इस दरख्शां वाले कैंपस पर आए. मुझे अच्छी तरह याद है जब दरख्शां वाले कैंपस पर आए थे तो इधर स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था, खिड़कियां नहीं लगी हुई थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी. तो हमने आई थिंक एक सेमेस्टर तो बगैर इलेक्ट्रिसिटी के पढ़ा और कोई फर्श नहीं था, सिर्फ मट्टी डली हुई थी. वो BBA किया माशाल्लाह से 94 जनवरी में BBA कर लिया. फिर 94 के एंड में मास्टर्स शुरू किया. 96 के अंदर मास्टर्स कंप्लीट कर लिया था. सो एज आई वुड से दैट एज हमारा जो बैच था, आई थिंक वी वर वन ऑफ द फाउंडिंग स्टोन्स ऑफ ग्रीनिच. एंड SCU का प्रोग्राम था उस वक्त, ना ज़ेबिस था, ना इकरा था, ना CBM था. सो IBA के बाद कोई ऑप्शन होता था लोगों के पास तो वो ग्रीनिच होता था. अदनान साहब बताएं कि उस वक्त के MBA में और इस वक्त के MBA में क्या फ़र्क है? 94-95 में जब आपने MBA का सिलसिला शुरू किया, एक लॉन्ग जर्नी है आपकी, और इस वक्त MBA हर कोई करने को तैयार है. तो आप अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएं, आपने कितना डिफरेंस देखा है MBA में? या देखो, MBA का डिफरेंस it basically depends on 2 major things: the institution that you do it from and the people who are imparting the knowledge to you. I feel that we in Greenwich at that time, part of Southeastern University, were very, very fortunate कि हमें the creme de la creme of professors मिले जिन्होंने हमें knowledge impart करी. कुछ ऐसे थे जिनकी क्लास में जाने से आपको डर लगता था, राइट? बट ये था कि सिखाने वाले भी वो सबसे ज़्यादा होते थे. और कुछ ऐसे प्रोफेसर थे जिनकी क्लास में आपको पता है आपने जाना है, रट्टा लगाना है और आपने पास हो जाना है. काम हो गया आपका. काम हो जाता है. बिल्कुल सही है. चलें इसी पर बात करते हैं. सो विच प्रोफेसर डू यू लाइक मोस्ट, कि आपको अब तक रिमेंबर हो कि यार इन्होंने मेरी पर्सनैलिटी को चेंज किया, या इनसे मैंने सीखा जो आज प्रोफेशनली मैं वो उसकी वजह से, उनकी सीखने की वजह से मैं वो डिलीवर कर रहा हूँ? आई थिंक ऑन टॉप ऑफ द माइंड एहसान दुरानी साहब मरहूम, ही इज़ वन, बिकॉज उनके मार्केटिंग कॉलेज थे. बिलाल रशीद दूसरे थे. एंड देन इफ़ आप लॉ की तरफ देखें तो अरशद तैयब अली, जिन्होंने में ठीक है सिर्फ 2 कोर्सेज पढ़ाए BBA और MBA में, बट ही ब्रॉट अस अ वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट ऑन लीगैलिटीज, जो कभी कभार है आज वी इवन आस्क आवर लीगल डिपार्टमेंट्स के यार ये चीज़ हो रही है, डोंट यू थिंक इट शुड बी डन दिस वे? दो आई एम नॉट अ लॉयर, बट एक वो चीज़ थी कि नॉलेज इस तरह. दुरानी साहब का ये था कि दुरानी साहब ने रट्टा नहीं लगवाया, प्रैक्टिकली दिमाग को इस्तेमाल करना सिखाया उस बंदे ने. सही कह रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट इट. अच्छा, विच प्रोफेसर डू यू डिडंट लाइक? इनसे बस था कि यार क्लास लेनी है इनकी, कभी कभी जो है वो बस गुस्सा भी आता था, बस क्यों पढ़ा रहे हैं, हमें कोई ऑप्शन क्यों नहीं है, हमने जाकर एकेडमिक्स वालों को तंग करना है, ये कोर्स का दूसरा टीचर दो हमें, ऐसा कौन सा प्रोफेसर? यार आई थिंक दैट प्रोफेसर वुड बी अकाउंट्स ऑफ फाइनेंस के राहत मुनीर साहब. अच्छा. अकाउंट्स 201 से लेके अकाउंट्स 501, 502, फाइनेंस 300 से लेके MBA के फाइनेंस तक राहत साहब ने एक ही चीज़ पढ़ाई, प्लस और माइनस 15-20%. और जो एग्ज़ाम में सवाल आता था जो वो प्रैक्टिकल कराते थे, जो प्रैक्टिकल एग्जाम में होता था या तो उसका हाफ वैल्यू आती थी एग्जाम में या उसकी डबल वैल्यू आती थी. तो जब आपने सोल्यूशन एक दफ़ा सीख लिया तो ऑल यू हैव टू सी कि अच्छा ये है डबल है, अच्छा ठीक है यार, तो आपको पता है कि आंसर इसका ये डबल अच्छा, ये टैक्टिक्स स्टूडेंट्स लगाते थे, हमने सीख ली थी, वी ब्रोक द कोड. एंड राहत साहब लाइक्ड कि जितना वजी कॉपीज होंगी वो उतना प्रेफर करेंगे. ठीक है. विच मोमेंट ऑफ GU यू स्टिल रिमेंबर, ये आपको याद आता है कि मैंने ऐसा किया था
तो उस पर ये रिएक्शन अगले का आया, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो स्टिल आपको रिमेंबर हो, आप हंसते हो उस पर? यार हमारी टैलेंट नाइट्स होती थी which was very nice. Everybody used to participate. And then जब हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते थे तो सईद साहब को पता होता था कि ये शैतान वाले बच्चे हैं, तो उनको सिक्योरिटी में डाल देते थे सईद साहब। अच्छा, ना खुद करेंगे ना किसी को करने देंगे। खुद सिक्योरिटी, वेरी नाइस स्ट्रेटजी, वेरी नाइस। अच्छा, कभी क्लास बंक की? हाँ, करी है। आपके नॉर्मल क्या टाइमिंग्स होती थी क्लास की? इवनिंग में होती थी या वीकेंड्स पे होती थी या डे में? यार उस ज़माने में तो पहली क्लास हमारी सुबह 9 बजे भी होती थी, एंड एट दैट टाइम आई यूज्ड टू लिव अ लिटिल फार अवे, सो और फिर अगली क्लास शाम को 6 से 9 होती थी, तो 9 से 12 की क्लास करने के बाद तो आप 5-6 घंटे आप फ्री घूम रहे होते थे, राइट? एंड देन एवरीबडी न्यू एवरीबडी। तो इधर दरख्शा मार्केट के अंदर एक कैफ़े होता था MTV करके, तो वहाँ बैठ के MTV देखते थे, फ्रेंच फ्राइज खाते थे। अच्छा, उस वक्त MTV बड़ा हिट था। जी रियली, वो टाइम, उस वक्त मेरे सैटेलाइट चैनल्स भी इतने नहीं थे। मुझे याद पड़ा 90s का दौर कि MTV, वो जो उधर से वो सारे शोज वगैरह जो आते थे उनका सारे म्यूजिक वीडियोस वगैरह सारे MTV पर आते थे। एंड देन वो एक स्पेसिफिक ग्रुप होता था कि ये इसका ग्रुप बैठा हुआ है, उसको ग्रुप। चलें, जब MTV से जुड़ी एक बात आपके सामने रखते हैं, तो उस दौरान कोई आपको पसंद आई या आपने सोचा कि इसके साथ आगे जाना चाहिए? कोई someone is very close to your heart? अबे आज एकदम से अदनान साहब आपके लिस्ट, नंबर ऑफ लिस्ट आ गई होगी यार, किसकी बात की जाए? 3-4 थी कॉलीग्स, फेलो स्टूडेंट्स थी, हैड अ क्रश ऑन देम एंड दैट्स अबाउट इट। मामू बन गए फिर? नाना नहीं, मामू की बात नहीं, मामू की बात नहीं। यू नो, realistically spoke to them, was bold enough to, you know, go up to them, ask them out, went out. But, you know, when things are not meant to be, they're not meant to be. It's not becoming a mamu वगैरह। जो भी लिखा हुआ होता है, they know best, right? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। चले जी, आगे बढ़ते हैं। अदनान साहब, if you will be a part of Greenwich University again, तो क्या सोचा है? आप PhD करेंगे या कभी पढ़ाएंगे या कोई सर्टिफिकेट लेकर आकर आप कुछ आइडियाज़ देंगे? किसी ना किसी तरीके से कोई एंगेजमेंट का सोचा है आपने कि GU को अब ऐसा एंगेजमेंट आपने पढ़ लिया, अब कुछ होता है ना कि यार GU ही बस एक वाबस्ता होते हो आप अपनी फीलिंग्स के, अपनी मेमोरीज को लेके, मुस्तकबिल में कुछ सोचा था कुछ एंगेजमेंट्स के हवाले से? यार पढ़ाई करना तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। इफ़ कभी कोई बैंक के विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कोई पेपर वगैरह आ जाता है और चीज़ पढ़नी होती है कंप्लाइंस की या ऑडिट की, या स्टेट बैंक कोई ट्रेनिंग मैंडेटरी कर देता है, तो बड़ा अजाब सा होता है, बिकॉज अब वो माइंडसेट रहा नहीं है कि बैठ के फोकस करके इंसान पढ़ सके जो ज़माने में था। तो आई डोंट थिंक सो PhD इज़ ऑन द टेबल। येस, आई वुड लव टू कम बैक एंड इम्पार्ट माई प्रैक्टिकल नॉलेज what I've gained through my little life experience to the students, because students मुझे अभी फील होता है, because मैं काफ़ी सारे इंटर्न्स का, जूनियर लेवल लोगों का इंटरव्यूज ले रहा होता हूँ, उनके दे नॉट क्लियर ऑन व्हाट दे वांट। जो रट्टा है वो उसी के ऊपर बेस्ड है। सही बात है, बिल्कुल। दे आर नॉट प्रैक्टिकल इनफ। ग्राउंड में क्या चल रहा है? I mean, आपने CV पर लिखा हुआ है कि जी मैं गोल्फ खेलता हूँ, मैंने कहा अच्छा क्या तुम्हारा आपको, मैंने पूछा कि आपका हैंडीकैप क्या है, राइट? आपके पास उसका जवाब नहीं है। सो दैट मीन्स व्हाट यू रिटन इन योर CV इज फॉल्स। बिल्कुल ऐसा ही। अब वो कन्वेंशन दौर थोड़ी है कि CV में आपने लिख लिया। अब CV भी आप देखें सर, पढ़ने से पहले लोग उसकी ड्राफ्टिंग को, उसकी फॉर्मेशन को देख के इंस्प्रेस। अच्छा, एवरी स्टूडेंट ब्रिंग्स अ डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ अ CV। इंटरेस्ट एंड हॉबीज, रीडिंग बुक्स, वॉचिंग मूवीज। अच्छा जी, व्हाट जॉनर ऑफ मूवीज यू लाइक? 1-2 मूवीज के नाम लेंगे, उसके बाद जैसे व्हाट बुक्स डू यू रीड? दे हैव नो क्लू ऑफ व्हाट दे आर सेइंग। हाँ, थोड़ा बहुत प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बाद उनके पास उसके जवाब होते हैं, बट वो भी रन ऑफ द मिल वाले जवाब होते हैं। तो यू नो, आई डोंट सी स्टूडेंट्स और यंग पीपल कमिंग टू द जॉब मार्केट ब्रिंगिंग इन वैल्यू। दैट इज वेयर ग्रीनिच हैज लॉस्ट आउट। चलें सर, ज़बरदस्त। अब हम बात करते हैं रैपिड फायर राउंड की। हमारा राउंड होता है, इसमें हम 1 वर्ड में जो है पर्सनालिटी को डिस्क्राइब आपको करना होगा, लेकिन वो पर्सनालिटी ग्रीनिच यूनिवर्सिटी का सीनियर स्टाफ है। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर कामरान के बारे में। वेरी हेल्पफुल। क्यों, मतलब कोई ऐसा मुझे रीज़न बताएं? कामरान
हमेशा जब एक कंपैशनेट साइड थी कामरान के अंदर. ही वुड अंडरस्टैंड. एग्जाम दे रहे हैं, कामरान 2 मिनट रुक जा यार, आखिरी लाइन लिख रहा हूँ. तो ही वुड गिव यू दैट एक्स्ट्रा मिनट और सो, राइट? Some of the other invigilators will not. सर एहतशाम के बारे में आप क्या कहेंगे? सख्त. अभी तो हमें एहतशाम साहब बिल्कुल वैसे लगते हैं, बस हमारे ज़माने में काफ़ी सख्त है हमारे साथ. जमील साहब again very helpful, very compassionate. All right, Sir Munir. Sir, I think Sir Munir, hats off to the gentleman. I've known him for the last 20 odd years plus, and उससे ज़्यादा नफीस इंसान yes, I have not come across. You are absolutely right, sir. And the VC, मैम सीमा मुगल. हाँ, आप सीमा मुगल मैडम कहते हैं, हम सीमा आपा भी कहते हैं, because सीमा I think is the backbone of this institution, has been and will be, and she knew everybody's parents by name. मुझे याद है जब मेरी वालदा मरहूमा आती थी कभी कभार सीमा से मिलने, तो सीमा वॉज ऑलवेज वेरी कंपैशनेट, अंडरस्टैंडिंग विद माई मदर. बहुत अच्छी बात है ये. सईद मुगल के बारे में आप क्या कहेंगे? अ वेरी लविंग पर्सन, अ वेरी लविंग पर्सन, एंड अगेन डिसिप्लिन की साइड के ऊपर स्ट्रेट एज एन एरो. सो द लास्ट अबाउट द होल ग्रीनिच यूनिवर्सिटी की स्ट्रेंथ क्या समझते हैं, इसकी पावर क्या है? भाई ग्रीनिच यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी पार जो है, आई थिंक इज, इफ हम मेरे ज़माने की टाइम कर रहे हैं या आप अभी की बात कर रहे हैं? ओवरऑल आप जो समझते हैं, जो माशाल्लाह से जो जर्नी हम लेके चल रहे हैं आगे, तो इसके पीछे कुछ देर यार आई थिंक ग्रीनिच हैज़ लॉस्ट आउट इन द रैट रेस. ग्रीनिच की फैकल्टी आई डोंट थिंक सो अब उस पार की है जो हमारे ज़माने में होती थी. सम ऑफ द गुड टीचर्स हैव लेफ्ट, एंड अफसोस ये है कि उनको रिटेन नहीं किया गया, राइट? सीबीएम ने काफ़ी टीचर्स हमारे तोड़े, इकरा ने तोड़े, ज़ैबस ने तोड़े. वी कुड हैव मेड दिस इंस्टीट्यूशन सेकंड टू नन. ठीक है, IBA लम्स है अपनी जगह, बट ग्रीनिच के वो जो थोड़ा सा जो एक डाउन ट्रेंड आया, वो आया इसी वजह से कि अच्छे अच्छे टीचर्स छोड़ के चले गए. एंड देन जब अच्छे टीचर्स चले गए तो अच्छे स्टूडेंट्स नहीं आएंगे. जब अच्छे स्टूडेंट्स नहीं आएंगे तो फिर आउटपुट भी आपका उसी लेवल का होगा. थैंक यू सो मच अदनान साहब, आपने मसरूफियात में से हमारे लिए वक्त निकाला. एक बार फिर मेमोरीज को जो है हम बना रहे हैं, ये आप एक शील्ड दे रहे हैं, तोहफा हमारी तरफ से, ताकि हमारे प्रोग्राम में आप आए हैं, और ये आपको ग्रीनिच यूनिवर्सिटी की तरफ से एक हम ये शील्ड दे रहे हैं. थैंक यू वेरी मच. और ये एक आपके लिए गिफ्ट बैग है. हम उम्मीद करते हैं अदनान साहब आप दोबारा वक्त निकालेंगे हमारे लिए और आपसे आके इसी तरह की मज़ेदार बातें करेंगे. उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी ये सेशन मज़े का लगा होगा. और 94-95 की बातें हमने की हैं, उस वक्त हम तो छोटे हुआ करते थे, लेकिन हमें पता है वो जो MTV वाली बात अदनान साहब ने की है, मज़ा आ गया सुनकर. वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए. हमारा यूट्यूब पे भी चैनल है ग्रीनिच यूनिवर्सिटी, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिए. थैंक यू सो मच.
Our inspiration will be the golden principles of the Holy Prophet, peace be upon him. And I know that with your support and cooperation, I can look forward to the day when Pakistan becomes one of the greatest nations of the world. हुसूले जाह की खातिर नकज़ बिज़र के लिए ये मक्तबा है मिल्लत के हर बशर के लिए। सुबह की पहली किरण की तरह ग्रीनिच यूनिवर्सिटी में सबसे पहले दाखिल होने वाले शख्स, जो कि इस वक्त 60 की दिहाई में अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए अपने इरादों में मुस्तहकम और मजबूत, जहन में इल्म की दुनिया लिए ग्रीनिच यूनिवर्सिटी में अपनी खिदमात खुश असलूबी से अंजाम देने वाले डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुल कादिर मुगल, जिनको किसी तारुफ की जरूरत नहीं, वो अपने आप में एक मिसाल हैं। डॉक्टर ए.के. मुगल ने अपनी जिंदगी में आई मुश्किलों का डट कर मुकाबला किया और हमेशा पाकिस्तान में तालीम की सुबह को तरजीह दी और हमतन इस तगदो में रहे कि मुल्क कौम के बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो, और उनकी इन्हीं खिदमात के सिले में मिलने वाला सितारा इम्तियाज एक जीता जागता सबूत है। You know, my father was primary teacher and my elder brother was also primary teacher. And basically I wanted to be an engineer, but I ended up with agriculture engineering, and then I got masters in agriculture engineering from University of Sindh, and then I got a scholarship for doing masters at American University Beirut. Then I decided that I will be in education. The major reform, which was when I was chairman of University Grants Commission, a task force for higher education was constituted by the government of Pakistan, and Babar Ali and Mr. Qasim Lakha, co-chairman of that task force. I was one of the members, and we worked round a year to bring reforms in higher education, and the result was that Higher Education Commission was established. I believe in hard working. I believe in hard working and sincerity and honesty. I was not intelligent. I was hard working. मतलब कि बहुत ही हार्ड वर्किंग है और ये बहुत इनकी अपनी मेहनत है, तो he deserve it. और हाँ, इसीलिए इनकी है ये हाईएस्ट अचीवमेंट है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि और आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। I've struggled to find words, powerful words that would accurately describe his presence in my life and his value to the educational system of Pakistan. Growing up in Pakistan, we always had to write that one essay, My Father. It was always a positive and an objective description of a person, which I doubt that an 8-year-old will ever understand. I am what I am because of my father. I am where I am because of his methodical fatherly practice and an academic leader. May Allah bless him with a long and healthy life. And thank you, Greenwich, for recognizing his accomplishments. I'm really proud of Baba for receiving the Presidential Award of Sitara Imtiaz. I think it is well deserved, for I have seen how hard he has worked towards contributing to the cause of education and his job. His life serves as a superb example for me and my siblings. Despite that, he has been a loving father to us and has always given his full and undivided attention. He has always taken interest in what goes on in our lives, be it my daily dose of stories from first grade and now ranting about grad school. He is a very down-to-earth person with not even an ounce of arrogance.
He mingles with children and adults alike, charming them with his engaging personality. I would like to start by congratulating him on this indeed a very big achievement. He has made all of us very proud. So thank you for making us proud. This is indeed a very big achievement. And I don't think so I would be able to do such an excellent mentorship of my children like you've done for us. So thanks a lot for every single thing. I mean, it means a lot to me. I also want to thank Greenwich University for arranging this function and giving respect to my family. Being the eldest son, this means a lot. I'm humbled by this gesture. I thank each one of you sitting over there. I encourage those people who are good in their subjects, in their discipline. They must come to education. तुझे हर नज़र पे उबूर दूँ, तुझे ज़िंदगी का शऊर दूँ. This is the purpose of art, and so is the purpose of GU Literary Society. What is art? Art is all about unsung songs of human emotions and stories. We all have stories, complicated stories, connected stories. The purpose of this society is to bring into light all those stories and unsung songs of literary giants and people we are not even aware of. I want to welcome all of you to Greenwich University and looking forward for your participation into the society. And I wish you a very memorable stay here. Greetings students, this is Shahir Hassan, student at Greenwich University, and today I'll be showing you guys around this university and we will be seeing some of the most important departments which you guys must be visiting now and then. So without wasting any further time, let's move in. Dear students, now we're here at the accounts department. So if you have any inquiry regarding the feature learn or the invoices, this is the place to come. And here you will meet the man behind this accounts department, Sir Muhammad Munir Khan, who is the manager coordination. Let's meet him. Welcome to all new batch Spring 2022 students. You always welcome for any assistance, any information to our department. So students, behind me, as you can see, this is one of the busiest departments at the start of the semester. Yes, this is the communication department. Here, if you want to add a major, if you want to change your major, if you want to add a course, if you want to drop a course, this is the place to go. Moreover, here you will meet Sir Rashid and his team. He will give you a minimum of 3 courses and maximum of 6 courses. Let's go and meet Sir Rashid. Usually, you're not permitted to go in, but we've taken special permission to make you guys meet Sir Rashid. So let's go in. So guys, this is the communication department, and here we will meet Sir Rashid. Assalamu alaikum. My name is Rashid from Office of the Registrar. Welcome to Greenwich University. Thank you very much. So students, this is the examination department. This department makes sure that you are here for your examination, for your clearance slip. So make sure that your dues are clear and make sure that you are not absent at more than 3 days on an entire course of the semester. Here, we will meet Sir Jamil, who is Assistant Controller Examination. Let's meet him. Hello, welcome to Greenwich. So if you want to inquire regarding your CGPA or your examination results or the Dean List certificate, this is the place to come. So students, as we have covered almost every valuable detail from your accounts invoices to your examination clearance to your communication department, if you want any further detail, you should acknowledge the document present over the portal. This is me, Shahir Hassan, signing off. I hope you have an amazing journey at Greenwich University. Founded
Founded in January 2015 as an email marketing firm, eMarketers have quickly expanded itself to become a digital marketing firm offering a one-window solution to its customers. Usman PEG creative thinking and leadership that eMarketers currently offers the market with 6 services which consist of email marketing, branded SMS marketing, social media marketing, search engine optimization, web development services and photography services to its client. Specializing in business-to-business marketing, we currently possess diverse portfolio of firms which consist of companies such as HP Paper Pakistan, where we are their official vendor for digital marketing Pakistan, NAFA Funds by National Bank of Pakistan, and also serving as official digital marketing partner of IEEP along with Badr Expo. Founded in January 2015 as an email marketing firm, eMarketers have quickly expanded itself to become a digital marketing firm offering a one-window solution to its customers. Usman PEG creative thinking and leadership that eMarketers currently offers the market with 6 services which consist of email marketing, branded SMS marketing, social media marketing, search engine optimization, web development services and photography services to its client. Specializing in business-to-business marketing, we currently possess diverse portfolio of firms which consist of companies such as HP Paper Pakistan, where we are their official vendor for digital marketing Pakistan, NAFA Funds by National Bank of Pakistan, and also serving as official digital marketing partner of IEEP along with Badr Expo. At Greenwich University, we have made the communication channel simple through our student portal. Enter your student ID and password. Click on Desk. You should change your password before moving forward. Upload your vaccination certificate on the portal. Your portal also has details such as orientation schedule, other important information such as academic calendar, information regarding registered courses is also just a click away. Don't forget to download your semester student ID card. Do keep a check on your attendance. Click on Class Schedule to see timings and teachers of your courses.
Go back to the desk to see options for blended learning. You must download your semester invoices from the portal. Keeping a track of your academic progress is easy. Check your grades through your student desk. You may also reach out to us using the desk. Send your requests, feedback, and complaints. Register online for the next semester. Information regarding SDC and societies and event invitations are present on your portal. For any queries regarding the portal, you may contact the IT department of Greenwich University. Senator Abdul Hasib Khan characterizes a dynamic personality, a diverse business acumen, and a great regard for philanthropy. He has served as a senator for the government of Pakistan between 2009 to 2015. He is the founder and chairman of Brooks Pharma Private Limited, sharing the international market in countries like Thailand, UAE, Philippines, Bangladesh, Vietnam, Tanzania, Congo, Ethiopia, and Nigeria. He is also the chairman of Korangi Association of Trade and Industry. Senator Abdul Hasib Khan is also the founder of Brooks Health and Education Foundation, establishing various schools and dispensaries in underprivileged areas of Karachi. He was awarded with Sitara-e-Imtiaz in recognition of his relentless services for uplifting Pakistan's trade and economy, as well as contributions to social welfare work. अपनी सलाहियतों को और अपनी नॉलेज को अप्लाई करने के लिए सिर्फ नौकरियों के सहारे पे मत जाइएगा दुनिया में हमारी। जब हमारी दुनिया में आए तो फिर एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आए। मैं खुद भी 12 साल की उम्र में एंटरप्रेन्योर बना था और मेरी जेब में एक पैसा भी नहीं था। तो एंटरप्रेन्योर स्टार्ट फ्रॉम नथिंग। नौकरी भी मैं नहीं कह रहा कि नहीं करनी चाहिए, नौकरी भी करें, गवर्नमेंट की नौकरी भी करें, लेकिन अपनी सलाहियतों को अगर आजमाने का मौका मिले तो कोशिश ये करें कि एंटरप्रेन्योर बने। और एंटरप्रेन्योर बनना बहुत आसान है कि दुनिया में कामयाबी हासिल करने के लिए कुछ अल्लाह की बातें माननी पड़ती हैं। तो अगर अल्लाह की इंसानों का अगर आपने ख्याल रखा तो फिर कामयाबी अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। Hello everyone, my name is Ali Jalani and I am the mentor for Greenwich University's Diplomatic Society. The vision for Diplomatic Society is to provide the students with the opportunities to engage in simulated scenarios of international entities, to foster their analytical vis-a-vis oratory skills. The Society will also be responsible for the conduct of Greenwich University's Model United Nations. You're more than welcome to be part of the Society's events, and would also like to have some of you who are passionate about developing a worldview to be part of the Diplomatic Society moving forward. And by the way, welcome to Greenwich Fraternity, all of you. Looking forward to have you around. Thank you. Dr.
Dr. Sirajuddin Aziz is an experienced banker having served in Pakistan, United Kingdom, China, Hong Kong, United Arab Emirates, and Nigeria, covering a wide spectrum of portfolios. Despite a prolific banking career spanning over 3 decades, he also is a true teacher at heart. His scholarly contributions span across various domains, including human behavior, economics, ethics, leadership, management, politics, and religion. Mr. Aziz is a regular contributor to national and international dailies, journals, and magazines. He has published several works of scholastic distinction, including The Art and Craft of Management, Corporate Pakistan, Insights to Leadership and Governance, In Quest of Mirage, The Essence of Islam, and Mongolian Pot, among others. He has also featured in televised discussions on finance and economy and is an audible speaker across various fora on a wide array of subjects. In 2015, Greenwich University conferred upon him the honoris causa degree in recognition of his multidimensional services. आज सबसे पहले मैं मुखातिब होना चाहूँगा उन वालिदैन को जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं कि आज का दिन आपके लिए बाइस मसरत होना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चों ने एक इल्म हासिल किया है ग्रीनिच यूनिवर्सिटी से, जो मुझे पूरा यकीन है वो बरूए कार लेकर आएंगे अपनी आगे ज़िंदगी में और कुछ ऐसा काम करेंगे इस कौम मुल्क के लिए कि आपका भी सर बुलंद रहेगा हमेशा फ़ख्र के साथ। तालिब इल्मों से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, आप आइंदा जब अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हों तो सिर्फ़ अपने लिए नहीं बल्कि अपने माशरे के लिए काम कीजिए, अपने मुल्क के लिए काम कीजिए और ऐसा कोई काम कीजिए जिससे हमेशा आपकी यूनिवर्सिटी और आपके वालिदैन का सर झुके नहीं बल्कि फ़ख्र से ऊँचा रहे। Dr. Sirajuddin Aziz is an experienced banker having served in Pakistan, United Kingdom, China, Hong Kong, United Arab Emirates, and Nigeria, covering a wide spectrum of portfolios. Despite a prolific banking career spanning over 3 decades, he also is a true teacher at heart. His scholarly contributions span across various domains, including human behavior, economics, ethics, leadership, management, politics, and religion. Mr. Aziz is a regular contributor to national and international dailies, journals, and magazines. He has published several works of scholastic distinction, including The Art and Craft of Management, Corporate Pakistan, Insights to Leadership and Governance, In Quest of Mirage, The Essence of Islam, and Mongolian Pot, among others. He has also featured in televised discussions on finance and economy and is an audible speaker across various fora on a wide array of subjects. In 2015, Greenwich University conferred upon him the honoris causa degree in recognition of his multidimensional services. आज सबसे पहले मैं मुखातिब होना चाहूँगा उन वालिदैन को जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं कि आज का दिन आपके लिए बाइस मसरत होना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चों ने एक इल्म हासिल किया है ग्रीनिच यूनिवर्सिटी से, जो मुझे पूरा यकीन है वो बरूए कार लेकर आएंगे अपनी आगे ज़िंदगी में और कुछ ऐसा काम करेंगे इस कौम मुल्क के लिए कि आपका भी सर बुलंद रहेगा हमेशा फ़ख्र के साथ। तालिब इल्मों से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, आप आइंदा जब अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हों तो सिर्फ़ अपने लिए नहीं बल्कि अपने माशरे के लिए काम कीजिए, अपने मुल्क के लिए काम कीजिए और ऐसा कोई काम कीजिए जिससे हमेशा आपकी यूनिवर्सिटी और आपके वालिदैन का सर झुके नहीं बल्कि फ़ख्र से ऊँचा रहे।
कहते हैं कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है, सही कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सजी लियाकत है और आप देख रहे हैं लाइव कॉर्ड विद सजी लियाकत। जी हाँ, इस शो के अंदर हम लोग आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, म्यूजिक के हवाले से, इंस्ट्रूमेंटल कैसे प्ले होता है और आप गाना किस तरीके से गा सकते हैं, कौन सा राग किस टाइम सूट करता है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं। बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं हमारे साथ, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। देर किस बात की, अभी लाइक करें ग्रीनविच वेब टीवी को, ग्रीनविच यूट्यूब चैनल को और ग्रीनविच फेसबुक को। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। Hello and welcome. You're watching Greenwich Web TV and this is your host Umar Khan and I'm here with another very special guest for today. Let me introduce my guest and right next to me is Miss Sana Hashmi, who's a news anchor and an anchor person, a host and senior producer news at GTV and a very charismatic personality as well. So thank you so much ma'am for being part of this show today. Thanks for inviting me. You're most welcome. How are you? I'm very well. आप बताइए कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही नीड ऑफ द आर्ट टॉपिक है, नीड ऑफ द मोमेंट टॉपिक है कि एक न्यूज़ एंकर की या एंकर पर्सन की, मीडिया पर्सन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और किस तरह से उनको अपना काम करना चाहिए। So when we compare the Pakistan news channels to the international forum, we see a vast difference. Why do you think is that? वेल उमर, आपने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, तो जब आप एक सिंपल सा, मैं सारे लोगों को कहूँगी आप गूगल भी करें कि जर्नलिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, तो वो आपको बताएगा, गूगल भी आपको ये कहेगा, टू गैदर द न्यूज़, टू इन्फॉर्म द पीपल, यू नो, लोगों को आप समझाएं, बताएं, आगाह रखें। और जिस ज़ाहिर है अगर हम इस्लाम की बात करें तो कुरान में भी इसका एक तज़किरा मौजूद है। बड़ी बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि आपको किसी तक खबर पहुंचानी है। अब उसका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? देखें, कुरान का मैंने तज़किरा क्यों किया यहाँ पर कि वहाँ पर आयत मौजूद है कि किसी पर झूठी या सच्ची बातें लगाकर बयान न की जाएं। अब मसला ये है कि जब हम इतनी इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी पर बैठे हैं, जिसको जर्नलिस्ट कहते हैं आप, वहाँ अगर हम रियाकारी, यानी कि आप आधा सच आधा झूठ और अपने मतलब की बात बताने की कोशिश करते हैं, तो बड़ी माज़रत के साथ फिर आप जर्नलिज्म नहीं कर रहे होते, फिर आप फेवरेटिज्म कर रहे होते हैं। Right. और जब आप दुनिया से कम्पीट करने की, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट की बात करते हैं, हमारा जर्नलिस्ट बहुत अच्छा है। बहुत सारे ऐसे सीनियर और सीजन जर्नलिस्ट हैं जिनका मैं नाम भी ले सकती हूँ, जिनके साथ हमने काम किया है और उन्होंने हमें वो मीडिया एथिक्स शायद सिखाए जो आज की दुनिया में या आज के जर्नलिस्ट में हमें नज़र नहीं आते। तो हम इंटरनेशनल मार्केट की, अगर आप कहेंगे फॉक्स न्यूज़ किस तरह खबर चलाता है सनाश में, तो शायद मैं आपको बता दूंगी, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि लोकल न्यूज़ नेटवर्क कैसे न्यूज़ चलाता है, तो मेरी उस पर कोई कमांड नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ शिफ्ट है बहुत ज़्यादा। हर जिस तरह की भीड़ चाल जिसको आप कहते हैं ना, मतलब लोगों को पता नहीं है, बस खबर आई उसको पीटना शुरू कर दिया। इंटरनेशनली कोई भी इवेंट होता है उसकी एक मियाद रखी जाती है, उसको वो रिपोर्ट करते हैं, उसके साथ उसका बैशिंग नहीं शुरू कर देते कि इसको ड्रम लेके बजाना शुरू कर देते हैं। हमारा इसका बिल्कुल डिफरेंट होता है। हम इंफॉर्मेशन कम देते हैं लेकिन हम शोर ज्यादा मचाते हैं। तो इंफॉर्मेशन बहुत लेस है हमारे पास, बिकॉज आई एम सॉरी, फॉर सम रीजंस हम रिसर्च नहीं करते, हम नहीं पढ़ते और हम नहीं जानना चाहते। आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट डिफरेंस जो हमें दुनिया के जर्नलिज्म से, अगर हम कॉम्पीट करने की बात करें, जो पाकिस्तानी जर्नलिज्म है, हमारा जर्नलिज्म ज्यादातर रिफ्लेक्ट करता है हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के साथ। हम उसकी कॉपी कैट्स बनने की कोशिश करते हैं, कभी कभी उसमें आगे भी चले जाते हैं। लेकिन आई एम प्राउडली सेइंग कि अल्लाह का शुक्र है कि हम उनके लेवल पे नहीं पहुंचे जर्नलिज्म के अंदर, क्योंकि वो उनका जर्नलिज्म मोर लुक्स लाइक अ exaggerated movie to me, and thank God हम उस लेवल तक नहीं पहुंचे और अल्लाह ना करे कि कभी उस लेवल पे हम पहुंचे भी। बट आपने जिक्र किया शोर मचाने का, तो एक चीज जो नोटिस की एक आम आदमी ने कि सनसनी ज्यादा होती है ब्रेकिंग न्यूज की रेस के अंदर। न्यूज अक्सर होती नहीं लेकिन उसको क्रिएट किया जाता है, और जब एक चीज है नहीं और उसको क्रिएट किया जाए तो बात की जो क्रेडिबिलिटी है वो वहीं खत्म हो जाती है। देखिए, एक चीज आपने लफ्ज इस्तेमाल किया सनसनी का ना, सनसनी फैलाने के लिए खबर का होना, उसका वजूद होना ज़रूरी है जी।
अब जब किसी चीज़ का आपने जैसे का वजूद ही नहीं है तो उस पर आप क्या खबर दे रहे हैं, ये कहलाते हैं गिमिक्स। और जो TRPs होती हैं वो इन्हीं गिमिक्स के थ्रू आपको डिलीवर हो रही होती हैं। देखिए आजकल सोशल मीडिया का दौर है, अगर आपका कैप्शन लिखा हुआ होता है कि जरा देखिए उसने उसका थप्पड़ क्यों मारा, पीपल नीड टू नो कि वो क्या हुआ है और वो उसको क्लिक जरूर करते हैं। सोशल मीडिया का मेरा जैसा शायद थोड़ा बहुत, या मेरे ख्याल है आप जैसा आदमी बहुत कम होगा कि उसको जाके क्लिक करे, क्योंकि हमें पता है कि अंदर कोई फजूली चीज़ होती है, कोई काम का मटेरियल नहीं निकलेगा। बट टेलीविजन के मीडियम में क्या होता है कि यहाँ आपको TRP गेन करने के लिए समटाइम्स उस तरह का खबर देनी पड़ जाती है जिससे शायद आप जिसे कहते हैं ना रिफ्लेक्शन नहीं दिखा सकते किसी सोसाइटी का। लेकिन क्यों कर रहे होते हैं आप? क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स वो सारा काम कर रहे होते हैं। अगर आपका कॉम्पिटिटर वही काम कर रहा है, इस वक्त लगभग अगर 72 चैनल्स हैं और वो काम कर रहे हैं 72 चैनल्स, उसमें रीजनल्स भी हैं और बाकी सारे चैनल्स भी हैं, लेकिन जो स्पेशली न्यूज़ चैनल्स हैं वो अगर कोई एक टिकर लगा दें कि फला शख्स ने थप्पड़ मार दिया SHO को या कुछ भी कर दिया, अब उसकी खबर आने में शायद बहुत टाइम लग जाए, उसकी खबर के अवामिल पता करने में बहुत वक्त लग जाए, लेकिन इस दौरानिए में जो कि लगभग 2 से 1.5 मिनट का होगा, सारे टीवी चैनल वही खबर नशर करना शुरू हो जाएंगे। और इसमें इस चीज़ को बिल्कुल महलूज़ खातिर नहीं रखा जाएगा कि इसमें सनसनी का एलिमेंट ज़्यादा है, इसमें खबरियत ज़्यादा है, या इसमें हकाइक ज़्यादा है, या इसमें सोसाइटी को आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। ये तीनों चीज़ें पसे पुश चली जाती है। वो जो एक एलिमेंट है थप्पड़ मारने का या चपकलिश का या एक्सीडेंट का या किसी की बैशिंग का, वो सिर्फ प्रोमिनेंट होकर रह जाता है। राइट। एथिक्स का आपने जिक्र किया, जो एक ओरिजिनल जर्नलिज्म होता है और जो हम मीडिया स्टूडेंट्स पढ़ते हुए या जर्नलिज्म सीखते हुए जो आप सारे डूज एंड डोंट्स देखते हैं, उसके अंदर सबसे पहली चीज़ ये आती है कि आपने क्या चीज़ नहीं करनी है। जितनी चीज़ें जो नहीं करनी होती, फॉर एग्जांपल शोइंग वायलेंस, शोइंग नेगेटिविटी, इग्नाइटिंग द पीपल फॉर अ सर्टन कॉज और एनीथिंग, ये सारी चीज़ें डोंट्स में आती हैं। बट पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स जब हम स्विच करते हैं तो 70 to 80% हमें चीज़ें यही दिखती हैं, आग जल रही हैं, बम फट रहे हैं, लोग मर रहे हैं, एंड ऑल द नेगेटिव साइड। Why is that? अच्छा उमर, आपकी इस बात को मैं इस तरह से आपको समझाऊं कि 2011 और 12 आई थिंक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, सो आई थिंक 12-13 के बाद ये वाला जो एक एलिमेंट था सेंसेशनलिज्म जिसको आप कहते हो, या सनसनी के साथ डोंट्स पर जो एक तरीक़ेकार था, वो बहरहाल कम होना शुरू हुआ। हाँ, देखें पाकिस्तान का जर्नलिस्ट बहुत मेहनत के बाद आज आज़ाद हुआ है, ये भी हमें याद रखना चाहिए। बिल्कुल मैं इस गलती को मानती हूँ, तस्लीम करती हूँ, क्योंकि हम उस चीज़ का हिस्सा बने जब 2000 में मैंने इस जर्नी का आगाज़ किया था जर्नलिज्म की। तो उस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत ख़राब थी, हमें रोज़ाना की बुनियाद पर बम ब्लास्ट भी नज़र आते थे, क्योंकि आपको पता है 9/11 के बाद सूरत हाल दुनिया की बदल चुकी थी। उस दौरान में हमसे जर्नलिस्टिक गलतियाँ हुई हैं। हमने ब्लड भी दिखाया, हमने खुरेजी भी दिखाई, हमने लोगों को मरते हुए भी दिखाया, और हमने मरते हुए लोगों से ये पूछा भी कि आपका बंदा मर गया, आपको कैसा लग रहा है। लेकिन उसके बाद ही, एंड आई थिंक एज आई सेड दैट कि 2010 बिटवीन और मे बी द 11 हमने इस पोस्चर को चेंज किया, और जो कोड ऑफ कंडक्ट मीडिया का तैयार किया गया उसमें इन सब चीज़ों को रखा गया। और जो सुप्रीम, जो हमारे, जैसे मैंने कहा, जो सीजन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अपने जो पैरोकार थे बाकी दीगर जर्नलिस्ट, उनको समझाया कि आप जब टेलीविज़न पर कोई चीज़ नशर कर रहे हैं या दिखा रहे हैं, उसको लोगों तक टेलीकास्ट कर रहे हैं, तो उसका इथिक क्या होना चाहिए, क्या ब्लड दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए, दिखाना चाहिए तो कैसे दिखाना चाहिए, उसका बिलर कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, एक एक्यूज से क्या क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर कोई फैमिली का कोई किसी के लवाहिकीन है तो आप उससे क्या बात कर सकते हैं। ये सारे कोड ऑफ कंडक्ट मीडिया ने खुद तरतीब दिए, मीडिया के लोगों ने खुद बनाए। मैं ये बात फिर कहूँगी कि हाँ, गलती हुई है, और अब भी शायद कहीं माइनर से जाके, जैसे एक मुझे याद आ रहा है वाकया, पिछले साल की बात होगी, मैं एक दूसरे टीवी चैनल पे थी, ईद उल अजहा का मौका था और कुर्बानी हो रही थी, तो उसमें ब्लड दिखाया जा रहा था। खैर बहरहाल ये एक प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी होती है, जो न्यूज़ रूम का प्रोड्यूसर होता है, न्यूज़ प्रोड्यूसर के, वो देखे एक एक चीज़ को कि जो वो एयर करने जा रहा है वो क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ें हैं। लेकिन प्रोड्यूसर से वहाँ गलती हुई, और एडिटर ने वो ब्लड जो है, जो गाय ज़िबा हो रही थी या जो नहार किया जा रहा था, ऊँट को नहर किया जा रहा था, वो पूरा ब्लड ऑन एयर चला गया। वो ऑन एयर गया ही था, मतलब सेकंड्स का, कुछ लम्हे का मेरा ख्याल है टाइमिंग आया होगा कि मैं खुद
बैक पर थी न्यूज़ फ्लोर पर, मैंने दौड़ कर वहां पर से चिल्ला के, आपको पता है न्यूज़ रूम का एक अलग माहौल होता है, तो मैंने बहुत ज़्यादा लाउड होके कहा कि ये हम क्या दिखा रहे हैं। तो हमने उसको उसी वक्त रोका और फिर ज़ाहिर सरजनिश भी हुई, उन लोगों को उनसे पूछा भी गया कि ये गलती कैसे सरजद हो गई, क्योंकि हम एक मीडिया चैनल के लोग हैं, हमसे हम इस तरह के एक्सीडेंट्स को रोजाना की बेसिस पे बर्दाश्त नहीं कर सकते। सो यस, मीडिया एथिक्स ये हैं कि आप लोगों से, मरते हुए आदमी से ना पूछें जाकर कि आपको कैसा लग रहा है आप मर रहे हैं, या उसका बंदा किसी के घर में कोई मतलब चोरी डकैती कुछ भी हो गया और आप पूछें उससे कि आप उस वक्त कहाँ थे, वो कहेगा अगर मैं होता यहाँ तो मैं ये सब तो ना होता ना। मतलब आई मीन समटाइम्स हम बहुत ही फुलिश किस्म के कॉमन सेंस होना जरूरी है इसमें। एक और चीज पे अगर हम आए, देखें आपने सीजन जर्नलिस्ट का जिक्र किया, तो हमारे पास बहुत अच्छे सीजन जर्नलिस्ट हैं who are on the top level, but when we talk about the reporters and everyone who's on the field और जो रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि जितने सीजन जर्नलिस्ट उनका शायद पूरे दिन में आधे घंटे 1 घंटे का प्रोग्राम होता है, बट जो ज्यादातर मटेरियल आ रहा होता है ऑन दैट इज रिपोर्टर्स who are creating stories around the city and around the country। तो एक कोई बेंचमार्क होना चाहिए, कोई खास एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि व्हाट आई हैव नोटिस, मैं किसी को यहाँ डिमीन नहीं करना चाह रहा या पॉइंट आउट नहीं करना चाह रहा, बट व्हाट आई हैव नोटिस कि लैक ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा छलकती है। मैं किसी की अंग्रेज़ी का मजाक यहाँ नहीं उड़ाना चाहता, लेकिन जब आप फॉरेनर से बात कर रहे हैं या आप अंग्रेज़ी में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका नेशनल जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, उस पर ये चीज़ पोर्ट्रे हो रही है कि ये पाकिस्तान का रिपोर्टर है और ये न्यूज़ चैनल का वो रिपोर्टर है जिसकी ये ज़बान है जो क्लियरली बात भी नहीं कर सकता। तो जो आपका इमेज इंटरनेशनली जा रहा है वो हर तरह से, चैनल का भी, मुल्क का भी और उस रिपोर्टर का भी, वो बहुत डिस्टॉर्टेड जाता है। अच्छा, इसमें 2 क्वेश्चंस हैं जो आपने किए। एक तो आपने कहा कि रिपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात आ गई ना। देखिए, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि हमारे यहाँ वर्कशॉप्स बहुत होती हैं, रिपोर्टर्स की भी होती हैं, प्रोड्यूसर्स की भी होती हैं और शायद मेरे ख्याल एंकर्स की भी होती हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है वो नहीं होती है। ये एक डिलेमा है और ये डिलेमा मुझे लगता है इसलिए भी है कि मेरे बाद की जो जनरेशन अब मैं देख रही हूँ, अपने बाद की इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब वो हमारे सामने जिस तरह से काम कर रहे होते हैं तो हमें नज़र आ रहा होता है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन बहुत कम कैपेसिटी रखती है सीखने की। उसको समझाया भी जाए तो शायद वो उस तरबियत से नहीं समझना चाह रहे होते हैं। अब दूसरा सवाल जो आपने कहा, एक तो देखिए ट्रेनिंग का फुकदान है। मीडिया टीवी चैनल्स के लोगों को मैं यहाँ से ग्रीनिच के इस स्टूडियो से इस बात का ज़रूर पैगाम देना चाहूँगी कि आप अपने लोगों की ट्रेनिंग्स करवाएं। आप प्रोफेशनल जर्नलिस्ट को दुनिया भर से, यहाँ पे बड़े बड़े इदारों के नाम आपको लेके बता सकते, मतलब लोग आए थे यहाँ, हमने ट्रेनिंग्स हासिल की, हमने रॉयटर्स से हासिल की, हमें बताया गया कि हाउ टू एडिट, हाउ टू प्रोड्यूस द प्रोग्राम्स, हाउ टू एडिट द न्यूज़ एंड हाउ टू एडिट द प्रोग्राम, न्यूज़ की लिखने का तरीका क्या है, कैप्शन कैसे बनेगा। आई मीन बहुत ही निटी-ग्रिटीज में जाके हमारी ट्रेनिंग हुई है। लेकिन अब मैं वो बार बार बात दोहरा रही हूँ, लेकिन शायद मुझे लगता है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा कमी है हमारे रिपोर्टर्स की ट्रेनिंग की। वो लगता है कि माइक पकड़ के बस बोले जाना है, क्या बोलना है, किस पेस में बोलना है। देखिए, गुफ्तगू करते हुए 2 मयार होते हैं। जब आप किसी से बात करें तो आपकी बात मुकम्मल तौर पर उसको समझ आनी चाहिए और आपका लहजा इतना शफाफ होना चाहिए कि अगर वो आपके जुमले गिनना चाहे तो वो गिन ले कि आपने 1 मिनट में 70 अल्फाज बोले कि 100 अल्फाज बोले या लफ्ज बोले। तो कहने का मकसद ये है कि एक तो ट्रेनिंग का बहुत बड़ा फुकदान है। फिर जब आप बात करते हो अंग्रेजी की या उर्दू की या जिस भी आप जुबान में बात करते हैं, देखिए अंग्रेजी का तो मामला ये है उमर साहब कि ये हमारी कोई मदर टंग तो है नहीं, ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें फ्लुएंट होना चाहते हैं और अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम कोई तीसमार खान हैं, तो फिर उसके लिए भाई पढ़ लिख के आए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसका काम उसी को साझे, जो काम आपको आता नहीं वो काम ना कीजिए। जिस लहजे या जिस लैंग्वेज में आपकी कमांड ही नहीं है तो आप अगर उस पर ना भी बात करें तो कोई उसमें मजायका नहीं है। लेकिन जब आप इंटरनेशनल इमेज की बात करते हो तो मैं इसमें 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगी। देखिए, नेशनल मीडिया पे जो रिपोर्टर्स काम कर रहे हैं, इल्ला माशाल्लाह मेरा ख्याल है कोई मैथ्स कॉम करके आया हुआ होगा, इल्ला माशाल्लाह होगा। तो अगर इल्ला माशाल्लाह लोग मैथ्स कॉम करके आए हुए हैं तो वो कैसे उस चीज़ की रिस्पॉन्स डिलीवर करेंगे। मैंने इनिशियली बात ये की थी कि एक एंट्रेंस पे बेंचमार्क बने, कोई रिक्वायरमेंट्स हो, क्योंकि एक जो इमेज बना हुआ था वो ये कि जी आप कहीं कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं कर सकते तो मीडिया में आ जाओ। देखो, एक ये भी उमर, मैं बड़ी अक्सर आप जैसे स्टूडेंट्स और दीगर लोगों से जब हमारी मुलाकात होती है, लेक्चर्स पे जाते हैं तो हम उनको ये कहते हैं
कि ये भी एक तरह का ट्रेंड है कि आप क्या करते हैं जी, मैं मीडिया में काम करता हूँ, क्या करते हैं जी, मैं प्रोड्यूसर हूँ, क्या करते हैं जी, मैं एंकर हूँ, क्या करते हैं जी, मैं रिपोर्टर हूँ। एक ज़माना था, मुझे अच्छी तरह याद है, पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के ना ड्रम्स बन गए थे, इतने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे। मैं हर दूसरे लड़के लड़की से पूछती थी, वो कहते थे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना। तो प्लीज बी क्लियर इन योर फ्यूचर व्हाट यू वांट टू डू इट, व्हाट यू वांट बी, मतलब आप करना क्या चाहते हो, बनना क्या चाहते हो। मैं आप जैसे स्टूडेंट्स की नहीं, लेकिन और दीगर लोगों की बात कर रही हूँ। मैं बेतहाशा ऑडिशन दे चुकी हूँ, मुझे अंदाजा है, मैं बच्चों को देखती हूँ, वो बिल्कुल उनको अंदाजा ही नहीं है कि उनका फोकस क्या है, क्लैरिटी नहीं है, डीफोकस्ड हैं कि उनको आप कहीं पे भी लगा दें। मतलब मैं जब उनको फॉर्म फिलिंग के लिए देती हूँ कि आप मुझे बताएं कि आप क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो वो जो स्पेस होती है वो खाली होती है और वो सोचते हैं कि शायद वो मुझे भर देनी चाहिए कि मैं उनको बताऊं कि उनको क्या करना चाहिए। देखो, मैस्कॉम पढ़ें, जो बात फवाद चौधरी साहब ने कही थी, मैं उसको बिल्कुल नहीं मानती कि चैनल्स का कोई फ्यूचर नहीं है और लोग डिजिटल मीडिया की तरफ जाए। डिजिटल मीडिया की अपनी अहमियत है और नेशनल टेलीविजन की अपनी अहमियत है, लेकिन देखो, जब आप पढ़ रहे हो, आपको ये नहीं पता कि इस 4x4 के कमरे में 2 लाइट्स की कैपेसिटी है या 4 लाइट की कैपेसिटी है, बाउंस ऑफ लाइट क्या है, विदाउट बटर पेपर बाउंस करेगा या नहीं करेगा, या इसके ऊपर जेल लगाना पड़ेगा। तो प्लीज यार, फॉर गॉड से, आप फिर उस चीज को जब तक नहीं समझोगे आप डिलीवर नहीं कर सकते। मैस्कॉम के बच्चे जो पढ़कर आ रहे हैं, या तो वो आई डोंट नो, मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैंने मैस्कॉम नहीं पढ़ा हुआ, इसलिए मैं बड़े क्लियरली आपको बता रही हूँ कि मैं मैस्कॉम स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े होकर सीखा है। मुझे पता है कि ट्राइपॉड को कितना मुझे पकड़ना है, कैसे पकड़ना है, एंगलिंग कैमरे की क्या करनी है, इंचेस ऑफ फ्रेम्स भी हमें सिखाए गए। जो मैस्कॉम का स्टूडेंट आता है वो बाय बुक जाता है। देखो, जब आप फ्लोर पे यहाँ खड़े में हैं और आप, हमने एक सिटिंग अरेंजमेंट ये आपने मुझे बना के दिया है, हो सकता है कोई और प्रोड्यूसर आए सीनियर और वो हमें इससे अच्छा फ्रेम बना के दे दे, राइट, तो वो कैसे बनाएगा। देखो, मैं और आप बाय बुक जाएं अगर, तो हम कहेंगे कि नहीं, इस रूम की डायमेंशन के हिसाब से मुझे लाइट इतनी बाउंसी मिल रही है, मेरा फ्रेम सेटल्ड है, मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर है, तो मैं इसमें बहुत कंफर्टेबल हूँ। लेकिन कोई और सीनियर आदमी आके हो सकता है हमसे बेहतर बात करे क्योंकि उसका एक्सपीरियंस होगा। बट आई एम ट्राइंग के बाय बुक जरूर जाएं, ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस काउंट्स, राइट। अब एक बात आपने की कि क्लैरिटी नहीं आती है बच्चों को, तो अब का जो हमारी यूथ है, एक मेरा भी बहुत एक सोच है इसके ऊपर और मैं काफ़ी कंसर्न हूँ इस बारे में भी, कि जब आप किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो आपको उनकी इंटेलेक्ट का पता चलता है। एक बच्चे की इंटेलेक्ट बनती है उसकी सराउंडिंग से, जो वो देखता है, जो वो सुनता है। तो ग्रोइंग अप, एक बच्चा अपने बचपन से, अपनी टीनेज से जो अपने टीवी पे देखता है, उसका उसकी इंटेलेक्ट में एक बड़ा अहम किरदार है। एंड नाउ ग्रोइंग अप, जो न्यूज़ चैनल पे एक बच्चा, अगर कभी ज़िंदगी के अंदर मेरे फ्यूचर हो, तो मैं किसी भी बच्चे का अपने न्यूज़ चैनल सबसे पहले बैन करूँगा कि आपको इजाज़त ही नहीं देखने की। कितना किरदार है हमारे न्यूज़ चैनल का हमारी इंटेलेक्ट को आज ये बनाने में। अगर आप न्यूज़ चैनल की बात ना करें, खाली ओवरऑल मीडिया, इसलिए आपको लेके जा रही हूँ उस तरफ। आजकल एक ड्रामा बहुत हिट चल रहा है पाकिस्तान में, हर तीसरे बंदे को उस ड्रामे का पूरा गाना भी आता है, उसका जिंगल भी आता है, उसके कैरेक्टर्स के नाम भी पता है, नाम भी ले लेती हूँ ड्रामे का, सिर्फ तुम के नाम से है, पता नहीं क्या, मुझे तो पता भी नहीं है, शायद मैं कुछ इसी तरह का नाम है, आई थिंक। देखो, सोसाइटी रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, जो आपकी सोसाइटी में हो रहा है वो ड्रामा रिफ्लेक्ट करता है, वही न्यूज़ रिफ्लेक्ट करती है। देखो, रेप हो रहा है तो मैं रिपोर्ट कर रही हूँ ना, अब्यूज हो रहा है तो मैं रिपोर्ट कर रही हूँ ना, मिसकमिटमेंट्स हो रहे हैं सोसाइटी में तो मैं रिपोर्ट कर रही हूँ ना, आप लोगों को मिसबिहेव कर रहे हैं तो मैं रिपोर्ट कर रही हूँ। अगर सोसाइटी इतनी सेटल्ड हो जाए कि वहाँ इतने इम्बैलेंस किस्म के इमोशंस ना मिले मुझे, तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा दिखाने के लिए। मैं आपको यहाँ मिसाल देना चाहूँगी, बीबीसी आप सब लोग देखते होंगे और हम भी देखते हैं, एक सर्टेन टाइम पर बीबीसी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री चलती है। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? उनकी एफपीसी में क्या खबरें दिखाने के लिए नहीं होती? क्या उनके लैंड पर इस तरह की चीजें नहीं हो रही होती हैं कि वो ना दिखाएं? बट उनका एक नेचर है, उनको एक चीज में सेटल्ड कर दिया गया सोसाइटी को कि फॉर दैट सर्टेन पीरियड आप दिखाएंगे और इसके बाद आपने मूड को स्विंग कर देना। हमारे यहाँ बिकता यही है हमारे। That's the irony. That's the irony because
देखो, आपको आपका देखने वाला आपको नहीं देखेगा। आप अगर 4 किताबें लेके बैठे ना कि आज हम बात करते हैं कि अशफाक अहमद साहब ने क्या लिखा था, या ना चले आज ऐसा करते हैं। Why is that? Because we fed them that. अगर आप अच्छा काम करेंगे और अगर आप लोगों को पॉजिटिविटी की तरफ लाएंगे तो वो क्यों नहीं आएंगे। मेरा कहने का मकसद है नॉट ओनली न्यूज़, जितना मीडिया है, जो आपने बीच में डॉक्यूमेंट्री का जिक्र किया, और अगर हमारी सोसाइटी में रेप हो रहा है, चोरी हो रही है, क्राइम हो रहा है, तो एजुकेट करने का भी तरीका है। होता क्या है कि व्हेन वी ट्राई टू मेक समथिंग टू एजुकेट देम, पीपल गेट न्यू आइडियाज फ्रॉम दैट एंड कम टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड ऑफ इट। एब्सोल्युटली राइट एंड आई एग्री। लेकिन मैं तारिक अजीज साहब को सभी सारी दुनिया जानती है। तारिक अजीज साहब से एक दफ़ा मेरी टेलीफोन पर बात हुई। मैं उनको अपने एक टेलीविजन शो के लिए मदऊ करना चाह रही थी कराची, लेकिन वो नहीं आ सके बहरहाल। तो उनसे मैंने पूछा कि सर बड़ी एक सवाल का तो मुझे जवाब देते, तारिक अजीज कैसे बन गया, मतलब आज तो कोई सोच ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि उस वक्त मैंने वो काम किया जो कोई नहीं कर रहा था। उस तरह का शोज उस जमाने में जो शोज हो रहे थे वो आपको भी पता है, स्टूडियो 2:45 हो रहा था, स्टूडियो 2:30 हो रहा था, मोइन अख्तर शो हो रहा था, यस सर नो सर हो रहा था, और बहुत सारे दीगर शोज हो रहे थे। गिफ्ट देना, लोगों से सवाल करके उनको अप्रिशिएट करने का काम तारिक अजीज साहब ने शुरू किया। उन्होंने कहा ये मैंने लोगों को सिखाने की मेरी एक या पहले पाकिस्तान टेलीविजन का एक विजन था कि हम लोगों को एजुकेट भी करें और उनको प्रेज भी करें साथ साथ। अब क्या हो रहा है, उसका बिल्कुल अलग हो रहा है। आप लोगों को सिर्फ आई एम सॉरी फकीर बना रहे हैं या भिखारी बना रहे हैं। True. ये ले लो मोटर बाइक, ये ले लो कपड़े, ये ले लो और गाना, उसके लिए करवा और ये क्या रहे हैं, एजुकेट करने की जगह डांस करवा रहे हैं, ये चीज उनका मजाक बनवा रहे हैं। इसीलिए एलिमेंट पे एक केक रखा है, आप कह रहे हैं इस केक को आप मुंह से खाएं, और वो पूरा केक खाते हुए बंदी की शक्ल बिगड़ गई या खातून की शक्ल बिगड़ गई। देखो, मैं आपसे फिर उसी बात पे आऊंगी, व्हाट सोसाइटी नीड्स। ये बात मुझे तारिक साहब ने कही, नहीं सोसाइटी अभी जो मैंने अपनी पिछली बात की उस बात की नफी करेगी, क्योंकि वो एक सीनियर आदमी, उन्होंने बिल्कुल मुझे सही सीख दी कि जो दिखाओगे ना वही लोग सीखेंगे। अगर हम पॉजिटिव चीजें दिखाना आज से कोई एक चैनल शुरू कर दे, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारे पाकिस्तानी बच्चे कार्टून नेटवर्क्स देखते हैं तो वो भी हिंदी देख रहे होते हैं डबिंग्स में। हाँ, हमारे पास हमारे बच्चों के लिए कंटेंट नहीं है। हम अपने बच्चों को ना गेम्स दिखाते हैं, ना इंडोर गेम्स के बारे में बताते हैं, ना आउटडोर्स। हम बच्चों के लिए कोई कंटेंट जनरेट ही नहीं कर रहे। जिस जमाने में मैं बच्ची थी हमारे पास बड़ा कंटेंट होता था भाई, हम देखते थे, चाहे आप ऐनक वाले जिनका मजाक उड़ाते रहे बैठे हुए आज के दौर में, लेकिन हम उसको देखकर बड़े हुए। कैम कैंडी कार्टून आता था, हमारे लिए 5 बजे का वो टाइम बड़ा प्राइम टाइम होता था। हम कहते थे दुनिया इधर से उधर हो जाए, कैम कैंडी जरूर देखना है हमने। तो निंजा टर्टल्स एंड सो ऑन एंड ऑन, हम देखते थे। तो आपने बच्चों को रिमूव कर दिया, आपने सिर्फ वायलेंस को दिखाना शुरू किया। तो मीडिया ने अपना शिफ्ट जब चेंज किया कंटेंट का, तो सोसाइटी ने भी उससे वही डिमांड करना शुरू कर दी कि ओके वी नीड मोर, वी नीड। मैं यहाँ पे जो जितने किड्स कंटेंट है उसकी एट द सेम टाइम तारीफ करना चाहूंगा। वी हैव लेजेंड ऑफ मार्कोर, 3 बहादुर ग्लोबली अवार्ड्स जीते हैं। वी हैव द बुरका एवेंजर्स, एक नई चीज ब्रांड्स ने शुरू की है कि वो अब अपने ब्रांड को बच्चों को टारगेट करके कमांडर सेफ गार्ड हो जाते हैं, और डर2 आ जाता है जर्म से फाइट करने के लिए, और 10 चीजें आ गई हैं। तो एट द सेम टाइम वो चीजें भी चल रही हैं। बट ये जो आपने कहा ना कोई एक चैनल, यहाँ एक चैनल से आई डोंट थिंक कि कुछ होगा, क्योंकि एक चैनल जब अच्छा काम करेगा और बाकी वही कर रहे हैं तो उस एक को साइडलाइन कर दिया जाएगा और बाकी पाकिस्तान टेलीविजन लोग कितना देखते हैं, दैट्स द पॉइंट। क्योंकि अगर आप पीटीवी देखते हैं तो आपको दिखता है कि पाकिस्तान में कितनी प्रोग्रेस हो रही है। और यही एक मेरी बात पहले हमारी बात में रह गई कि एक सीन चल रहा है किसी जगह पे XYZ जगह पे, और मैं चैनल स्विच करना शुरू करता हूँ फ्रॉम 1 to 20। मैंने 20 डिफरेंट न्यूज चैनल्स स्विच किए और एक ही सिनेरियो दिख रहा है और उसके मुझे 20 अलग एंगल दिखे। नाउ बीइंग अ कॉमन मैन आई एम वंडरिंग कि इसमें से हकीकत क्या है, क्योंकि 20 के 20 लोग मुख्तलिफ बात कर रहे हैं, डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। किसी जो एक चैनल किसी को हीरो दिखा रहा है, एक उसी को विलन दिखा रहा है, एक उसी को सपोर्ट कर रहा है, और एक कह रहा है कि नहीं इनकी बात बिल्कुल जस्टिफाइड है। व्हाट टू बिलीव? इस पे भी मैं आपको एक वाकया बता देती हूँ। हम बैठे हुए थे कुछ सीनियर जर्नलिस्ट के साथ, तो उन्होंने बताया कि एक वक्त पाकिस्तान में ऐसा था कि हम कहते थे कि हुकूमत भी हम बनाते हैं, हुकूमत भी हम गिराते हैं। ये जर्नलिस्ट की अप्रोच थी। और वहाँ पर जो जर्नलिस्ट बैठे थे वो बड़े नामी गिरामी जर्नलिस्ट थे, ऐसा नहीं है कि वो कोई छोटे मोटे लोग थे। कहने का मकसद क्या है इस बात के पीछे
कि जब जर्नलिस्ट को अपनी पावर का अंदाज़ा है कि वो जो दिखाएगा लोग उसको अब्जॉर्ब कर जाएंगे, आपके यहाँ हुआ ये है पिछले 20 वर्षों के दौरान कि सोसाइटी डिवाइड हो गई। तो ये तो हमने सारी बातें कर ली और सारे प्रॉब्लम्स को भी आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन व्हाट आर द सॉल्यूशंस, और वो सॉल्यूशंस जो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। आई नो इट इज़ इम्पॉसिबल कि हम अपनी आवाम को, उनकी मेंटालिटी को, जितने लोग सब गलत काम कर रहे हैं उनको सुधार सकें, बट कहीं से तो स्टार्ट हो सकता है, कहीं से तो वी कैन मूव एन इंच टूवर्ड्स बेटरमेंट। एग्रीड ऑन दैट उमर, कि देखें कहते हैं कतरा कतरा दरिया बनता है, ठीक है, हमारे तो दरिया भी सूख गए। मसला यह है कि किसी एक को जैसे आपने कहा कि फ़र्क पैदा करना पड़ेगा या पहला स्टेप उठाना पड़ेगा। उसके लिए चाहे एंटरटेनमेंट साइड हो, चाहे न्यूज़ साइड हो, या फिर दीगर और जो जॉनरास हैं उसमें काम करने वाले लोग हों, टेलीविज़न के अलावा रेडियो का मीडियम हो, अखबार हो, या फिर डिजिटल मीडिया हो आपका, कहीं बेहतरी की शुरुआत करनी पड़ेगी। जितनी नेगेटिविटी को प्रमोट कर रहे हैं हम, अगर हम थोड़ा सा इसमें एजुकेशनल एलिमेंट ऐड कर दें तो नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली बिल्कुल ख़त्म या आहिस्ता आहिस्ता उसका असर ज़ायल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसमें जो बुनियादी चीज़ है उसमें ज़रूरत है आपको पढ़े लिखे जहनों की, विजनरी लोगों की, जिनके पास जहन हो, उनको सिर्फ ये अहमियत ना हो कि मेरे कितने व्यूज़ आ गए, मेरी कितनी टीआरपी आ गई, या मैं कितना लोगों में मकबूल हूँ। उनको ये मालूम होना चाहिए कि जो वो बात बता रहे हैं या कह रहे हैं या दिखा रहे हैं टेलीविज़न पर या किसी भी मीडियम पर, उसकी अहमियत क्या है और उससे उनकी सोसाइटी की पॉजिटिविटी पे कितना बेहतर असर पड़ेगा। आई थिंक अगर कोई एक या दो भी ये शुरुआत कर देंगे तो बाकी भी सब फिर उसी लाइन पे चल पड़ेंगे, मेरा ख्याल। राइट, वेरी वेल सेड। और इस बात को अगर मैं समराइज करूं तो आई वुड से कि जी सबसे पहले तो आप अपने आप से सवाल करें कि आप कौन हैं, आप क्या हैं, आपका ज़िंदगी में पर्पस क्या है। इंसान में उसकी इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है, और अगर आप खुद से ऑनेस्ट नहीं हैं तो यू कैन नॉट गिव ऑनेस्टी और गिव एनीथिंग बैक टू द वर्ल्ड। तो चाहे आपका पर्सनल सक्सेस हो, बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम जहाँ हमने स्टार्ट की थी बात रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आती है कि आपने लोगों तक जब कोई कहानी पहुँचानी है तो आपको इस बात की श्योरिटी हासिल करनी है कि वो बात आपकी 100% करेक्ट हो, ऑथेंटिक हो, ताकि क्योंकि जब आप टीवी पे आके कोई एक बात करते हैं तो लोग बगैर उसकी तस्दीक किए दुनिया में जाके वो बात फैलाते हैं, और इस चीज़ की एडवांटेज लोग लेते हैं जो गलत काम कर रहे हैं कि आप कुछ भी बात फैलाएं और वो यूं सोसाइटी में फैल जाती है। तो एजुकेट करना हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है, एजुकेट करने के साथ साथ सही बात बताना हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। वी एट ग्रेनिच यूनिवर्सिटी वी डू हैव आवर मीडिया डिपार्टमेंट, जहाँ मीडिया स्टडीज़ के अंदर यही कोशिश करते हैं कि जब हमारा बच्चा फील्ड में जाए तो वो एथिक्स, इंटेग्रिटी और किस तरह से काम होता है वो सीखे और इस मीन वर्ल्ड के अंदर सरवाइव कर सके, जहाँ पे अच्छा काम करने पे हमेशा आपको रेजिस्टेंस मिलेगी। तो इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कि अगली दफ़ा मुलाकात हो तो हमारे ये जो मसाइल हैं जो हम फेस करते हैं मीडिया के अंदर नेगेटिविटी की तरफ, वो बेहतर हो। थैंक यू सो मच मैम फॉर टेकिंग आवर टाइम, एंड इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मदद किया, बहुत शुक्रिया। यू मोस्ट वेलकम। सो बिल्कुल आपने सुना सना हाशमी को, द सीनियर न्यूज़ प्रोड्यूसर एट GTV, ऑल्सो अ न्यूज़ एंकर, a host and a very charismatic personality, as you just heard. So until next time, Pakistan Zindabad. Mr. Sirajuddin Aziz is an institution within himself. He's regarded as one of the leading bankers of this day and age, not only on a national level, but internationally as well. His contributions to the executive financial sectors of banking like marketing, foreign trade, corporate credit, and trading and development, to name a few, are groundbreaking. Mr. Aziz started his career in 1977 at the Bank of Credit and Commerce International. After making his mark, he moved to different professional assignments, which took him to numerous countries,
such as Nigeria, Abu Dhabi, and England, where he rendered his exemplary services. Mr. Siraj is currently heading the Habib Metropolitan Bank as President and CEO. Under his unparalleled leadership, the bank has seen immense growth, with the network growing impressively in all parts of Pakistan. He is also one of the founding members of UBL and served as CEO of Bank Al-Falah, where he led the bank to sustained growth. With 406 branches in 5 countries and an HR complement of over 10,000 employees. He has vigorously promoted Pakistan as a trading partner and attracted large investments in his capacity as bank head. He has proceeded on to actively overseeing the entire spectrum of banking operations of various banks for over the last 15 years. So you have held top positions in the banking sector. What was the one thing that made you choose this sector, and why do you keep going on in it? To be honest, I did not select banking as a profession. I went there accidentally, in the sense that everybody from my class while we were at the university were applying for a classified ad response in the Daily Dawn. And from one interview to the other, it was a journey, and suddenly I decided to plunge into banking. The fact that I have clung to it is the fact that I realized over the period of time that I spent there that banking is not about money, banking is not about economics, banking is about people, and people interest me. So in your book, Bitter and Sweet, you wrote that you gave meaning to your father's life. How was that? The book that you're mentioning is actually an autobiography of my father. I have only put in an afterword and I've called it my book. It's essentially largely written by him. The fact that my child gives a meaning to my life today is the same fact that I narrated that I gave meaning to my parents. And that meaning became more pronounced and more important in his life because I lost my mother at a very young age. So I was his motivating factor to go on with life. That's why I mentioned to him that I gave meaning to his life. And other than that, you have been an inspiration to all of us. That's very kind of you. Is there anything you would like to give as a message to our graduating students? Please, I would implore upon each and every single graduate today that please look at the faces of your parents. They're smiling, they're happy. Don't pull out that smile ever from their face. Let it remain there, radiating and smiling and giving you strength for your life. Thank you so much for giving us your time, sir. Thank you. Pleasure is mine. Aziz, an inspirational personality and a noted visionary of our time, is not only binded to the banking and financial sectors, but is also a teacher at heart. He yearns to see the youth of today taking our country to greater heights. He has penned a number of poems and writings on different topics and is also an avid reader. Mr. Siraj's career is one which has seen growth at an exponential level. He has been the recipient of numerous awards, all highlighting the milestones that he has acquired over the time of his illustrious career. He is a man of many talents and is duly credited for it. Despite being a distinguished banker and having a strenuous schedule, Mr. Aziz is still a dedicated family person. He has always been and remains a man of virtue. When I got married, we went abroad, we went to Nigeria. His first posting was when I got married. Before that, he has been staying at London, Abu Dhabi. But at Lagos, we had a very good time there. He's a very good husband. और यानी कि we take advantage of it also because he's good. और बस एक शिकायत है because टाइम ज़्यादा नहीं देते ये घर पे और he comes around about 9:30 at times. ज़ाहिर है we hardly because he's very fond of his children. So even though they don't get the time they need, or he's not fond of going out, having food out, just wants to be at home with his children. तो जो कुछ भी है हम लोग छोटी सी फैमिली है. Good. He is humble, disciplined, and extraordinarily giving. He inspires those he meets with his undiluted humbleness, sincerity, and compassion. He delivers every word he speaks with a dignified thoughtfulness and humble sweetness.
that leaves his audience overswept with a sense of calm and an urge to listen to more. For his significant contributions to the development of his beloved country's financial sector and for his honorable public service, the degree of Doctor of Financial Management honoris causa is being awarded to Mr. Sirajuddin Aziz at the Convocation 2015 of Greenwich University, Pakistan. आ गई कम वक्त मारी नी आ गई तू सैर सपाटे करके पेट पूजा का कोई बंदोबस्त किया तूने कि नहीं किया है? क्या हो गया बाजी एकदम मेरा पेट ਤੁਹਾਡੇ पे भारी पै गया नी तेरा पेट तेरी तालीम भी साडे गले उत्ते पै गई है सारी जिंदगी दर दर नचदी फिरी ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਜਾਂ यूनिवर्सिटियां दी फीसां भरियां ऐ जलालत साडे किस काम दी है? अरे ना बाजी ना तू फिक्र ना कर कल मैंने ऑफिस बुलाया है इंटरव्यू दे वास्ते दुआ करी चल रब रखा गल सुन अब मैंने कुछ खान वास्ते दे दे ठीक है Hi, I am here for an interview. What's your name? Sarah. आप सारा वहीद है? Yes. अच्छा आप रूम नंबर 4 में चले जाए ठीक है थैंक यू May I come in? Send Sarah in. Yes, I am Sarah. Oh, yes, come in. Assalamu alaikum, Sarah. I'm the managing head of operations of this company, and he is my colleague. वालेकुम अस्सलाम जी आपसे मिलके बहुत खुशी हुई So सारा आप अपने बारे में कुछ बताएं जी मैंने बीकॉम किया है I'm sorry पर आप यहाँ क्यों आई हो जी मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था Yes, but it was clearly mentioned in the job advertisement that a female accountant is required and you are clearly a जी आप प्लीज़ मेरी अपीयरेंस पे ना जाएं मैं आई थिंक माय कॉमर्स बैकग्राउंड विल मेक मी अ वैल्यूएबल एसेट टू दिस कंपनी No, I don't think that you belong here. You may have the skills, but our company is not requires this type of people. जी आप ये कैसे बोल रहे हैं I'm sorry, we are done here. आप जा सकती हैं मुझे एक चांस तो दीजिए नहीं प्लीज़ लीव बाजी ये बाजी मैं मर गई
बाजी कैसे कर लेती है, कैसे सह लेती है इन सब के ताने। नहीं दी रानी, हुआ क्या है? बाजी सारी जिंदगी बस यही सुनने को मिला है, तू यहाँ से चली जा, तेरा यहाँ कोई काम नहीं। आज भी यही हुआ। ये तो होना ही था। तुझे क्या लगता है मैं क्यों सारी जिंदगी घुंघरू पहन के चल रही थी? तू क्या किताबें लेके फिर रही थी? चल अब रोना बंद कर, पहन ले घुंघरू। शकीला को बोल दूंगी, सिखा देगी तुझे सब। We urge the governmental and non-governmental organizations, private corporations, and business entities to come forward and play their part in the society by providing respectable earning opportunities to the transgender community to enable them to lead a healthy and happy life. लाइव है? ओके जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोहिल इंतखाब और ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन आपके सामने हाजिर है और अपने मेहमानों से हम बात करेंगे कि जी उनकी ईद कैसे गुजर रही है और अभी क्योंकि आगाज़ हुआ है ईद का और रमज़ान कैसे गुजर, तभी बात होगी। ये तमाम तर बातें करेंगे, लेकिन अकेले तो नहीं करूँगा, जाहिर सी बात है इस ट्रांसमिशन में मेरा साथ दे रही है मेरी को होस्ट अफशा फारूक। अफशा, ईद मुबारक। कैसी ईद मुबारक रोहिल साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी ईद कैसे गुजरी है बताएं? बहुत अच्छी, अभी तो शुरू हुई है। देयर इज अ लॉट व्हिच विल हैपन। सबसे पहले तो तमाम देखने सुनने वालों को दिली ईद मुबारक ग्रेनिच यूनिवर्सिटी की फैमिली की तरफ से। आज हमारे साथ इस स्टूडियो में कुछ मेहमान होंगे जो कि हमारी फैकल्टी और स्टाफ में से हैं और हम बात करेंगे कि उनका रमज़ान कैसा गुजरा, क्या हैपनिंग्स थी रमज़ान की और ईद कैसी गुजरेगी। तो हमारे साथ स्टूडियो में दो मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ हैं सबसे पहले तो सर इमादुल करीम और उनके साथ बैठे हैं डॉक्टर साबिर। हम इनसे पूछते हैं कि इनकी ईद कैसी गुजरी। ईद मुबारक आप दोनों को। आपको भी मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। सर क्या हैपनिंग्स हैं ईद की? इस बार ईद कुछ डिफरेंट लगी क्योंकि 2 इयर्स हम लोगों ने कोविड से गुजरे और बिल्कुल एक डिफरेंट सिचुएशन थी और अब ऐसा लगता है कि जो 2 साल पहले हमारी नॉर्मल लाइफ थी और इस बार अब वैसे ही सारी खुशियाँ, वैसे ही सारे मेहमान, सारी तैयारी, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि जिस तरह से लोग पहले आते थे और जाते थे हम भी कहीं जाएंगे, तो वो 2 इयर्स जो हमारे गुजरे उसमें टोटली वी वर आइसोलेटेड, सो ये हमें चेंज लगा। डॉक्टर साबिर, आप बताएं आपकी। मुझे लग रहा है आपने सबसे ज्यादा रोजे आपने रखे हैं, बिल्कुल तरावियां आपने पढ़ी हैं, ठीक है, और आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है और आपके चेहरे से लग रहा है कि आप आज बहुत फ्रेश फील कर रहे हैं, ऐसा है कि नहीं? थैंक यू। बिल्कुल, जहाँ तक ईद गुजरने की बात है तो कोविड के बाद 2 साल बाद, पूरे 2 साल से भी बल्कि अब ज़्यादा कह लें, ज़िंदगी की रौनकें बहाल हुई हैं, बाज़ारों में रौनकें नज़र आई, ज़िंदगी की चमक नज़र आई। ऐसा लगता था कि 2 साल ज़िंदगी रुक सी गई है, थम सी गई है। ज़िंदगी की रौनकें बहाल होने से इंसान भी ज़िंदा होता है। ऐसा लगता है कि मेरा नया जन्म हुआ है 2 साल के बाद। 2 साल मेरे ऐसे गुजरे कि शायद मैं किसी कोमा में चला गया था, शायद मैं किसी कोमा की कंडीशन में चला गया था। तो थैंक यू वेरी मच। तो साबिर भाई, मेरा आपसे सवाल ये, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कोमा में चले गए थे? क्या ऐसा मतलब आप आइसोलेटेड हो गए थे और क्या हुआ था? देखिए मेरी जो शख्सियत है, मैं हमेशा घुल मिल जाने वाले लोगों में से हूँ। मेरी तबीयत के बरहक ऐसा हुआ, मीन्स के मैं एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट में कन्वर्ट हुआ, जो मेरी तबीयत से मुताबिकत नहीं रखता था। इसलिए घर, ऑफिस, 1 साल तो पूरा का पूरा एक कमरे में वक्त गुजारा, फैमिली से दूर, भाइयों से दूर, घर वालों से दूर। ऐसा लग रहा था कि शायद मेरे जिस्म से रूह सी निकल गई है। इसीलिए मैंने वर्ड यूज़ किया कि मैं कोमा में चला गया था, क्योंकि ना भाइयों से राब्ता, ना बहनों से राब्ता, ना दोस्तों से राब्ता, सबसे बढ़कर जिनसे मेरी ज़िंदगी, मेरे स्टूडेंट से मेरा राब्ता नहीं था। तो इसलिए ज़िंदगी बहुत डिफरेंट सी हो गई थी। अब क्या प्लान है सर, दिन किस तरह से गुजारेंगे? अभी तो
अभी तो ईद शुरू हुई है, नमाज पढ़ के सीधे आपके पास आ गए, तो देखें आपके प्रोग्राम से फारिग होने के बाद क्या करते हैं। प्लान यही है कि सबसे पहले अपने फादर की कब्र पे जाऊंगा, उसके बाद अम्मी वगैरह से मिलने, फिर भाइयों से, फिर रात को हमारे घर एक ग्रैंड फैमिली प्रोग्राम होता है, तो उसका मुझे बेचैनी से वेट है, क्योंकि आफ्टर 2 इयर्स ये प्रोग्राम हमारे लिए प्लान किया गया है। बहुत खूबसूरत बात अफशा, हमारा कल्चर मुझे इतना अच्छा लगा अभी साबिर भाई ने जो सारी बातें की कि बड़ों से मिलने जाएंगे और अगर वालिदैन जिनके हयात हैं उनको सलाम के लिए जाते हैं, नहीं होते फिर कब्रिस्तान का रुख करते हैं और फिर गेट टुगेदर शाम में दोस्तों से होता है। इमाम साहब आपकी तरफ आते हैं। सर हमने ये भी सुना और देखा कि आपने अपना वेट बहुत कम किया। रमज़ान में आपने मुझे बताएं रोज़े रखे हैं और मतलब इफ्तार में कुछ खाया भी है या जी नहीं? मैं अभी ऑफ एयर आपसे यही बात कर रहा था कि मेरा पूरा घर जो है वो वेट प्लस में जा रहा है, क्योंकि वही शरबत और वही पकोड़े सब खा रहे हैं और मैं इन चीज़ों से ज़िंदगी में पहली बार बाहर हूँ। और इफ्तारी में भी कुछ नहीं खाया? नहीं, मतलब शरबत पकोड़े और नथिंग, सिर्फ खजूर और पानी। पहली लाइफ में पहली बार मैंने ये जो ऐसी मोटिवेशन हमें भी मिल जाए तो क्या लाल बात है। शरबत मैंने जिंदगी में पहली बार अभी तक जो है वो नहीं लिया पूरे रमजान में। नथिंग, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। एक कमिटमेंट अपने साथ, सो आई एम टेकिंग दिस अलोंग विद मी। और इस रमज़ान में मैं इससे बड़े आराम से निकल आया और एक खजूर से रोज़ा रखता था, एक खजूर से रोज़ा खोलता था, मील में एक ही बार लेता था रात को, बस दैट्स इट। तो मैंने इसी तरह 30 डेज पूरे किए। इससे सर एक बात और हमें समझ आती है कि रमज़ान में हम इफ्तारी पे इतना एक्स्ट्रावेगेंट सब कुछ कर रहे होते हैं। इससे आपकी बात से हमें पता चलता है दैट सिंप्लिसिटी, इफ्तार हो कि सहरी हो, ये हमें सीखना चाहिए। देयर आर सो मेनी थिंग्स ऑन द टेबल, बट जो रियल ब्यूटी है आई थिंक रमज़ान की, वो उसकी सिंप्लिसिटी में है, उनकी ट्रेडिशनल चीज़ों में है जो अभी हम आपसे सुन रहे हैं। जी, मैं जिस टेबल पे बैठा होता था वो वहाँ जितनी चीज़ों के आपने नाम लिए ये और इससे और ज़्यादा चीज़ें होती थी, लेकिन असल वही नफ्स पे कंट्रोल कि सिर्फ अपने लिए एक उठाया खजूर, पानी पिया और नमाज के लिए निकल गए, बाकी सब लोग अपना। इमाम साहब आप एक सिचुएशन देते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं समझ लें कोई एक 1000 के पैसों की गड्डी है मैंने यहाँ पे रख दी और ये सारा मीठे आपको केक खाने होंगे, बिस्किट्स खाने होंगे, आप खा सकते हैं? नेवर। क्यों? इसलिए कि मैं अपनी लाइफ की जिस ट्रांजिशन से गुजर के यहाँ पहुँचा हूँ, मैं अब दोबारा वहाँ नहीं जाना चाहता। 5000 रख देते हैं, 1000 छोड़। नहीं, आप 1 लाख रख दें। आई एम नॉट गोइंग टू। उनकी इंटरमिटेंट फास्टिंग में बड़ी मेहनत हुई है, मैं वापस नहीं जाना चाहता। आई डोंट वांट टू गो बैक। अच्छा साबिर भाई आपसे करते हैं फिर सवाल, उसके बाद इमाम साहब से करेंगे। साबिर भाई ये बताएं, ईदी बच्चों को तो आप देते होंगे, आपने बताया आपको बच्चों से बहुत प्यार है, कोई आपको है ईदी देने वाला? आपको जी माशाल्लाह, कितनी ईदी मिलती है आपको? अम्मी हयात हैं, अम्मी माशाल्लाह माशाल्लाह। और मेरे मामू इकबाल मामू जो जिनके साथ मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारी यादें उनके साथ बहुत सारा वक्त गुजारा है माशाल्लाह। वो मुझे अमेरिका से ईदी भेजते हैं, वो भी माशाल्लाह डॉलर्स में आती है। तो एक्चुअली हमारा ख़ानदान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा ख़ानदान है, ननियाल की तरफ से बहुत बड़ा ख़ानदान है, ददियाल अच्छा खासा बड़ा ख़ानदान है। तो माशाल्लाह मुझे भी मेरे मामू, मेरे ताया वगैरह बच्चों की तरह ट्रीट करते। तो मेरे ईदी मिल जाती है आपको और उसका करते क्या है? अभी अफशा छोड़, हमें कितनी ईदी देंगे आप ये बताएं? जितनी मांगे आपके लिए, तो दिल भी हाजिर है, जान भी हाजिर है। सर ईदी दिल से दी जाए तो थोड़ी सी भी काफी है, बाप हमें जो दिल करे हम आपसे ईदी लेंगे। आप बोले ईदी का कोई मसला नहीं है। मैं अफशा के लिए तो मैं ईदी लेकर आया हूँ, क्योंकि ये मेरी स्टूडेंट भी है इंशाल्लाह, और मैं इनके लिए पहले से ही लेकर आया था। अफशा आपकी ईदी। थैंक यू सो मच सर, ईद मुबारक। अच्छा, मेरी ईदी के जो पैसे होते हैं वो क्या करते हैं, मेरी पॉकेट मनी बच जाती है, मेरे पास से अपने पैसे बच जाते हैं। मैं अपने बच्चों को या अपने भतीजों को, भांजों को, माशाल्लाह 100+ भांजे भतीजे हैं। अच्छा ये अब बताएं कि ग्रीनिच में आप दे रहे हैं सबको ईदी? इंशाल्लाह सबको दे रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा साबिर मुझे तो मिल गई। Are you jealous? ओके, अभी देखें हमारे सारे बिहाइंड द कैमरा पूरा स्टाफ बैठा हुआ है, लोग हमें देख भी रहे हैं, जो ये सारे हमारे ग्रीनिच के लोग ये प्रोडक्शंस कर रहे हैं, उनको तो ईदी बनती है। देखिए ईदी का मतलब पैसे नहीं है, प्यार। असल तो दिल से जो निकलने वाली दुआएं और दिल से निकलने वाली जो बातें हैं वो ईदी से बढ़कर होती अच्छा है। मुझे ऐसा लग रहा है साबिर भाई को अमेरिका से ईदी आती है, तो मैं चाह रहा हूँ कि जो डॉलर्स हैं वो यहाँ मुंतकिल हो। इंशाल्लाह लेकिन मैं सोचूं संभाल के रखूं ताकि डॉलर्स की कीमत बढ़ती रहती है, घटती रहती है। सर हम संभाल के रखेंगे, आप बस तकसीम अच्छा मेरा कर वादा है, जब जैसे डॉलर 200 रुपए का हुआ $1 तो इंशाल्लाह आई पे यू। That's so sweet. So sweet of both of you. So sweet of both of you. Moving on, कुछ और सवाल अच्छा सा पूछें इनसे। बिल्कुल। अच्छा एक सिचुएशन देते हैं अफशा इनको। बिल्कुल। ठीक है, सिचुएशन ये है कि ईद तो गुजर रही है और गुजारेंगे, अभी 2 दिन बाकी हैं, आज पहला दिन है।
एक दिन के लिए अगर प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, साबिर भाई लग भी रहे हैं इस वक्त इमरान खान को, जिस तरह से आपने कॉपी की है ना, मुझे लग रहा है कि आप इंस्पायर हैं इमरान खान से। तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की हम बात करें, अगर हम मौजूदा कोई भी आपको एक दिन के लिए चार्ज दिया जाए कि आप मुल्क के वजीर आजम बनेंगे या चीफ मिनिस्टर बनेंगे, तो आप कौन सा ऐसा इक़दाम या काम है जो आप समझते हैं फ़ौरन करेंगे? सबसे पहला जो काम मैं ये करूँगा कि मेरी कोशिश होगी कि मुल्क से गुर्बत ख़त्म हो जाए, ख़जाने में जितना पैसा है वो मेरी कोशिश होगी मैं गरीबों में बांट दूं। भाई सब ये बातें करते हैं, वो बात जो मतलब हम कहें कि नहीं ये वाकई हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ जो कुछ ऐसा इंटेलेक्चुअल माइंड में आपके आता हो सोचते हुए पढ़ाते हुए? मैं सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि मुल्क में एजुकेशन को फ्री कर दूँगा। इमरान साहब सिचुएशन आपके सामने भी रखते हैं, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप क्या? जी, मैं तो इमरान खान का फॉलोअर जब से हूँ। जब इमरान खान पॉलिटिक्स में आए थे उस वक्त लोग कहते थे कि आप कहाँ जा रहे हैं, मैंने कहा आई जस्ट फॉलो हिम, जो भी जहाँ भी लेकर जाए। तो ये मतलब 20-25 साल पुरानी बात है। बट जो मेन पॉइंट था इमरान खान का इज़ अबाउट लॉ इन्फोर्समेंट एंड करप्शन। मेरा एजेंडा वही है, क्योंकि सारी ऑफशूट्स करप्शन की और प्रॉब्लम्स वहीं से निकलती हैं। अगर लॉ उसकी इम्प्लीमेंटेशन और करप्शन पे सही मानों में कंट्रोल हो जाए तो सारी चीज़ें खुद ठीक हो जाएंगी। और हमारी नेबर कंट्रीज़ जहाँ आप देखें, चाहे फार ईस्ट देख लें, मिडल ईस्ट देखें, वहाँ ये सब चीज़ें लॉ की इम्प्लीमेंटेशन है, वहाँ ये सब चीज़ें नहीं हैं। हमारे लॉ तो है, इम्प्लीमेंट नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा सर इमाद, आपसे एक छोटा सा और सवाल है मेरा, क्योंकि आप मेरे टीचर भी रह चुके हैं, आपके काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस मैंने सुने हैं। सो यू आर अ पर्सन विद फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड लाइफ स्टोरीज। मुझे एक बात बताएं कि जब आप बच्चे थे तो आपकी उस वक्त की ईद में और अब की ईद में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? उस वक्त ईद में थे कि जो एक बच्चों के वो होते हैं ईद आने से पहले कि हम वहाँ जाएंगे, वहाँ से इतनी ईदी मिलेगी, तो उस वक्त बच्चों की ये ख्वाहिशें होती हैं कि मैं इतने जमा कर लूँगा पैसे। तो हर बच्चे की, अभी जैसे मैं अपने छोटे बेटे को देख रहा हूँ तो वो उसके सारे प्लान्स ये हैं कि मुझे वो इतने देते हैं, इतने देते हैं, लास्ट ईयर इतनी मिली थी। तो वो हम उस वक्त उस मोड में थे। अब मैं लाइफ के जिस स्टेज में हूँ, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मेरा रोल लाइफ में बिल्कुल डिफरेंट है। सो मेरी अब थिंकिंग बिल्कुल डिफरेंट है। अब मेरे आगे बच्चे हैं और कजन्स उनके बच्चे हैं, तो अब इट्स नॉट टेकिंग, इट्स गिविंग अवे। अच्छा, कुछ चीज़ें बड़ी डिफरेंट हो गई है। टेल मी इफ यू एग्री विद मी रोहिल। पहले जब हम बच्चे होते थे तो हमें ऐसा लगता था कि ईद कार्ड लेने हैं, सबको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, यू नो, नानी के नाम का ईद कार्ड, दादी के नाम का ईद कार्ड। अब वो चीज बच्चों में नजर नहीं आती है। सो व्हाट डू यू थिंक रिप्लेस किन चीजों से हुई है? ये टेक्नोलॉजी ने सारे हमारे लाइफस्टाइल को सारा बदल दिया। सारे हर चीज, वहाँ कार्ड भी, अगर कोई ग्रीटिंग भी है तो व्हाट्सएप जा रही है। आई विश आई कुड ब्रिंग दैट ईद कार्ड या फेसबुक पे जा रहा है, या हमारे प्ले कार्ड्स हैं, आप देखें इस तरह से बिल्कुल समथिंग लाइक दैट। तो सब डिजिटल हो गया, बस ये है सारा। आई वांट टू ऐड समथिंग। जैसे हम क्योंकि मीडिया की, तो मैं मीडिया की ही यहाँ बात करूँगा। 1964 में मार्शल मैक्लूहान ने कॉन्सेप्ट दिया था कि हमारी दुनिया जो है ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से। लेकिन लास्ट 2 इयर्स में हमने ये देखा कि कोविड की वजह से हमारी जो फैमिली है, नाउ वी आर लिविंग इन अ डिजिटल फैमिली, वी आर द मेंबर ऑफ डिजिटल फैमिली। तो बच्चों के पास डिवाइसेस आ गई हैं, गैजेट्स आ गए हैं, तो लाइफ एकदम चेंज हो गई है और लाइफ जो हो गई एक स्क्रीन तक महदूद हो गई है। तो पहली जैसी कोई बात नहीं रही और आने वाला दौर तो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा है, क्योंकि हो सकता है कि हमारी लाइफस्टाइल, जो हमारी लाइफस्टाइल डिजिटल लाइफस्टाइल में कन्वर्ट हो जाए और हम बात, हर पैगाम, हर चीज़, इवन ईद मुबारक भी हम जो हम फेस टू फेस कहते हैं या बोलने की कोशिश करते हैं या हमारा दिल चाहता है, वो भी हमारा दिल भी, हमारे इमोशंस भी मोहताज हो जाएंगे डिजिट्स के। सो लाइफस्टाइल, अब हमारी जो लाइफस्टाइल है एंटायरली चेंज हो गई है और आने वाला फ्यूचर इससे भी ज़्यादा मुझे ख़तरनाक लगता है। अच्छा साबिर भाई, ये तो आप अभी क्लास है, मुझे लग रहा है आप क्लास दे रहे हैं। सीरियसली हम डिफरेंट बातें करते हैं। मुझे पता है आपका बचपन कैसा था, कभी घर वालों से डांट पड़ी हो, शरारतें करते थे? देखिए बचपन में सभी शरारतें, कोई ये नहीं कहता था हम बचपन में प्रोफेसर थे, ऐसा नहीं। ठीक है, तो बचपन आपका कैसा था? किसी बात पर घर वालों से डांट पड़ती थी या कोई ऐसी चीज़ आप शेयर करेंगे कि काश मैं अगर बचपन के दिनों में वापस चला जाऊँ तो मैं ये चीज़ करूँगा? या देखिए, मेरा सबसे बड़ा जो मेरे फादर के साथ रहता था मसला या झगड़ा जिसे कह लें या कॉन्फ्लिक्ट रहता था, मुझे बचपन से मूवीज़ देखने का शौक था। तो मेरे घर वाले मुझे अलाउ नहीं करते थे सिनेमा जाने के लिए, तो मैं छुपकर अपने ताया के बच्चों के साथ, यानी मेरे अपने कज़न्स के साथ जाता था। तो इस बात पे हमेशा मेरे फादर के साथ, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनके साथ यही मेरा कॉन्फ्लिक्ट रहता था। इसके अलावा मुझे अम्मी की तरफ से एक हमेशा डांट पड़ती थी। मैं
मैं शायद अपनी एक खाला है उनके घर जाना पसंद नहीं करता था, बिकॉज वहाँ पे जो कजन्स थे वो थोड़े से डिफरेंट टाइप के थे। जी बिल्कुल। तो ये वजह, ये बचपन की वो यादें जो अभी तक मेरे माजी का एक हिस्सा हैं, और ये एक ऐसा माजी है जो कभी मेरे माइंड से इरेज नहीं होता। अच्छा जी, ये बड़े मजे का सेशन हुआ है रोहिल हमारा। इसी के साथ साथ हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। हमारे साथ हमारे 2 मारूफ पर्सनालिटीज मौजूद थी जिन्होंने हमें बताया कि उनकी ईद कैसी गुजरी, उनका रमज़ान कैसा था। हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हमारे फैकल्टी और स्टाफ फिर से हमें ज्वाइन करेंगे, कुछ नई बातें सुनेंगे, कुछ नई कहानियां सुनेंगे। वेलकम बैक ऑडियंस, हम हैं यहाँ पे ईद की ट्रांसमिशन पे। बहुत सारी बातें हुई, ईद के डिस्कशन हुए, रमज़ान कैसा गुजरा उस बारे में भी बात हुई। अब का सेगमेंट होगा थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियो में द कपल ऑफ ग्रेनिच, सर सैयद शिराज अहमद एंड मिस वफा शिराज। ईद मुबारक आप दोनों को। मुबारक आप लोगों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। शिराज साहब ठीक हैं, खैरियत से? बस बेगम के साथ बिठा के कैसे हो सकते हैं ऐसे ही। अच्छा, मैं थोड़ा सा ऑडियंस आपको बता दूं, माशाल्लाह माशाल्लाह बार बार इसलिए बोलता हूँ, एक आइडियल मुझे लगते हैं दोनों। ग्रेनिच में भी साथ होते हैं, घर में भी साथ होते हैं, और मैं शिराज को देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार कैसे मैनेज करते हैं। अब इत्तेफाक से इनकी प्लेसमेंट भी आसपास हो गई है, तो अभी ये सारी बातें होंगी कि हम पूछेंगे वफा शिराज से आपने क्या टैक्टिक्स लगाए हैं। घर में भी आप शिराज पर नजर रखती हैं, ऑफिस में भी आप शिराज पर नजर रखती हैं। सबसे पहले मुझे बताएं कि रमज़ान आपके कैसे गुजरे? रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजरे, बहुत मज़े के डिशेस पर आगे खिलाई हमारी बेगम ने। और आपने बनाई उन्होंने बनाई? अब ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह का शुक्र है यही बनाती हैं, लेकिन ये कि मैं साथ में इनके हेल्प करवाती। ये तो अच्छी बात है। क्या हेल्प करवाई है वफा इन्होंने? कितने पकौड़े बनवाए, कितनी कचौरियां बनवाई? मुझे लग रहा है वफा ना वही बैठी है आज मैं बस बोलूंगी। नहीं काफी हेल्प कराते हैं। मैं सिर्फ जो कुकिंग वाला काम है जो चूल्हे पे हो रहा था वो करती हूँ, लेकिन बाकी जो सारा चीजें सखान लगाना, प्लेट्स की सब लगा के सब चीजें करना, वो सब ये करे। ये देख रहे हैं आप, स्पिरिट ऑफ रमजान दिख रही है हमारे यहाँ पे। ये सारी प्लानिंग है इनकी, ये सब रास्ते में बातें करते हैं, हम ये बात करेंगे, हम वो बात करेंगे। वो देखें इन्होंने कोनी ऐसे रखी है, जरा सा कोई मैं जवाब दिया ना, ये पढ़नी है मुझे यहाँ से। सर शिराज, इतनी प्यारी लग रही है आपकी बेगम, जरा तारीफ करें ताकि वो रिकॉर्ड करके वो क्लिप रख लें अपने पास। ये शिकवा तो नहीं है कि तारीफ कम करते हैं? कम नहीं, कम की मुझे शिकवा नहीं है, ये मुझे शिकवा ये कि बिल्कुल नहीं करती। ये अच्छा था। बिल्कुल का नहीं। अरे तो आज तारीफ कर दें। आज हो जाए तारीफ उस खुदा की जिसने इन्हें बनाया। ये तो आपने शेर पढ़ दिया, ये मतलब कोई गाने ही गाते सर। सीधा हो गया गाना हम गाएंगे, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बनके, बस इतना ही आता है। अच्छा मुस्तफा, मुझे ये बताएं, शादी के बाद और अब तक कितना चेंज इनमें आया? मतलब कितने ज़्यादा शादी के बाद, भाई सब एक्सप्रेसिव होते हैं, सब अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करें, वक्त गुजरता जाता है, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, माशाल्लाह आप लोगों की बेटी भी है, तो अब कितना चेंज आया है शिराज में शादी के बाद से अब तक? शादी के बाद से अब तक में ये चेंज है कि पहले ये बहुत अच्छे शौहर थे और अब ये बहुत अच्छे बाप हैं, तो बस ये इसके अंदर बहुत सारा चेंज है। इन्होंने घुमा दिया है, ये जो सर शिराज को करना चाहिए वो आज मिस वफा कर रही है। नहीं, चेंज इस सेंस में चेंज मतलब गुड चेंज की बात करें, एक्सप्रेशन तो हमें पता है, हम सर शिराज के आते भी नहीं, हमें ऑफिस में नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं, एक्सप्रेशन वो जिस दिन आते हैं उस दिन हम परेशान होते हैं। गुस्सा करते हैं सर? गुस्सा तो जनरल नेचर है। देखा भी बात करने से पहले देखा, अब शाम नहीं, गुस्सा तो नेचुरल एक चीज़ है, वो सबको ही आता है, लेकिन ये जो है गुस्से में खामोश हो जाते हैं, जो ज़्यादा परेशानी का वो होता है। क्योंकि मैं उस तरह की उसमें हूँ कि मेरा स्टेट ऑफ माइंड ये कहता है कि आप जो है गुस्सा करें और निकाल दें जो भी बात है, लेकिन ये गुस्सा निकालते नहीं है, उसको जमा करके ना अंदर रख लेते हैं। गुस्सा करती हैं? ये सच बताएगा, आपने हेल्प लिया भी प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले? नहीं, वैसे तो कभी ऐसा मौका नहीं आया, हाँ, लेकिन ये गुस्सा तब करती हैं जब बेटी के मामले में अगर उनकी कुछ ऊंच नीच हो जाए, उसके मामले में फिर ये अपने हद तक तो कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं, लेकिन बेटी के मामले में जो है ये बहुत सेंसिटिव है।
शॉपिंग की बात कर लेते हैं। बिल्कुल, मैं उसी तरफ आने वाली थी। मिस वफा, क्या शॉपिंग की आपने और सबसे ज्यादा क्या पसंद है शॉपिंग करना? आपको देख के मुझे लगता है कि आपने फुल चमकीले से स्कार्फ, चमकीले दुपट्टे, झुमके सब कुछ लिया होगा। ये जो है ना वैसे एक वो है कि आपने जो है वो थोड़ा बहुत सही गैस किया है कि मुझे चमक वाली चीज़ें पसंद है, मगर अब मुस्फरा की हद तक, अब बेटी की हद तक पसंद है। मुझे लगता है कि अब वो चीज़ें जो मुझे अच्छी लग रही हैं वो सब जब मैं देख रही हूँ तो लेने की उसमें तो मुझे फिर होता है कि इसे छोटे साइज में निकाल दो, तो छोटे साइज में निकाल दो ताकि मेरी बेटी क्या लिया? अपने लिए बहुत ज्यादा नहीं पसंद चमक वमक की चीजें, ये तो आज इसरार था तो मैंने पहन लिया, वरना ये नहीं पसंद। मैंने काफी टाइम से इस तरह के स्कार्फ लेना आप मेहंदी लगवाएंगी आज? कुछ मसरूफियत ऐसी थी आज, हमें तो नहीं, मैं तो नहीं लगा सकी, लेकिन आप लगवाएंगी? हाँ, मसरूफियत भी है और थोड़ा ये कि टाइम का भी इशू होता है, बेटी के साथ अब मैनेज करना मुश्किल होता है, और फिर हर चीज का एक बात के वो हस्बैंड को पसंद है। शिराज, ज्यादा खर्चा तो नहीं करवा दिया उन्होंने इस दफा इस ईद पे? अच्छा, मजे की बात ये है कि मैंने क्या किया था, मैंने ईद से रमज़ान से पहले ही मैंने कह दिया जो शॉपिंग करनी कर लो, रमज़ान में आप मुझे बिल्कुल नहीं एक तो रोजा ऊपर से वॉलेट से पैसे निकले, रोजा, और फिर वहाँ पे मार्केटों में जाना, वहाँ पे इतना रश, वो मुझसे ना वो होता है, तो मैंने घुमाती है एक स्टोर से दूसरे बिल्कुल बहुत बेटी को गोद में अच्छा हमारी बेटी माशाल्लाह साथ होती है ना, तो उन्हें कंट्रोल करना अब बड़ा मजे का सीन होता है जब वो किसी दुकान में जाती है, वही शॉपिंग दुकानदार उसे उन्हें छोड़ के बच्ची में लग जाते हैं कि ये कोई चीज़ इधर उधर से ना फेंक दे, तो बस उनको मुसलसल लेके फिरना और वो करना एक एंजॉयमेंट भी है, लेकिन काफ़ी ये कुछ दिनों की बात है, इन दोनों की हुकूमत होगी, फिर ये दोनों निकला करेंगी और वक्त देखें आप कैसे गुजरेगा। अच्छा ये बताएं, साथ काम करने के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या? अच्छा, सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि हम साथ आते और साथ चले जाते हैं, लेकिन एक डिसएडवांटेज ये भी है जैसे कि जो शक्लें हम यहाँ देख रहे हैं वही शक्लें घर पे भी देख रहे हैं। देखें आप सुन ये बात है, तो ये एक थोड़ा डिसएडवांटेज। देखें मुंह बन गया, घर जाके पता चलेगा सरशराज, इस बात का हिसाब होगा। अभी आप देखें, अब पता लगेगा, हिसाब लेंगे इस बात का कि और कौन सी शक्ल देखने का दिल चाह रहा है आपको? नहीं, वैसे ये चीज सही है, ये चीज मैं एग्री करूंगी हाँ, कि आप जो है वो पूरा टाइम एक ही जैसी चीजें आप उससे बोर हो जाते हैं, अगर आप वही चीज डिफरेंट वो करें जैसे हम। लेकिन एक चीज जो एडवांटेजेस से चलते हैं उसमें ये होता है कि हमारे पास डिस्कशन के बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, यानी कि यहाँ की जितनी चीजें हम एक साथ डिस्कस कर सकते हैं। जो जॉब क्योंकि एक औरत के लिए जॉब करना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है कि सोसाइटी से मुश्किल बना देती है, तो वो चीज़ मुझे मुश्किल नहीं लगती है कि जो यहाँ पे हो रहा है देर सवेर रुकना है, काम करना है, कोई चीज़ है, तो वो इनको पता है और ये मेरे साथ रुके हुए हैं उस चीज़ के लिए। जबकि शादी से पहले जब मैं रुकती थी तो ज़ाहिर पेरेंट्स परेशान होते थे, मैं खुद भी होती थी कि रात में कैसे जाऊँगी, देर हो जाएगी, फला हो जाएगा, या पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही थी जिन चीज़ों में पार्टिसिपेट करना चाहती थी। और डिसएडवांटेज ये है कि हाँ, वो जो बोरिंग वाला एक फैक्टर है वो ये कि फिर हमारे पास ऑफिस से रिलेटेड और डिस्कशन है पर अपनी कोई बात नहीं। उसको टैकल किस तरह से करते हैं, क्या सोल्यूशन है? आप कहाँ दोस्तों के साथ जाती हैं, अम्मी के घर पे चली जाती हैं थोड़ी देर के लिए? अच्छा, हमारे साथ ना एक बड़े मजे की चीज ये कि हम जो है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा बात भी नहीं करते, और हमारा जो हम दोनों एक दूसरे का जो ना वो है कि हमारी जो भी बातचीत है ना, हमारा माइंड एक दूसरे से बात करके रिलैक्स होता है। और जो हमारे साथ के लोग हैं इनका तो नहीं मुझे पता कि फैमिली ने कभी इस तरह कुछ कहा है, लेकिन मेरी फैमिली मुझे कहती है कि तुम तो बिल्कुल चेंज हो गई हो, अभी ये जो है लेटी हुई है, अभी ये बैठी हुई है, अभी इनके हस्बैंड आएंगे तो ये बातें करेंगी। तो वो एक जो चीज़ है वो भी ये है कि कंफर्ट जोन हमारा बहुत ज़्यादा हो गया है कि अब हम एक दूसरे से आराम से बात कर लेते हैं, हर तरह की बात कर लेते हैं। ये जो है वो इसी वजह से कि हम पूरा टाइम एक साथ गुजार रहे हैं। मैंने ऑब्जर्व किया क्योंकि आप साथ में भी होते हैं, मुझे लगता है कि आप लोग की अंडरस्टैंडिंग इससे अच्छी हो गई है माशाल्लाह से, क्योंकि आप कह रही हैं ना डिस्कशन हम करते हैं सीन्स की, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग अच्छी रिलेशनशिप में अगर होगी तो वो आगे जाएगा। और आप अगर दूसरी बात ये कह रही कि जी बात नहीं कर रहे, मेंटल के थॉट के जरिए पता लग जाएगा दिमाग में क्या चल रहा है, तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। ये जो है ना बड़े मजे का एक वो है, हमारी शादी का सबको पता है कि कैसे हुई और सब था यूनिवर्सिटी में ही सब कुछ। तो मैडम सीमा ने मुझे एक दफ़ा कहा था कि जो ये शादी का जो बात हो रही थी, एक दफ़ा तो उन्होंने कहा कि सिर्फ मशवरा ये है कि बस जितना हद तक कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो ना उतना कर लो। तो यही वाला जो फॉर्मूला मैंने भी अपना लिया, इन्होंने भी अपना लिया, वो जितना हद तक कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं वो कर देते हैं अपनी चीजें, मैं जितना हद तक कर सकती हूँ। आपको मशवरे मिले, ठीक है? नहीं, हम दोनों को मिला था। आप दोनों को मिला था, अच्छा मुश्तरका मिला था, ठीक ठीक। तो ये वाली चीज बहुत अच्छी है उनकी के, और ये हमारे लिए बहुत काम आती है।
अच्छा, मुझे सबसे अच्छी बात इन लोगों की ये लगती है माशाल्लाह कि इनकी शादी ग्रेनिच से ही हुई है, और जो मुझे बताते हैं सारे लोग पुराने यहाँ पर कि जी इधर से मेहंदी जा रही है, इधर से मायू हो रहा है, और इधर से सब कुछ ग्रेनिच की शादी कहा जाता है। अच्छा, जो हमारी एंगेजमेंट की ना उसमें सईद साहब और मैडम यहाँ थे नहीं, और भी लोग नहीं थे, सरफ नवाज नहीं थे, सनम वगैरह नहीं थे, सब लोग। तो ये लोग बेचारे टाइम के फर्क से भी, लेकिन हमारी एंगेजमेंट में भी स्काइप आए थे, और जिस वक्त हमारी एंगेजमेंट वगैरह हुई थी उस टाइम पे ये हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे, सईद साहब भी, मैडम भी। तो उस टाइम इतना फैमिली वाला वो एक आता है कि क्योंकि वैसे भी एक फैमिली है कि मैं तो हुई वीसी ऑफिस से, तो पहले तो वो फैमिली की तरह ही है, लेकिन ये हमारा का हमने अडॉप्ट किया इनको अलग डिपार्टमेंट से। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं होता सास का दामाद से ज्यादा वाला वो है, अब मुझे जेलसी भी होती है कि मैडम से ज्यादा बातचीत इनकी हो जाती है, मेरी नहीं हो पाती। इसीलिए तो हम इसे ग्रेनिच फैमिली कहते हैं, इट रियली इज लाइक अ फैमिली। अच्छा, ये बता, ईदी मिलती है आपको? ईदी? हाँ। तो सोच के क्यों जवाब दिया? बोले मिलती है, कम ज्यादा बोले एक अलग बहस है, मतलब मिलती तो है। हाँ, मिलती है। इस दफा ज्यादा करने के इरादे में, इसीलिए बहुत सोच के हाँ बोला है। हाँ, मैं ये सोच रही थी कि ये लास्ट टाइम मिली थी, नहीं मिली थी, याद आ रही है। इस दफा तो प्रिपेयर हो जाए अच्छी खासी। अच्छा, इस दफा जो है ना वो चूंकि बेटी साहिबा के प्लान कुछ और है, तो उनके लिए काफ़ी पहले से एक अमाउंट साइड किया जा चुका है। तो वो अब बेटी ही माशाल्लाह हमारी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईद में, मैं मुझे बस याद नहीं रहा, हम इंशाल्लाह इनको तीनों को बुलाएंगे, बेटी भी इंशाल्लाह थोड़ी सी और ग्रो कर जाएगी, क्योंकि अगर वो अभी बुला लेते तो कपड़े नोच रहे होते, ये बिस्किट्स जो बुरा हाल वही बात करी होती है, हम नहीं बात कर सकते थे फिर। मिस वफा, ईदी का क्या करेंगी इस दफा? अपनी ईदी का और यूजुअली क्या करती हैं? सेव कर लेती हैं या कोई शॉपिंग कर लेती हैं? नहीं, मैं तो बिल्कुल कोई चीज किसी तरह की सेव नहीं कर सकती। ये हमारे घर में जो है वो सेविंग अगर वो कर सकता है कोई तो ये करते हैं, मैं नहीं कर सकती। और मैं और मेरा तो ये होता है कि मैं मुस्फरा को इसी में लगाऊंगी, जो क्योंकि हम बचपन से आदत थी ना कि अभी ईदी मिली और अभी बराबर वाली दुकान पे जाके वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो वो मेरा बचपन गुजरा है और मुझे उसी में मजा आता था ईद पे। कि अब ये होता है कि बच्चों के लिए कि मेरा। अच्छा, बेटी की अटेंशन किस पे ज्यादा है? आप दोनों साथ ही घर आ रहे होते हैं, इनको ज्यादा प्रेफरेंसेस दे रही होती है, आपके पास अट्रैक्शन ज्यादा हो रही होती है, किससे? मुस्फरा का बेसिकली टाइम सेट है, जैसे कि हम जाते हैं तो मैं उसे रिसीव करती हूँ ताकि ये वेट करे तो गाड़ी में हमारा, तो उस टाइम वो मेरे साथ होती हैं और ये गाड़ी चला रहे हैं तो ये उनको डिस्टर्ब नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी। लेकिन रात में जो है ना, जब हम सो रहे होते हैं तो उसको इनको जल्दी सोने का मसला है कि जल्दी सोऊंगा, और हाँ जल्दी सोने का मसला बनाया है इन्होंने। मेरे साथ नहीं है तो मैं जाग लेती हूँ, तो उस वक्त वो इनके साथ लगी हुई होती है कि इनको जगाए, इनसे बात जब मेरा सोने का टाइम होता है ना, वो आ जाती है बाबा बाबा बाबा, बस उसके बाद वो आधा एक घंटा कहाँ जाता है उनके साथ मस्तियों में पता ही नहीं चलता। ये पहले 11 बजे दौड़ सोने वाले लोग। हाँ, अच्छा, ये सबसे बड़ी शिकायत यही है कि आपकी बेटी आपको जितना तंग कर रहे आप कुछ नहीं बोलते, मैं जरा सा आपको हाथ लगा लूं आप एकदम से। ये तो यूनिवर्सल रूल है। हाँ, यूनिवर्सल रूल है ये। अच्छा जी, बड़े मजे की बातें हो रही है यहाँ पे, दिल नहीं चाह रहा कि इस सेगमेंट को खत्म करें हम, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एंड में जो है कुछ गाना हो या कोई शेर वगैरह हो जाए तो अच्छी बात है, उससे आगे प्रोग्राम करें। हम कहाँ गाने वाली तो मतलब कोडिंग कर शिराज सकते हैं। भाई, आज आपने गा कर या कोई पैगाम देकर इनको एक दफा आपने फिर जो है उसी तरीके से प्रपोज करना जो शादी के 2 या 3 दिन बाद। अच्छा, प्रपोज करने से तो एक बड़ा करेंगे है, क्यों? कब किया था आपने? अभी करेंगे ना हम। तस्वीर, पिक्टोरियल एविडेंस है मेरे पास इस चीज का। तस्वीरें बनाई जा सकती हैं। इससे भी पोर्टल बना ली आपने, इससे भी पोर्टल रिकॉर्ड बैठा हुआ है। अच्छा, मजे की बात, मैं आपको एक वाक्य शेयर करता हूँ। मैं जब ऐसा सब कुछ प्लान हुआ तो सबसे पहले मैंने सही साहब से बात करी। सही साहब से को जब मैंने बताया कि सर ऐसे ऐसे फैमिली का इरादा है और ये है वो है, तो कहने लगे बेटा देख, मेरी बेटी की तरह है, अगर उसने कभी शिकायत करी तो वे तेरी खैर नहीं है। तो बस वो दिन है और आज का दिन है। मैंने सही साहब के कमरे में जाने नहीं दिया इसको। सही चलें, थैंक यू सो मच शिराज साहब, आपने वक्त निकाला और मुझे खुशी है कि सब लोग इतने शॉर्ट टाइम में जो है, ईद का मसरूफ दिन होता है, सबके घरों में भी एंगेजमेंट होती है, लेकिन आप लोगों ने ग्रेनिच फैमिली का कहा, आपने फैमिली को भी टाइम दिया। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू मिस वफा, आप लोगों ने वक्त निकाला। वेलकम बैक ऑडियंस, बहुत बहुत ईद मुबारक आप सबको। उम्मीद है कि आप शीर खुरमे के साथ, गुलाब जामुन के साथ अपनी ईद गुजार रहे होंगे और ये शो देख रहे होंगे। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसमें हमारे साथ हैं फैकल्टी एंड स्टाफ मेंबर्स सर सईद सयाल एंड मिस सनम तजम्मुल। बहुत बहुत ईद मुबारक आप दोनों को। ईद मुबारक। थैंक यू।
ओके सईद ये बताएं कि आपको मैंने बहुत खामोश, मेरे ख्याल से अफशा आपको भी, सभी लोगों ने आपको बड़ा खामोश देखा है। हमें सबसे पहले बताएं कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की है? कम बोलते हैं, ज्यादा बोलते हैं? नहीं, मैं बहुत कम बोलता हूँ। और वजह ये है कि जिसके साथ मेरी ना एक बन जाती है, एक तो मैं उसके साथ शायद मैं ज़्यादा बोलता हूँ। अदरवाइज अगर मैं किसी नए माहौल में सरकार ने भी ज्यादा बोलने पे टैक्स नहीं लगाया है अभी, हम इस पे कोई हमें वो नहीं। जी बिल्कुल। ठीक है सईद, रमजान आप कैसे गुजरे? बहुत अच्छा ग्रीनविच में भी आप पढ़ा रहे हैं, प्लस फिर फैमिली भी होती है, और जी आपकी बिल्कुल। फैमिली कराची में या कराची से बाहर है? नहीं, कराची में। मेरी अपनी फैमिली कराची में है, बाकी पेरेंट्स जो हैं वो तो होम टाउन में है वो तो। ठीक है सनम, आप बताएं आपके कैसे गुजरे रमज़ान? और बस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रोज़े गुजरे, और स्टार्टिंग के जो 10 रोज़े होते हैं वो काफ़ी जो है वो हेक्टिक और मुश्किल होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप रेगुलरली मतलब 8 to 10 रोज़े आपने शुरू के रख लिए तो उसके बाद फिर आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है, और अगर आपने बीच में ये ब्रेक कर दिया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। सनम, आप लगता है कि आपने गलती से कुछ ना कुछ खाया जरूर होगा, ऐसा लग रहा है? नहीं, गलती से कुछ नहीं खाया। हाँ, ये है कि सम टाइम अगर ज़ाहिर रोज़ा नहीं रखा तो फिर तो वो एक अलग बात है, लेकिन गलती बचपन में होता था, लेकिन अब ऐसी गलती नहीं होती। बचपन में क्या होता था? मतलब गलती से पानी पी लिया या बादाम खा लिया, कुछ ऐसे हो जाया करता था, या चिड़ी रोजा रख लिया। अच्छा, चिड़ी रोजे का क्या कॉन्सेप्ट है ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। उस टाइम जब मैं KG2 या मतलब मैं स्टार्टिंग से रोजे थोड़े बहुत मतलब रख रही हूँ, जब मैं 1-2 क्लास में थी, तो मतलब ऐसा जितना आइडिया नहीं होता था, तो मुझे मेरी अम्मी कहती थी कि दोपहर 12 या 1 बजे ना रोजा खुल जाता है, तो मुझे यही होता था कि भाई सुबह खा लिया, अब दोपहर 12 बजे रोजा खुल गए, तो बस बचपन में अभी रखा चिड़ी रोजा कोई? अभी दिल चाहा? नहीं, अभी दिल तो चाहता होगा। दिल तो चाहता है, लेकिन कुछ रखे कुछ नहीं रखे, उसको इंशाल्लाह ताला फिर आगे। अच्छा रोहित, शॉपिंग की बात करें जरा, सिंस वी हैव अ फीमेल हियर। बिल्कुल। मिस सनम, ये बताएं कि सबसे ज्यादा क्या चीज की शॉपिंग पसंद है आपको ईद के दौरान? कुछ अच्छा, होते हैं मेरी तरह के जो मैं थोड़ा सा फोकस करती हूँ कि ब्रांड की शर्ट्स, ज्यादातर मेरा फोकस इस पर होता है, तो ड्रेसिंग सेंस पे मैं थोड़ा सा अपना जरा ज्यादा फोकस करती हूँ। तो ज्वेलरी नहीं, झुमके उमके नहीं, ये सब इसका मुझे शौक नहीं है। हाँ, अगर गोल्ड की ज्वेलरी हो तो उसमें थोड़ा सा मैं लेती हूँ इंटरेस्ट, वैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये भी लेकिन डिफरेंट है। एक चीज बड़ी जबरदस्त है, लोग पूरा रमजान शॉपिंग कर ही रहे होते हैं, 20 रमजान के बाद निकलते हैं, चांद रात में लाजमी निकलना है, एक अलग ही वाइब है चांद रात की शॉपिंग की सेलिब्रेशन अलग है। तो सनम ये बताएं कि चांद रात पे आप निकलती हैं, चूड़ियां, मेहंदी, और नहीं मुझे खवातीनों ने रश लगाया हुआ था बाजारों में सबसे ज्यादा। अच्छा, नहीं मुझे ऐसा चूड़ियां, मेहंदी इन सब का कोई इतना शौक नहीं है, लेकिन मेरा ये प्लान है कि मैं चांद रात को बूफे में जाऊँ, अपनी अम्मी के साथ थोड़ा सा उसको एंजॉय करूँ, तो बूफे में जाने का फिलहाल प्लान है। रश इतना ज़्यादा होता है चांद रात, आपने देखा किस तरह से जो है वो ट्रैफिक का निज़ाम आपने देखा। सईद, आप पे आते हैं, आप मुझे बताएं, आप मैरिड माशाल्लाह से? जी ठीक है, तो आप भाभी को लेके निकले शॉपिंग कराने, किस तरह से आपने सेलिब्रेट किया? बस निकले थे साथ ही शॉपिंग करने, अपने भी कर ली, उसने भी कर ली। कितनी आसानी से बताएं, उन्होंने बस निकले थे शॉपिंग कर ली। इतना आसान तो नहीं होता औरतों के साथ शॉपिंग। घुमाती है, मतलब एक स्टोर पे आपने उसको कह रही हूँ, हमने जहन में रखा है, बस आगे चले। आप मुझे बताएं कि आपको कैसा एक्सपीरियंस रहता है, मतलब आप खुश रहते हैं शॉपिंग कराने में? नहीं खुश तो नहीं रहता। आपको लगता है वो ऑन कैमरा बोलेंगे कि वो खुश नहीं थे कहीं पे? एक तो पैसा भी खर्च हो रहा होता है आपका, ठीक है, ऊपर से थकावट भी हो जाती है ना। और पैसा खर्च होता है, गुस्सा आता है आपको? नहीं उस पे तो नहीं आता, खैर, क्योंकि वो तो होना ही है। होना ही है तो खुशी से कर ले, खुशी से कर लें। बाकी ये है कि एक शॉप में अगर गए तो अब वहाँ पे ज्यादा टाइम लगा दिया, फिर कुछ लिया भी नहीं, फिर दूसरे पे चलो, ये बात होती है। लेकिन सही साहब, आप कुछ छुपा रहे हैं, आप कुछ निकाल रहे हैं, हम चाह रहे हैं पता लगे। तो वही बता दिया ना कि एक शॉप पे अगर हम आधा घंटा रुक गए, वहाँ पे कुछ पसंद नहीं आया, तो फिर मैं यही कहता हूँ कि भाई जब पसंद नहीं आया तो 5 मिनट में निकल जाते। नहीं, लेकिन औरतों की तरफ से मैं ये कहूंगी कि जब तक हम पूरी चीज देखेंगे नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि कुछ पसंद आ भी सकता है या नहीं? जब तक नहीं देखना तब तक बाहर नहीं निकलना। और मजे की बात है 2 घंटे बाद वापस आएंगे तो वही चीज वो चीज बिक चुकी होगी। और इस दफा यही हुआ था, हम पहले जिस स्टोर पे गए थे ना, तो घूम फिर के वापस उसी पे आके जो है ना, वो प्रोडक्ट सेल हो गया होगा, पता ही नहीं लगा। नहीं, वो पड़ी हुई थी लकीली। लकीली पड़ी हुई थी, ठीक। तो सनम आप बताएं, मीठा पसंद है आपको, शीर खाती हैं आप? मीठे में कुल्फा पसंद है,
आपके यहाँ कुल्फा बनता है ईद के दिन? क्या नहीं, वहाँ ये खीर बनती है वैसे। खीर बनती है तो खीर और कुल्फा ये सब मतलब मुझे पसंद है। अच्छा, अब आपके यहाँ क्या बनता है? मेरे यहाँ सारा मीठा बनता है। मैं मीठे की इतनी शौकीन हूँ, मुझे जो मीठा समझ आ जाए ईद के लिए 3-4 मीठे में बनवा लेती हूँ। मैं भी मीठे का शौकीन हूँ वैसे। तो हमारे यहाँ कस्टर्ड बनता है, जेली, ट्राइफल हो गया। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है शीर खुरमे के बगैर ईद थोड़ी सी नामुकम्मल है। शीर खुरमा तो होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों से जरा मजेदार सवाल करेंगे। ऐसा ही आप पढ़ाते हैं ग्रीनिच में, ऑल्टरनेटिव प्रोफेशन आपका पूछते हैं, ठीक है? अगर आप टीचर नहीं होते और एकेडमिया में नहीं होते तो फिर आप क्या करते हैं? तो फिर मैं आर्मी में होता हूँ। आर्मी में होते? सीरियसली? यस, आई ट्राइड 3 times बट नहीं हुआ। तो उसके बाद फिर यही माइंड बना के चलें। ओके, टीचिंग में सनम आपसे ही जी, अगर मैं टीचर नहीं होती तो फिर मैं फैशन डिजाइनर होती। फैशन डिजाइनर? सीरियसली? अच्छा सनम, कभी ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि ईद की शॉपिंग की बात हो रही थी तो मुझे एक सवाल याद आया, कभी ऐसा कुछ, मेरे साथ ये बहुत हुआ है, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि कोई चीज ईद का जोड़ा बड़ा पसंद आ गया हो, आपने सोचा 2-3 दिन बाद ले लेती हूँ थोड़ा और देख के, और बाद में वो मिला ही ना हो, फिर आप ढूंढती रह गई हो, मिला ही ना हो, ईद पे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई है कभी? अच्छा, मजे की बात ये कि मैंने एक वीडियो देखी, उसमें कैटरीना कैफ की मैंने एक मैक्सी देखी और उस टाइम मैं मिलीनियम मॉल में थी और वो मुझे देखी, मैं बोला चलो कुछ दिन बाद आके मैं ले लूंगी। जब मैं फिर आई तो उसके बाद वो थी नहीं, तो वो फिर उस टाइम मैंने रियलाइज किया कि आपको जब कोई चीज दिखे जो आपको अच्छी लग रही है आप उसी टाइम ले लो, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि वो विद इन मतलब आफ्टर 5 minutes भी वो अवेलेबल हो या ना हो। तो जब भी मुझे कोई चीज पसंद आती है मैं उस टाइम ले लेती हूँ। ठीक है अफशा, मुझे लगता है सनम सही बात कह रही है, वो अपना टाइम सेव कर रही है, मतलब इधर उधर नहीं घूम रही। लेकिन ये इम्पल्स बाइंग में भी कन्वर्ट हो सकता है कुछ औरतों के लिए। मेरे लिए हो सकता है कि मैं टाइम सेव करने के लिए उस वक्त ले लूं, बाद में मुझे लगा नहीं यार और अच्छा हो सकता था, एक और ले लिया, तो ये थोड़ा सा इम्पल्स बाइंग पे भी जा सकता है। आपके लिए गया कि इम्पल्स बाइंग? प्रोफेशनल फीमेल्स होती हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो शॉपिंग पर इतना जो है वो टाइम दे, ठीक है? वो बहुत मुश्किल से अपना टाइम निकालती हैं, तो मेरे ख्याल में से ये जो पसंद आए आप उस टाइम ले लेंगे। हाउस वाइफ है वो घर में होती है, उनके पास टाइम होता है। प्रोटेस्ट करने वाली है, मतलब आपने डायरेक्ट ये बात बोल दी है, जो हाउस वाइफ है बिल्कुल फारिग है। नहीं, हाउस वाइफ बिल्कुल फारिग नहीं है, लेकिन ये है कि वो अपनी मर्जी से फिर भी निकल सकती हैं। जब आप ज़ाहिर है बाउंड हो जाते हो, आपने 9 to 5 जॉब करनी है, तो फिर उसके बाद जब आप घर जाते हो तो आप मतलब इतना एक स्ट्रेस भी होता है और आप इतना टायर्ड होते हो कि शॉपिंग करना फिर ईजी नहीं होता है। आपके पास जो संडे होता है सनम का हेक्टिक हो जाता है अपने वर्क के हिसाब से। सही आपसे बात करते हैं, ठीक है? आप मुझे ये बताएं, घर में सबसे ज्यादा किसकी चलती है, आपकी या भाभी? ये तो मिक्स होता है, कभी मेरी चल जाती है कभी उसकी चल जाती है। नहीं, कौन डोमिनेट है, आप या वो? नहीं, इक्वल है, कोई डोमिनेंसी नहीं है। अच्छी बात है। एक्चुअली डोमिनेंसी या डोमिनेट का वो आप कुछ मसाला ढूंढना चाह रहे हैं, मिला नहीं यहाँ पे। मैं कुछ निकालना चाह रहा था। अच्छा सही, मुझे बताएं, गाने गाते हैं आप? मतलब मैंने सुना है आपकी आवाज बड़ी जबरदस्त। नहीं, मैं तो गाता ही नहीं, पता नहीं कहां से सुन लिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। सब गाते हैं गाने, लेकिन इस वक्त शायद शर्मा रहे हैं। आप गा लें। कोई शेर सुना दे, मैं गाऊंगा। कोई शेर सुना दे अच्छा सा। पोएट्री का तो हिसाब से फिर हम अपना सेगमेंट वाइंड अप करते हैं। कोई है नहीं ज़हन में इसका। या कोई मैसेज देना चाहेंगे आप ऑडियंस को हमारी के, लाइक जिस तरह से रमज़ान गुजरे और एक मुल्क में एक सिचुएशन अजीबोगरीब, इस वक्त पॉलिटिकल नॉइज़ बढ़ा हुआ है, तो पीस रहने के लिए या कोई ऐसी अच्छी बात या कोई अच्छा मैसेज आप ऑडियंस को देना चाहेंगे? ये है कि इनइक्वालिटी, अगर हम इनइक्वालिटी को ख़त्म कर दें, कैपिटलिज्म को ख़त्म कर दें, तो मेरे ख्याल में से एक पीस जो है वो जनरेट हो सकता है, ठीक है? करप्शन पर हमें जो है वो फोकस करना है, क्योंकि जहाँ करप्शन है तो उधर फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप अपने जो है कि कंट्री को जो है वो एक स्टेबिलिटी की तरफ आएँ। तो ये एजुकेशन बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? जो कंट्री इसको इन्वेस्टमेंट समझती है वो बहुत आगे चली गई है, जो इसको इन्वेस्टमेंट नहीं समझती, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पाकिस्तान में समझा जाता है जो कुछ नहीं कर सकता वो एक टीचर बन जाता है। तो ये जो एक मेंटालिटी है इसको जो है वो ख़त्म करना है, ठीक है? सो इनइक्वालिटी को ख़त्म करें, एजुकेशन फ्री करें, एजुकेशन को प्रमोट करें, क्योंकि आप देखते हैं कि जो स्कूलिंग एजुकेशन है वो इवन यूनिवर्सिटी से एक्सपेंसिव है। तो हमें जो है इसको फ्री की तरफ लेकर आना है। हमें अपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसे बनाने कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चों को ना भेजें, वो जैसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी पर फोकस किया जाता है, सेम उसी तरह वो गवर्नमेंट स्कूल्स में अपने बच्चों को भेजें। एजुकेशन के हवाले से आपका थॉट है? सही आपके लास्ट मैसेज? मेरा ये कि खुश रहें, खुशियाँ बांटें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। गाना तो सही आपने गाया नहीं, आप ऐसे कैसे खुश रहेगी वहाँ? वो अपनी वाइफ के लिए गाएंगे। ओके, वाइफ के लिए गाएंगे? नहीं गाते।
क्यों इसमें बुराई क्या है? कभी गाया ही नहीं है इस तरह। तो प्रपोज आपने कैसे किया फिर, मतलब आप नहीं, मैरिज तो अरेंज मैरिज। चलें ठीक है, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। थैंक यू सो मच सनम और सईद, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ जाएंगे और मज़े मज़े की बातें करेंगे। काइंडली हमें देखते रहिए। आपको प्रोग्राम सेगमेंट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ को शेयर कीजिए, खुशियाँ भी शेयर कीजिए। जैसे सईद ने कहा, अपना बहुत ख्याल रखें। ईद मुबारक। वेलकम बैक। हमारी ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है। ग्रीनविच फैमिली के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोग आपके सामने आ रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं। ग्रीनविच का भी एक्सपीरियंस, और उनसे हम पूछते हैं कि उनके रमज़ान और ईद कैसे गुजरी। ग्रीनविच का एक डिपार्टमेंट है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, जो बहुत ही मुतहर्रिक है, बहुत एक्टिव है। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स को बड़ी शिकायत रहती है जी, बड़ी वहाँ से सख्ती की जाती है। डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट भी यही है, तो इसीलिए हमने उनको बुलाया है। ऐसी लोग पर्सनैलिटीज़ से उनसे पूछेंगे कि जी स्टूडेंट्स तो आपसे कहते हैं जी बड़ी सख्ती करते हैं ये लोग, लेकिन उसके बरक्स क्या मामला आता है, इनसे पूछेंगे इनके रमज़ान कैसे गुजरे, इनकी ईद कैसे गुजरी। सबसे पहले मैं वेलकम करूंगा कर्नल मंजूर साहब, आपको ईद मुबारक। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, आई एम फाइन। और थैंक यू सो मच सर, आपने ईद के दिन वक्त निकाला, आप आए। और कर्नल मंजूर के हमरा इस वक्त जमील अहमद साहब बैठे हुए हैं, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में होते हैं ये। और जमील अहमद के बारे में आप काफ़ी बदल हमनाई में भी सुनते रहते होंगे, स्टूडेंट का फीडबैक। सर ईद मुबारक, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, सेम टू यू। सो ईद का आगाज़ हो चुका है, सुबह सवेरे क्या किया आपने? नमाज पढ़ी, उसके बाद आप ग्रेनेड आए, तो अब क्या प्लानिंग है आपकी? बस अब ये है कि जो फैमिली में जो डेथ वगैरह हुई है उनके यहाँ जाके ताज़ियत करना है, और वहाँ से फिर आके फिर कब्रिस्तान वगैरह जाते हैं, फिर फैमिली को टाइम देते हैं, गेस्ट वगैरह आना जाना, फिर फैमिली के साथ ही सारा वक्त गुजारते हैं। कितनी खूबसूरती है अब हमारे यहाँ की, हमारे यहाँ मतलब हम सब मिलजुल जाते हैं, और इतना प्यारा हमारा माशाल्लाह मजहब कल्चर के। नाराज भी हैं तो गले लगा लो, मतलब सारी बात ही खत्म। और ईद की सही स्पिरिट ये है। बिल्कुल। अच्छा, वैसे एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि मैं यहाँ की स्टूडेंट भी रह चुकी हूँ, मैंने बड़ा एक सीरियस फेस देखा है पूरे डिपार्टमेंट का। आज हम जरा चुलबुली सी बातें करते हैं। तो कर्नल मंजूर, मैं आपसे पूछती हूँ कि क्योंकि आप यकीनन नाना दादा भी हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्या इस दफ़ा एक्सपेक्टेशंस है आपकी, बच्चे ईदी लेंगे, किस तरह से गुजारेंगे बच्चों के साथ, कैसी ईद गुजरती है सबके साथ? हमारी नॉर्मली रूटीन ही यही है घर में कि जब ईद पढ़ के आते हैं तो ईद के बाद आते ही पहले हम सायों में मिलते हैं, साथ वालों को, उनके भी ईद मुबारक करते हैं। किसी ने कहीं पढ़ी होती, किसी ने कहीं पढ़ी होती, जो तो मुलाकात नहीं होती, तो उनके घरों में जाके सबसे मिलते हैं। फिर बच्चे जो हैं, मेरी 2 बेटियाँ इधर हैं, बेटा मेरे साथ रह रहा है, तो वो आ जाते हैं सारे के सारे। तो बच्चों छोटों को ईदी अलग दी जाती है, फिर बड़ों को अलग दी जाती है। सबसे अच्छा पार्ट क्या लगता है आपको? ईदी देना ही ईदी देना। यकीन बड़ों, देखिए बड़ों का यही एक रोल है, हम समझते हैं हमें, मतलब अब जैसे हम भी ग्रो कर रहे हैं, अब हमारी भी ईदी के जो परसेंटेज है वो कम होता जा रहा है। बिल्कुल। तो कर्नल साहब मुझे बताएं, आपकी फैमिली में कोई बड़ा आपसे ऊपर है जो आपको ईदी देता हो? नहीं सर, आई एम द एल्डेस्ट। ओके। लेकिन रोहिल, वही बात है ना कि ईदी सिर्फ, जैसे हमने पहले सेगमेंट में भी बात की थी कि ईदी सिर्फ पैसों का नाम नहीं है। ईदी है दुआ देना, दुआ लेना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, फैमिली के साथ होना, हमसायों से मिल जाना। तो ये भी सर एक तरह की ईदी आपके लिए कि आप नाना दादा वाले फेज में है और मासूम बच्चे आपसे ईदी ले रहे हैं। आई थिंक वो आपके लिए सबसे बच्चे आते हैं सारे के सारे मुझ में भाग मिलते हैं, सारे गले मिलते हैं, छोटे से छोटा, और बार-बार मांगते होंगे सर एक दफा। बिल्कुल। और कंपटीशन भी होता होगा कि आपने उनको तो सबसे पहले कौन आ रहा है, भाग लगी होती है, दौड़ लगी होती है, सबसे पहले किसने जाके मिलना है। फिर उसके बाद ईदी वगैरह का जो होता है वो तो होता ही होता है, बच्चों को सबको लहरा देते हैं, फिर बड़ों को माँ बाप को लहरा दी जाती है। अच्छा, आप दोनों से एक सवाल है मेरा, ईद की खुशी में किसी का अटेंडेंस क्लियर करने का इरादा है या नहीं? नहीं, उसूलों पे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये बात एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की ये बात है कि उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। नहीं, असल में जो लोगों का कॉन्सेप्ट बन गया ना, एग्जामिनेशन जो है बड़ा स्ट्रिक्ट है क्योंकि रिक्वायरमेंट है, एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट है। लेकिन इससे हट के जाहिर बात है, हम इंसान है, हार्ट रखते हैं अपने पास। तो मैं इन बच्चों को यही कहता हूँ कि ड्यूरिंग ऑफिस आवर मैं बिल्कुल डिफरेंट मिलूंगा आप लोग से, लेकिन उसके बाद अगर आप मिलेंगे ज़रूर आपसे बिल्कुल तो वो उनसे हंसी मजाक भी चलता है। और दूसरा ये कि इनको क्या नाम, जो कंपनसेट कर सकते हैं करते हैं लीगल उस पर। लेकिन यहाँ पे जो बच्चे अनड्यू एडवांटेज लेते हैं कि वो किसी तरीके का अटेंडेंस मार्क कर दें, प्रेशराइज करते हैं और मार्क्स की बात करते हैं, तो वो वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। मुझे यहाँ पे तकरीबन 28 से 29 साल हो रहे हैं ग्रीनविच में। अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे ग्रीनविच का जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है, जिसको सही साहब खुद लुक आफ्टर कर रहे हैं, यहाँ पे जिसे
मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम ही लूँगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में बाज़ जगह इस किस्म की हैं शिकायतें, लेकिन ये कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। स्टाफ एक तो ईमानदार है, दूसरा ये कि हम कोशिश यही करते हैं कि अगर कोई बच्चे की लीगल हेल्प है ज़रूर करेंगे, और हम उनको कोशिश भी यही करते हैं, इन राइटिंग बच्चों से रिक्वेस्ट लेते हैं और जहाँ कुछ हो सकता है कंपनसेट करते हैं। लेकिन जहाँ तक मार्क्स का या उनकी क्या नाम वो अटेंडेंस का इशू आता है, वो एक रूल्स है जो उनको फॉलो करना पड़ेगा। बाकी हम उनसे एज ए फ्रेंडशिप नहीं, हमारे पास जब भी कोई बच्चा आता है उसका प्रॉब्लम आता है, पहले उसके प्रॉब्लम को देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, फिर उसके लिए हम कोई भी रिकॉर्ड छोड़ते नहीं है कि उसकी कहाँ पर हेल्प हो सकती है। सारी की सारी चीज़ें जितने भी रिकॉर्ड हमारे पास हैं सबको छानते हैं हम कि कहीं भी इसको कोई रिलीफ मिल जाए, अगर मिलता है तो फिर हम दे देते हैं। अच्छा, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो फिर डिफिकल्ट होता है। बिल्कुल। इस सेगमेंट को थोड़ा और ईद की तरफ लेके चलते हैं। सर, आप दोनों मुझे बताएं, खाने में क्या पसंद है? सुबह शीर खुरमा होता है, गुलाब जामुन होते हैं, क्या आप लोग क्या पसंद करते हैं? आपकी बेगम ने क्या बनाया? सिवैयाँ ज़्यादातर जो यूजुअली यही होता है नॉर्मली, के सिवैयाँ वगैरह, खीर कौरमा या सिवैयाँ यही होता है। और सर आप? मुझे सब कुछ पसंद है, मैंने कभी कोई ऐसी नहीं की तो ईद उल फितर वैसी मिठाई का है तो खास में जो स्वीट्स अल्लाह ताला की वगैरह तरफ से मुझे मिला है सब ठीक। आप ईद की शॉपिंग के लिए लेके जाते हैं बेगम? बिल्कुल लेके जाते हैं, लेकिन ये रमजान से पहले रमजान से पहले, रोजे में नहीं लेंगे? रोजे में नहीं, वही गुस्सा आता है? गुस्सा बहुत कम, क्योंकि मैं बड़ा कूल माइंड हूँ। जहाँ पे बच्चे ये कहते हैं कि यार आप लोग बहुत स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में मैं बड़ा जॉली हूँ। आप क्या जॉली? वो तो हमें जॉली पता है, आपने देख लिया और आपने ट्राई भी किया था, मुझसे कहा था कि क्या नाम किसी की मिमिक्री भी करें, लेकिन आई वुड से कि अभी अच्छा खुशी का दिन है, किसी का दिल आज़ारी ना हो। भाई माशाल्लाह से बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं और फुल ऑफ टैलेंट, इनकी पर्सनैलिटी अल्लाह ताला ने इनको बनाया है। तो अब एंड में आपसे कुछ करवाएंगे, हम सोच रहे हैं इस पर। ये बताएं कि प्लानिंग क्या ईद की आपकी? आज डे तो 1 गुजर जाएगा, डे 2 डे 3 आप लोग क्या करते हैं? क्या एंगेजमेंट होती है? असल में इसमें ये होता है कि सिस्टर्स वगैरह को बुलाते हैं घर पे उनकी, फिर वो डिनर पे तो वो सारी गैदरिंग हो जाती है, बच्चे होते हैं भाई के और क्या नाम सिस्टर के, तो वो हमारी एक सेकंड डे गैदरिंग हो जाती है, फिर हम उनके यहाँ जाते हैं, मतलब सारे भाई। एग्जैक्टली। अच्छा, एक चीज सॉरी, एक चीज मैंने ऑब्जर्व की है, मर्द हजरात थोड़ा दावतों से दूर भागते हैं। आप दोनों का कोई ऐसा केस है या फिर मजा आता है? नहीं, बिल्कुल फैमिली गैदरिंग होती है, क्योंकि ग्रीनविच का टाइम देखें कैसा हार्ड टाइम होता है। हम यहाँ से जब निकलते हैं तो तकरीबन 7-8 बज जाते हैं घर पर, नॉर्मल टाइम पे अगर निकलते हैं तो 7-8 बजे तक तो हम जाके थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं। फिर वो भी जब यहाँ की सोचें चल रही होती हैं, आधा पौन घंटा तो यहीं का चल रहा होता है कि ये करके आए, ये करना है, ये प्लान करना है। उसके बाद फिर वो नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन ये कि ऐसा नहीं है कि क्या नाम प्लान तो अपने हर आदमी करता है, और ऐसा ही ऐसी मुश्किल पेश नहीं आती है। आप तो खुद दावत होस्ट करते होंगे, बड़े होने के नाते परेशानी नहीं होती। सिर्फ ये है कि अच्छा अगर पहले ऑलरेडी कमिटमेंट है उसका मसला होता है, या नमाज वगैरह का कि उसका टाइम इधर उधर या कुछ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा कर्नल साहब, आपका बचपन कैसा गुजरा? आप अपने बचपन का हमें बताएं कि आप बचपन में किस तरह के मतलब शरीर थे, शरारतें करते थे? मैं बहुत शरीफ सा था, मैं गर्व सा था, जैसे डरपोक से होते हैं लोग आत्मोद बच्चे। अच्छा। किसी से कोई पंगा नहीं लेना, किसी के साथ कोई शरारत नहीं करनी, डर के रहना, तो मैं तकरीबन मेरा बचपन ऐसे ही। जमील भाई आपका? मेरा तो बड़ा जॉली रखा है असल में, विस्लिंग करना, किसी को हंसाना, कोई लतीफ़ा सुना देना। तो मेरे इर्द गिर्द सारे भतीजे, मेरी भांजियाँ और जो क्या नाम है कुलीग्स वगैरह, मेरे दोस्त यार, तो वो सारे बड़े एंजॉय करते थे यार कि ये बड़ा मज़ेदार है, चल इनके साथ ही रहेंगे। तो एक गैदरिंग हो जाती थी, एक डिफरेंट होता बचपन में अपने दोस्तों के साथ, स्कूल में, कॉलेजेस में, तो अच्छा रहता है। मेरे साथ ऐसा कोई वो नहीं है। घर में आपकी चलती है या भाभी की चलती है, किसकी चलती है? यार बैलेंस है, हम लोग बड़ी क्या नाम आपस में बड़े उससे रहते हैं, क्या नाम मुशावरा से, तो दोनों की चलती है। उससे ज़्यादा मुशावरत के लिए इजलास बुलाते हैं? नहीं, मुशावरा से मुराद ये कि अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि क्या नाम कभी बेगम की चलती है, कभी हमारी चलती है। कहीं मैं गलत होता हूँ तो बेगम राइट होती है, कभी वो गलत होती है, मैं राइट होता हूँ। तो किसको अल्लाह का शुक्र है। नहीं, डांटने की तो ऐसा कुछ नहीं। आपको पता है जब मेरी तबीयत ऐसी है, मैं जॉली हूँ, तो वो मेरे को मनाना फ़ौरन आ जाता है माशाल्लाह। तो मैं इनकी बेगम से एक दफ़ा मिली हूँ, वो भी इसी तरह की है कि उनका वो बड़ी नेचर लगता है। एग्जैक्टली। तो वो जब बंदा ज़रा सा जॉली टाइप का हो ना, तो उसको सिचुएशन को टैकल कर लेता है, तो वो फिर वो नौबत आती नहीं है कि फिर लड़ाई फड्डा हो। वैसे तो हर मियाँ बीवी में 19-20 होती है, और ये भी ये प्यार का एक तरीके से प्यार को बढ़ाने का एक वो है, अल्लाह ताला ने दिया, नरम गरम होना चाहिए। कर्नल साहब आपकी पर्सनैलिटी? हमारे घर में मेरी मिसेस की चलती है,
वो अपना मशवरा कर लेती घर के मामला में, लेकिन बाहर के मामला में वो मैं करता हूँ जिस तरह भी करना। घर के मामला में मेरी मिसेस और नाल है, अगर उनको फ़र्ज करो कोई किसी चीज़ में मशवरा लेना होता है तो उनसे मशवरा कर लेती है उससे पहले, या वो ये समझती हैं कि शायद इनको अच्छा ना लगे या ये कोई अच्छा मशवरा दे सकते हैं, वो पहले मेरे से बात कर लेती है। घर में मेरी मिसेस ही करती है। जमील भाई, ग्रीनिच में सबसे अच्छा आपको कौन लगता है और सबसे बुरा आपको कौन लगता है? बड़ा डिफिकल्ट आपने क्वेश्चन किया है, सवाल ही ये क्या करें। देखिए अगर देखा जाए मैडम और सईद साहब के अलावा, हाँ ये आपने पहले क्लियर कर दिया ना। देखिए सारी कुलीग अच्छे हैं मैडम और मेरे सईद लिए, साहब सबके लिए आई थिंक रोल मॉडल हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि हमने यार मैंने मैंने यहाँ पे इंटर किया था, फिर मैंने ग्रीनिच ज्वाइन कर लिया था, इंटरमीडिएट के बाद ग्रीनिच ज्वाइन कर लिया था, और मेरी बेस जो है ना ग्रीनिच ही है। माशाल्लाह सही साहब ने टाइम टू टाइम हमें सिखलाया, समझाया और एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया। और दूसरा ये कि बॉस से हट के वो एज ए फ्रेंड रहे हमारे साथ, तो हमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ ऐसे। और ऊपर से फिर वो मैडम के साथ अगर मिल गए, उनके साथ काम किया है और अभी चल ही रहा है, तो मैडम भी माशाल्लाह से गुस्से वाली तो है लेकिन दिल से बड़ी अच्छी हैं। वो उनकी उनकी रिक्वायरमेंट है हमारे लिए, ताकि वो हम इसको सही ट्रैक पे चलें। अल्लाह का शुक्र है, वो कहते हैं ना कि कुंदन बन जाता है लोहा जब लाज, तो उन्होंने ऐसी मेहनत करी है कि हम कहीं मात नहीं कर सकते कोई भी हमें। और दूसरा ये है कि क्या नाम, अच्छा एनवायरनमेंट मिला, फैमिली गैदरिंग है, ये सब जगह आना जाना, तो मेरा ख्याल से मैडम सही साहब तो रोल मॉडल है सबके लिए। लेकिन ऐसा जो हमारे कुलीग्स हैं, हमारे दोस्त यार हैं, जो सारे ही हैं, मैं किसी एक पर्टिकुलर का नाम लूँगा तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन सारे अच्छे हैं माशाल्लाह से। ग्रीनिच का स्टाफ सबसे ज़्यादा हार्ड वर्कर और ईमानदार है। ये बात बहुत खूबसूरत है। ये इस तरह से मैं इस बात को रखूँगा सामने कि सबकी एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है। यहाँ पर ये नहीं है जी ये हमारे डिपार्टमेंट का काम है, ये इसके डिपार्टमेंट का काम है। कोई भी प्रोडक्ट आती है या कोई भी सीज़न आता है, कोई भी कैंपेन होती है, कोई उसमें सब खड़े हो जाते हैं बस। और ये जमील भाई की बात को मैं यहाँ सेकंड करूँगा कि वाकई ये सिर्फ फैमिली कहने की हद तक नहीं है, काम के हवाले से पर्सनल रिलेशनशिप्स आपके हों या कोई भी हो, एक माहौल है यहाँ पर घर जैसा, और उसी तरह से सब काम करते हैं। सर कर्नल साहब एंड करेंगे, आपका एक्सपीरियंस मैं लेना चाहूँगा। आप मुझे बताएं कि ग्रीनिच में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और आखिर में कोई ऐसी बात या पैगाम आप ऑडियंस से करना चाहते हैं? जी, मेरा ग्रीनिच का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। आई एम हियर फॉर द लास्ट 18 ईयर्स। मुझे कोई आज तक ना मुझे कोई प्रॉब्लम हुई है और ना मेरे से कभी किसी को कोई प्रॉब्लम हुई है। तो बाकी दूसरा मैं यही कहूँगा कि जो मेहनत कर रहे हैं लोग, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, बट आई विल स्टिल से कि वी कैन स्टिल डू मोर। डेफिनेटली। सर जमील, आपका कोई मैसेज? मैसेज ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के बूढ़े की इज़्ज़त करना गोया मेरी इज़्ज़त करना है। तो मैं तमाम स्टूडेंट्स को और तमाम अपने कुलीग्स को सबसे कहता हूँ कि रिस्पेक्ट योर एल्डर। उसकी वजह यह है कि हम इनकी अगर क्या नाम इज़्ज़त करेंगे तो ये गिव एंड टेक है, आज आप कर रहे हैं कल आपको भी ये मिलेगा। तो और वैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही फरमाया, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम किसी बड़े की रिस्पेक्ट करें और एक अपनी सुन्नत को भी जगाएंगे, और अल्लाह पाक ये इसका अजर भी हमें देगा। बिल्कुल, बहुत कुछ सीखा आज हमने हमारे मेहमानों से। आई एम श्योर आगे भी सीखते रहेंगे। सब ईद के रंग में रंग गए हैं, सारी खुशियां बांट रहे हैं, हमसायों के साथ मिलकर बैठे हैं। ये बात, ये सिलसिला सब कुछ चलता रहेगा। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस ऑन दिस शो। थैंक यू सो मच अगेन, बिकॉज आप दोनों के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट पहले ही इतना मसरूफ होता है, बट स्टिल यू आर हियर टू शेयर द हैप्पीनेस ऑफ ईद व्हेन यू वुड बी विद योर फैमिली एज वेल। तो इसी के साथ साथ हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के साथ। वेलकम बैक। हमारी ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है और हम उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आ रहा होगा। इस सेगमेंट की जो गेस्ट हैं यकीनन वो अफशा के भी फेवरेट हैं और मेरे तो हैं ही, और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जब मैं यूनिवर्सिटी में नया आया तो मुझे सबसे ज़्यादा वेलकम दिया मिस शाजिया ने और हादी ने, और हादी के साथ तो मेरा बिल्कुल एक डिपार्टमेंट में जब मैं एडमिशन्स में था तो भाइयों वाला दोस्तों वाला सिलसिला रहा, और मुझे लग नहीं रहा था कि मैं किसी दूसरी जगह पर आकर जॉब कर रहा हूँ। तो मतलब इस तरीके से इन लोगों ने एक्सेप्ट किया, और मिस शाजिया के साथ तो ऐसा रिश्ता बना अफशा में बता नहीं सकता कि बड़ी बहनों वाला। मतलब मैं लाइक 2-3 चीज़ें ऐसी हुई, फिर मैंने उनसे सब अपने काम के सिलसिले में बात करना शुरू करी।
मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट के सीनियर ग्राफिक डिजाइनर से बात कर रहे हो। तो बहुत माशाल्लाह से अच्छी मेमोरीज बन रही हैं इनके साथ। मिस शाजिया आपको वेलकम करेंगे, ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसी हैं आप? थैंक यू, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन कराने का भी बहुत शुक्रिया। मेरा बस चले, मैं प्रोग्राम एंड पे कर दूं, आप बोले तो। और हादी ईद मुबारक, कैसे हो आप? ईद मुबारक आपको भी, बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र। अच्छा, दोनों आज माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बिल्कुल, कॉम्बिनेशन मैं वही देखो, बात ग्रीन करने और वाइट, ग्रीन और ये। अच्छा, ये रुहेल साहब, मैं आपकी बात में एक बात ऐड करूंगी कि जैसे कि आप दोनों, आपके लिए ये दोनों बहुत स्पेशल फिगर्स हैं, ये मेरे लिए भी बहुत स्पेशल है। मैं एक बात बताऊं कि मैं सरहादी के डिपार्टमेंट में होती हूँ और कोई यकीन करे ना करे, हर दिन ईद के जैसा लगता है, क्योंकि जिस तरह से ये मिल के काम करवाते हैं, एक साथ हम लोग काम कर रहे होते हैं, एक टुगेदरनेस की जो स्पिरिट है ना, वो हमारे डिपार्टमेंट में हर रोज होती है। बिल्कुल। So, सिर्फ ईद की बात नहीं है ये, इनके साथ आई एम श्योर कि हर दिन हमें ऑफिस में ईद जैसा लगता है, बिकॉज द वे ही टेक्स अलोंग विद एवरीवन, जिस तरह से ये हमें ट्रीट करते हैं, जिस तरह से ये टीम बिल्डिंग करते हैं, वो हर डिपार्टमेंट में होती नहीं है, हर जगह भी नहीं होती। और मैं शाजिया का मैं ये कहूँगी कि मैं जब यहाँ स्टूडेंट थी, तो जैसे इन्होंने आपको वार्म वेलकम किया है, मुझे भी इतना ही वार्म वेलकम किया। आज तक हम इनसे इतना क्लोज हैं कि कोई भी हेल्प चाहिए होती है, हमें पहले मिस शाजिया याद आती है। ऐसे ही है। मिस शाजिया का है कि बस जल्दी कोई प्रोग्राम बनाओ, बाहर चले सर, खाना खाते हैं, घूमते फिरते हैं, ये हमें निकलवाती हैं कि बस बोथ आर वेरी लाइवली। हाँ, ये बात बात है। काम कर रहे हो, निकलो बाहर चलते हैं। मिस शाजिया बताएं, रमजान आपके कैसे गुजरे और किस तरह से आपने कैरी किया ऑफिस को भी, घर को भी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे गुजरे। और जैसे ग्रीनिच ने मतलब चंद सालों से ये मैं ज़रूर कहूँगी कि 8 to 1 टाइमिंग जो है ये मुझे बहुत ही पसंद आया, सूट करता है। इसमें हम इबादत भी कर लेते हैं, आराम भी कर लेते हैं, घर के लिए अफ्तारी वगैरह के लिए भी अच्छा टाइम निकल आता है। और रमज़ान की जो एक खुशबू होती है वो पूरी महसूस करते हैं। और तो ये बहुत अच्छा है। दूसरे लोगों को मैं देखती हूँ 4-5 बजे आ रहे होते हैं, तो भागम भाग सब कुछ हो रहा होता है। तो ये एक ब्लेसिंग है जो ग्रीनिच में, मतलब बहुत सारी चीज़ों की तरह एक रमज़ान की टाइमिंग भी मुझे बहुत पसंद है। तो देखिए, इसकी कनेक्शन ईद से है ना, रमजान आपके अच्छे गुजरे। तो ईद पे भी ज़्यादा खुश, ठीक है। ईद पे भी एक्टिविटीज का दिल चाहेगा, ये नहीं कि रमजान की थकावट महसूस हो रही है। आपके रमजान कैसे? अल्लाह का शुक्र है, रमज़ान तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ों में, इबादत में ऐसे निकल जाते हैं कि पता ही नहीं चलता ये महीना कब आया था और कब चला गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, बस अल्लाह ताला ने जो मौका दिया और जो सलाहियत दी इबादत की, अल्लाह ताला कबूल करे उसे। और आज के दिन हम बैठे हुए हैं। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे इजाफा करूँगा मज़ीद, कि जो इंट्रोडक्शन अभी आपने स्टार्ट में दिया है, मैं अपने घर में अभी शीरखुरमा वगैरह सब खा के आ रहा हूँ, उसमें इतनी मिठास नहीं थी जितना आपके लफ्ज़ों में अभी मिठास है। और माशाल्लाह ऐसे ही हकीकत है कि आप लोगों ने जो स्टार्ट लिया है और जिस तरह से आज हम यहाँ जमा हैं, ईद का दिन खुशी का दिन होता है और खुशी का दिन अपनों के साथ मनाया जाता है, और आज हम अपनों के साथ मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे। अफशा, हम जहाँ काम करते हैं, हम फैमिली की बात करें तो ईद, बकरीद, खुशियाँ घर वालों के साथ आप गुजारते हैं। तो आप देखो कि आपने आधा दिन हमने यहाँ स्पेंड कर लिया, आधा दिन मैं अपने टीवी इंडस्ट्री के साथ गुजारूंगा, आधा दिन मैं अपनी फैमिली के साथ गुजारूंगा। आदि ने बहुत खूबसूरत बात अच्छा, की। कुछ लोगों के लिए वो घर से ज्यादा ऑफिस में अक्सर टाइम स्पेंड हो रहा होता है, तो ये एक फैमिली की तरह है। बिल्कुल। मैं शाजिया, मैं एक बार, रोहेल आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं उससे पहले एक बात मैं आपकी पॉइंट आउट करूंगी। बड़ा खूबसूरत सा इन्होंने आई शैडो लगाया हुआ है और अपने कपड़ों से उसका कलर मैच किया हुआ है। आई लव द डिटेलिंग। पूरा ईद के रंग यहाँ नजर आ रहे हैं हमें। मिस, आपके आई शैडो हमेशा इतने अच्छे होते हैं, कुछ राज बताएंगी हमें? शौक बहुत अच्छा, कलर मैचिंग कितनी जबरदस्त हुई है, स्पेशली और इयररिंग्स। मैं आर्टिस्ट बाद में बनी थी, हरकतें मेरी बचपन से ऐसी। तो मिस, ये अंदर से होता है, ब्लड से आर्ट, मुझे मैचिंग करना, ये कंटोरिंग और ये मैचिंग मिस मैच, ये मैं मतलब जब बहुत यंग थी तब से मैं ये करती थी। इन्हीं की हरकतों की वजह से मैं आर्टिस्ट बनी। हम तो सीखेंगे ये आपसे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, मजे के सवाल करते हैं। मुझे लगता है कि हम अब लोग इतने ज्यादा एक दूसरे से इमोशनली अटैच है ना कि हम इधर से बाहर ही नहीं निकल सकते। हादी, एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, ठीक है, कौन सा ऐसा इक़दाम होगा जो सबसे पहले करोगे? नया पाकिस्तान बनाऊंगा। नया तो ऑलरेडी बन चुका है ना, उसके बाद वाला। वो जो सबके सब आवाज़ें आई थी वो अभी तक हमने देखा नहीं है, तो वो बनाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। और ये कि इस मुल्क का निज़ाम दुरुस्त करेंगे कि सबसे पहले तो ये कि आपस में मोहब्बतें लेकर आएंगे। ये जो हम डिवाइड हो गए ना कबाइल में, पार्टियों में, लोगों, इसको एक करेंगे। हम जब मुसलमान हैं तो ये झंडा एक क्यों नहीं है हमारा? तो ये जो हमारे रंग तब्दील हो गए, इन रंगों को एक करेंगे तो इंशाल्लाह मोहब्बतें आम हो जाएंगी। मोहब्बतें आम होंगी तो इंशाल्लाह मामला खुद दुरुस्त हो जाएंगे। मोहब्बतें बातेंगे, क्या बात है। आप? मुझे सिर्फ एक ही चीज़ बचपन से, मैं पता नहीं इसलिए कि हम उर्दू स्पीकिंग है,
मुझे हमेशा एक शिकायत रही है अपनी पाकिस्तानी लोगों से कि अगर हम किसी से पूछते हैं आप कौन हैं तो वो आगे से जवाब देते हैं हम बलोची हैं, हम पंजाबी हैं, हम सिंधी हैं या जो भी हैं, पाकिस्तानी क्यों नहीं कहते। बिल्कुल। अगर जब हम अपने आप को पाकिस्तानी कहेंगे, पाकिस्तानी समझेंगे तो खुद ब खुद ये बीच में से जो भी चीज़ है वो अलग हो जाएगी। और हमारे दिमाग में नहीं भी होगा, जो बंदा अपना इंट्रोडक्शन में करा देता है कि हम फला कास्ट या उससे, तो खुद ब खुद हमारे दिमाग में वही चीज़ आएगी कि अच्छा ये क्या बात करी। एक मिली नगमा हो जाए इस बात क्यों नहीं, पर, क्यों क्योंकि हादी साहब बड़ा अच्छा गाते हैं, मैं शाजिया उन्हें ज्वाइन कर लेंगी। इससे अच्छा मौका फिर नहीं हादी मिलेगा। से तो मैं भी जो हूँ कभी फारिग वक्त होता है हम जाके बैठते हैं तो मेरी फरमाइश होती है हादी शेर और शायरी बहुत अच्छी करते हैं माशाल्लाह से, नात ऑल राउंडर है। ठीक है। और कोई भी इनॉग्रेशन हम किसी प्रोग्राम की कर रहे होते हैं वो आगाज ही हादी से होता है। लेकिन आज ईद का मौका है जी, ठीक है, कोई गाना गा दो। मैं कह रहा हूँ मैं आपसे बातचीत करने आया था वैसे आज यहाँ पे, और भरपूर फरमाइश आपकी डिपार्टमेंट से आ गई है। अच्छा तो माशाल्लाह ग्रेट है हमारी, लेकिन है कि गाना आज मैंने वैसे कोई प्रिपेयर नहीं किया हुआ और ना ही कुछ सोच के आया था, अचानक आपने बीच में कर दिया है, बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। गाना एक ही इस वक्त मेरे जहन में आ रहा है जो मैं गा लेता हूँ। आपको वैसे जो पसंद है, जो अक्सर आप फरमाइश किया करते हैं मुझसे, साहिल पे खड़े वो जी 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 वही वही मिली नगमा से हम सज्जाद अली पे जा चुके ऑप्शन तो हैं। चले जी, तो होता है। बिल्कुल बिल्कुल यही होता मिली है। नगमा और मिल शादिया पढ़ देंगे गाना। ठीक है ठीक है। सर हादी की आवाज ही काफी है किसी भी चीज में हो। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ, मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ। क्या बात है, वाह। सर बेगम के लिए तो ये गाना नहीं गाते ना? नहीं बेगम उनके लिए कौन सा गाते हैं? बेगम के लिए गाना गाने का मौका ही नहीं मिलता है। अच्छा नहीं, ऑप्शन है बात निकाल दी। हाँ। भाभी को विश करो, हाँ। कैसे करोगे? नहीं वो मैं करके आया हूँ, नहीं, बड़ी नहीं, मुश्किल से। मैं देखें जख्म पे लेके आए हैं या नहीं? मैं जिस तरह से आया हूँ वो कंडीशन में आपको बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं ईद का दिन वहाँ पे क्या मामलात होते हैं। लेकिन मैं ग्रीनिच के नाम के साथ वहाँ पे जो भी बैठा हूँ तो आंसू आ जाएंगे, मैं नहीं चाहता कि वो चीज़ें डिस्कस करूँ। लेकिन ये कि आज किसी को ईदी देखें, ईदी मतलब बेगम को दी किसी को छोड़िए, ये सवाल अगर आप करते तो ये मुश्किल होता। किस को देता हुआ आ रहा हूँ, और मुझे लग रहा है शायद आप लोग जिस तरह मुझसे सवालात कर रहे हो, जो तारीफ की थी, लिफाफा आपको भी देना पड़ेगा। लेकिन ये कि मुझे एक तो मिल चुका है, एक ईदी तो मिल चुकी है ग्रीनिच की तरफ से। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, आगे बढ़ेंगे। लेन देन का सिलसिला तो चलता रहेगा। मीनवाइल ये कि हम ये सिलसिला चलने के नाम पे अभी बात खत्म हो रही है, ये मैं आपको बता दूं। नहीं एक वो खुशी अलग होती थी पहले कि हम लेने वालों की कतार में खड़े होते थे पहले, और आज कैसे वक्त निकल गया, आज हम देने वालों की जगह खड़े हो गए आके। लेकिन ये खुशी भी अलग है कि माशाल्लाह अब हम दे रहे हैं, अल्लाह ने ये सलाहियत दी है, और इसका एक अलग मज़ा है, एक अलग चाम है जो 3 दिन तक चलता रहता है। हम कोशिश करते हैं बच्चों से बच के चलें 3 दिन तक, 3 दिन के बाद तो बच्चों को आते हैं। अच्छा बच्चे, हाँ वो बच्चे जो हमें खानदान में पता भी नहीं है कि ये बच्चे हैं, वो हमें ईद के दिन पता चल जाता है। सलाम नहीं करेंगे ना, अस्सलाम वालेकुम। इतना सलाम होता है माशाल्लाह कि हम याद हो जाता है कि इसका नाम भी सलाम है, इसका नाम भी सलाम है, सबके नाम सलाम। अच्छा मैं शाजिया आपसे मैं पूछूंगी, ईद की बचपन की सबसे अच्छी याद कौन सी है? बचपन की ईदें सारी बहुत अच्छी थी, क्योंकि बचपन मतलब मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, और जब तक हम छोटे थे, जब तक हमारे माँ बाप हमारे साथ थे, तो सारी ईद यादगार है। और बड़े होने के बाद मतलब मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि ईद बच्चों की असल होती है, लेकिन हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है। मैं अभी तक ईद बहुत जोश व खरोश से मना रहा हूँ। क्या बात कर दी।
अच्छा, कोई ऐसी मेमोरी मिस शाजिया आपको बचपन की याद हो, आप कहती हूँ कि अब दोबारा मौका मिले तो मैं करूँगी, अगर मुझे करने का दिल चाहे, या कोई ऐसी बात? आप जब बड़े हो जाते हो आप बहुत सोबर हो जाते हो, डिसेंसी लेके चल रहे होते हो। मैं सिर्फ अपने भांजे और भतीजे जो हैं उनको चाहती हूँ मैं ये जैसे हो जाएं, जैसे मैं ईद मनाती थी वो लोग भी मनाएं। अब के बच्चे वैसे एंजॉय नहीं करते जैसे हमने अपनी ईदें एंजॉय की हैं। तो मैं करती हूँ, कहती हूँ कि हमने बहुत अच्छी ईद गुजारी हैं। फैमिली गैदरिंग भी बहुत अच्छी होती थी हमारे यहाँ, मतलब बहुत भरपूर तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बचपन बहुत अच्छा गुजरा है, अभी भी बहुत अच्छा गुजरा है। लेकिन अब की जनरेशन वैसी ईद नहीं मनाती जैसे हम लोग मनाते हैं। तो वही बात है ना जो हम फर्स्ट सेगमेंट में कर रहे थे कि अब वो ईद कार्ड कहाँ है। अब ईद, मुझे तो ये होता है कि कहीं ईदी का सिस्टम खत्म ना हो जाए, जैसे ईद कार्ड अब नजर नहीं पता आता। है मिस शाजिया की बात मैं यहाँ पर इसलिए भी रखूंगा, अब पुरानी जो चीज़ें हैं ना वो इतनी मैटर करती हैं। जैसे अब जो फिजिकल कार्ड बनाकर आप किसी को दोगे उसको ज़्यादा अच्छा फील होगा। मुझे याद पड़ता है मेरी बर्थडे पे मिस शाजिया ने कार्ड बनाकर मुझे विश किया था, और मुझे सबसे अच्छा वही लगा था कि मैं आकर बैठा हूँ, हैप्पी बर्थडे सर। और ये माशाल्लाह ग्राफिक डिजाइनर भी हैं, तो अल्लाह ताला ने इनको हुनर दिया, तो उसी वक्त उन्होंने मौके का फायदा उठाया। मुझे शौक है, मैं करती हूँ, हर एक के साथ करने की कोशिश करती हूँ। मेरे लिए कोई वो नहीं होता फ़र्क है किसका है किसका नहीं है, लेकिन मुझे वाकई में ये बहुत चीज़ें अच्छी लगती हैं। रोहिल, पता है हमने सारे ईद के दौर गुजारे हैं, ईद के अलग अलग रंग थे जो हमने अभी तक गुजारे हैं। कभी एक वो दौर था कि हम ईद वाले दिन कार्ड जमा करते थे, एक्टर्स के कार्ड होते थे, हम लाते थे घरों पे, वो शाहरुख खान का कार्ड, सलमान खान का कार्ड, वो कार्ड जमा करते थे हम ईद पे, और वो दिखाते थे कि ये हमारा सारा कलेक्शन है। इसी तरीके से आगे बढ़े हम, तो फिर आगे फिर वो लिफाफों में हम देखते थे कि इसमें पता नहीं कितनी ईदी होगी जो हमें मिला है अभी, और वो बस खोलने का तजस्सुस रहता था कि खोल लें, किसी तरह साइड में से देख लें क्या है। लेकिन ये दौर की खुशबू ही अलग होती थी, ये वाकई हकीकत है, और ऐसा ही रहा। और आज अब वो दौर आ गया कि अब हम जो है वो लोगों को लिफाफे बंद करके खुद दे रहे होते हैं। हमारे दिल से पूछें क्या मामला होता है भारत लेकिन ये कि खुशी होती है। अब तक कितना खर्चा हो गया सर? ये नहीं पूछे, बचा कितना ये पूछे सवाल, बचा क्या है आपके पास? बचा सिर्फ मोहब्बत है, अब खर्चे के लिए कुछ भी नहीं है। ये बताओ भाभी